following the clashes between police and opposition supporters on Wednesday, which killed 1 and injured 50. Bureau Report, Republic TV. Meanwhile, Dutch fans watching the World Cup from an Amsterdam arena were in for a roller coaster as the Dutch snatched a 2-2 draw from Argentina. It is safe to say that the dream to get a World Cup comes to an end for the Dutch team. FIFA World Cup 2022 dream comes to an end for the Dutch team. And this happens all because of Argentina's penalty shootout against Netherlands, 4 goals made by the former team. 4 goals made by the former team. Watch how almost 30,000 Netherlands supporters witnessed their favourite team losing against Argentina at the Johan Cruyff Arena, the home stadium of Ajax. Though the loss doesn't make the supporters lose any hope. Uiteindelijk een mooie avond, goede organisatie, ja jammer, over 2 jaar weer proberen. The match finished with the score 2-2 and was only taken to extra time after the Netherlands equalized in the 11th minute of the second half stoppage time, with the second of the substitutes scoring 2 goals. Before that, Messi had set up opening goal by Nahuel Molina in the 35th before converting a penalty to make the score 2-0. And now Argentina will play against Croatia in the semi-finals on December 13th after the 2018 runner-up beat Brazil earlier on Friday. It is only the second time Argentina has reached the last 4 since 1990. Bureau Report, Republic TV. Now, Chinese President Xi Jinping held meetings with the world leaders in Riyadh. Here's a full report as to what transpired in this meet. Chinese President Xi Jinping held meetings with the world leaders in Riyadh on December 9th. Leaders from Qatar, Bahrain, Iraq, Djibouti, Lebanon and Algeria attended the meeting. According to sources during the meeting, Xi vowed to import more oil and natural gas from the energy-rich Gulf Arab states while not interfering in their affairs. Xi also urged the Arab countries to conduct energy sales in Chinese yuan, potentially divorcing from the US dollar from transactions in the region where the United States still stationed thousands of troops. Xi's visit to Saudi Arabia started from December 7th. He also attended the first China-Arab States Summit and the China Gulf Cooperation Council Summit. Bureau Report, Republic TV. And a roundup from across the globe, Chinese President Xi Jinping during the meeting in Riyadh vowed to import more oil and natural gas from energy-rich Gulf Arab states while not interfering in their affairs. Japanese Liberal Democratic Party lawmaker met with Taiwanese president in Taipei City on Saturday, pledging to help his country and Taiwan deepen relations with each other. Hundreds of protesters marched in Manila, demonstrated against rising number of extrajudicial killings and other injustices under the administration of Philippine President. The police estimated around 800 protesters took part in the rally, which coincided with International Human Rights Day. Grant Well, one of the most well-known soccer writers in the US, died early on while covering the World Cup match between Argentina and the Netherlands. According to sources, he received immediate medical treatment on site. Germany captain Manuel Neuer has been ruled out for the rest of the season after breaking his leg. Brazil departed Qatar the day after the World Cup quarter-final exit to Croatia on penalties. Tournament favourites Brazil have been knocked out of the World Cup after losing to Croatia, that won on penalties 4-2 in their quarter-final clash.
The 2022 World Cup is over after the Dutch national team, following a thriller quarter-final match, ended in victory for Argentina on Friday. Hundreds of Rohingya refugee Argentina fans watched Argentina beat the Netherlands in the World Cup quarter-final. The supporters wore the shirts of the Argentina's team and had their faces painted. Star Argentina striker Messi, following his side's win over Netherlands, slammed Netherlands manager for hitting long balls and keeping tall people to make a comeback into the game. Star Argentina striker Lionel Messi, following his side's win over Netherlands, slammed Netherlands manager for hitting long balls and keeping tall people to make a comeback into the game. Argentina marched into the semi-finals of the ongoing World Cup, FIFA World Cup in Qatar. India posted a mammoth score of 409, propelled by Ishan Kishan and Virat Kohli's super knocks at the stadium in Bangladesh in the final ODI of the three-match series against the Bangladesh team. A very short break coming up. On the other side, Imran Khan's party to hold rallies in Karachi demanding early elections. Electricity and food crisis grip Baltistan. Residents face acute starvation and unbearable cold. गुजरात में 141 सीटें मिली थी कांग्रेस को, उसके बाद आज 45 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। 149 ये इतिहास बनने वाली बात है। हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर 20,425 वोट से जीत गए। कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब हुई है, लेकिन साथ साथ मैं एक बात भी कहूंगा, जिस तरीके से गुजरात के अंदर चुनाव लड़ा गया उससे लोकतंत्र कमजोर होता है। हम हारे। Heavy security is being deployed to make sure that no untoward situation takes place. हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस जीते उनके लिए बहुत मायने रखेगा, क्योंकि 2018 से लेकर अब तक ये पहली कांग्रेस जीत होगी 2018 के बाद। जिस तरीके से नंबर्स एक के बाद एक और बढ़ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, हिमाचल में एक फाइट अभी भी बनी हुई है। क्लियर एंड ओपन लीड आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं। आम आदमी पार्टी इज नोवेयर इन द कॉन्टेस्ट इन गुजरात। In the recently concluded meeting, which was hosted by the Indian NSA, Mr. Ajit Doval, he'd invited NSAs from 5 Central Asian countries and they had come to New Delhi to attend. Taliban has welcomed it. And this has led to a lot of heartburn in Pakistan. But the fact of the matter is that Taliban says that, this is a welcome step by India. And Taliban says that it wants to assure the world that its land will not be used for terror activities against the neighbors. तो कांग्रेस के गढ़ में 18 कांग्रेस के जो सुपर फोर्ट्रेस में 12 में तो बीजेपी आगे है। आज जब रुझान आएंगे और नतीजों में जब तब्दील होंगे तब तक यही चलता रहेगा। तो बहुत ही नेक टू नेक फाइट है। गुजरात में इतिहास रचा जा रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता, देश के लिए काम किया, प्रदेश के लिए काम किया, उसका आशीर्वाद है। तो कुल मिलाकर यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दौर से ही जो है बढ़त बनाई है।
Now, 5 of the 6 Nobel Prizes are awarded in Stockholm every year after a nomination process that is kept secret for the next 50 years. In fact, the Nobel Peace Prize is being awarded to Belarusian, Russian and Ukrainian activists this year. Here's a full report. As the much-awaited Nobel Peace Prize ceremony took place yesterday, the 2022 Nobel Peace Prize is being presented to Belarusian, Russian and Ukrainian activists for promoting the right to criticize power and protect fundamental rights of citizens. The 3 winners are Oleksandr Matvichuk of Kyiv-based Center for Civil Liberties, Ryan Rachinsky of the Russian Human Rights Organization Memorial, and Natalia Pinchuk, collecting the award on behalf of her imprisoned husband, human rights advocate Ales Balyatsky of Belarus. One of the Nobel Prize winner, Oleksandr Matvichuk of Ukraine Center for Civil Liberties, denounced Russian President Vladimir Putin's war in Ukraine during Saturday's award ceremony. Авторитаризму і демократії. Ми боремося за можливість будувати державу, в якій права кожної людини захищені, влада підзвітна, суди незалежні, а поліція не б'є мирні студентські демонстрації на центральній площі столиці. Asserting the Russia's invasion of Ukraine, the winner then called for solidarity. І оскільки це Нобелівська премія миру під час війни, то я дозволю собі звернутися до людей у різних країнах світу із закликом до солідарності. Ви не маєте бути українцями, щоб підтримати Україну. Достатньо бути просто людиною. The other 2 winners too condemned Russia's action in their acceptance speeches. Pinchuk accused Russia of trying to make Ukraine a dependent dictatorship. Не тільки у той ступені, у якій їм дозволяє Путін. І тому треба змагатися супроти інтернаціоналу диктаторів. У мене відбувся короткий діалог. Коли на волю спитались. For Rachinsky, receiving the Nobel Prize is bittersweet, as his memorial, one of Russia's oldest and most prominent human rights organization, was shut down by Russia's Supreme Court in December 2021. With Nobel Prize winners condemning Russia's action in their speeches, it is clear that the Triple Peace Prize comes as a strong rebuke to Russian President Vladimir Putin. Now, news from the capital of the island of Jersey, where an explosion took place, claiming life of 1 person while injuring a dozen others. News also came in of how residents claimed that the fire crews were called hours before the blast due to the strong odor. An explosion was reported from the capital of the island of Jersey. Moreover, the explosion that occurred at a block of apartments St. Helier turned into a massive fire. The accident took life of 1, while dozen others have been reported as missing. The explosion took place in the early hours of Saturday, with residents claiming that the fire crews were called hours before the blast due to a strong smell of gas. Meanwhile, the chief officer of the States of Jersey Police calls the accident devastating. Officer further stated that the 3-story building had completely collapsed. Meanwhile, police officials said that an investigation has been initiated to figure out the cause of the accident, and on the other hand, a search operation has been initiated to look out for the missing persons. Agency report, Republic TV. Now, all eyes on Prime Minister's visit to Maharashtra today. Prime Minister is all set to inaugurate an expressway and projects amounting to 75,000 crore rupees in Maharashtra's Nagpur. December comes as a special day for Maharashtra, as Prime Minister Modi will lay foundation stone and dedicate projects worth rupees 75,000 crore.
The projects majorly include Vande Bharat Express, Nagpur Metro, AIIMS and the spectacular Samruddhi Mahamarg between Nagpur and Shirdi. At 9:30 a.m. this morning, Prime Minister Modi will reach Nagpur railway station, where Prime Minister will flag off the Vande Bharat Express. At around 10 a.m., he will take a metro ride and dedicate Nagpur Metro Phase 1 to the nation. He will also lay the foundation stone of Nagpur Metro Phase 2. At around 10:45 a.m., Prime Minister will inaugurate Phase 1 of Samruddhi Mahamarg. Known as the dream project of the Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, Samruddhi Mahamarg Expressway is a step towards the mega boost for connectivity. प्रधानमंत्री जी का नागपुर का जो दौरा है, महाराष्ट्र को बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग की एक बहुत बड़ी भेंट सौगात इस दौरे से मिलने वाली है। इससे महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और नॉर्थ महाराष्ट्र जैसे इलाकों का भाग्य बदलने वाला है। साथ साथ कई और कार्यक्रम हैं, लेकिन दो बड़ी सौगातें नागपुर शहर को हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है। मेट्रो का फेज 2 और नाग नदी रिजुविनेशन का प्रोजेक्ट जो 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसको जायका फंड कर रहा है। इसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि नागपुर के विकास में बहुत बड़ी गति मिलने वाली है। तो प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र को और नागपुर को बहुत बड़ी सौगात दी है। Set to be a game changer in providing major boost to the economic development of the state, the expressway connects Nagpur and Shirdi. The 701 kilometer long expressway project is being built at a cost of 55,000 and is one of India's longest expressways. Samruddhi Mahamarg will connect to the Delhi-Mumbai Expressway, Jawaharlal Nehru Port Trust and tourist locations like Ajanta Ellora Caves, Shirdi, Verul, Lunar, etc. From infrastructure to health, Prime Minister will dedicate AIIMS Nagpur to the nation at around 11:15 a.m. Later in Nagpur, Prime Minister will lay the foundation stone and dedicate national rail projects worth more than 1,500 crores. In total, rupees 75,000 crore worth of projects are in the list of Prime Minister today as he sets for Maharashtra. In this entire inauguration where Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde and Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis is also going to be present in the same event. The Samruddhi Mahamarg or Nagpur-Mumbai Super Communication Expressway, officially known as Hindu Hriday Samrat Bala Saheb Thackeray Maharashtra Samruddhi Mahamarg, is under construction, 6-lane wide, 701 kilometer long access control expressway in Maharashtra. It will be amongst the country's longest greenfield road projects, which will connect the two capital city of the state, its capital Mumbai, and its third largest and vice capital city Nagpur. The project has been led by the state infrastructure arm Maharashtra State Road Development Corporation and is designed under the engineering, procurement and construction model. So this is a dream project of Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, which was brought when he was the Chief Minister back before 2019. But it was some of the either way was laid down, but later now when Devendra Fadnavis is now the Deputy Chief Minister of Maharashtra, the project has completely started and now the first phase is going to be inaugurated by where Prime Minister Narendra Modi is going to inaugurate. माननीय प्रधानमंत्री जी, Bureau Report, Republic TV. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Meanwhile, the Maharashtra-Karnataka border row continues to simmer. In fact, former Chief Minister of Maharashtra, Uddhav Thackeray, has now said that the Prime Minister must intervene and clarify his stand on the Maharashtra-Karnataka border dispute. Shiv Sena faction Uddhav Thackeray hits out at the Prime Minister. Moreover, he asked the Prime Minister to give a proper stand over the Maharashtra-Karnataka border issue. He also defended the collegium system of appointment of judges and hit out at the Bharatiya Janata Party-led central government for pressurizing the judiciary and trying to bring it under its thumb. On the other hand, Shiv Sena Uddhav Bala Saheb Thackeray MP Sanjay Raut launched a blistering attack on the ruling Eknath Shinde government.
लेकिन आपके एक मुख्यमंत्री आपके पार्टी के अगर गृह मंत्री अमित शाह जी को मानने को तैयार नहीं, उसका मतलब क्या है? ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि इस देश में अमित शाह जी की बात मैं नहीं मानूंगा ऐसा उनका मुख्यमंत्री बोल रहा है। उसका मतलब ऐसा है कि ऐसी एक शक्ति है जो महाराष्ट्र को अपमानित करना चाहती है और उसे पूरा समर्थन कहां से मिल रहा है। लेकिन हम देख लेंगे, ये बात इंच की नहीं है, बात स्वाभिमान की है। To which Maharashtra Chief Minister responded by saying that the issue will be resolved soon. The Chief Minister further said that the Maharashtra government wants to maintain peace at the border areas. The development comes after an MVA delegation led by NCP MP Supriya Sule met the Union Home Minister in Delhi on Saturday over the border row. Moreover, Shah on his part is expected to call for a peace meeting between the two states. To which Karnataka Chief Minister Bommai said that the meeting will not make any difference. Following Bommai's statement, Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis said no village in his state will be ceded to Karnataka. Notably, responding to the counter-attack, Bommai dubbed Fadnavis' statement provocative and staked claim to Kannada-speaking regions of Maharashtra. Remember earlier on December 8th, Karnataka police cracked down protest which was demonstrated by the pro-Kannada activists in Bengaluru. The issue was strongly taken up in the parliament with demonstrations from Shiv Sena and NCP MPs when NCP leader Supriya Sule had called on Amit Shah. वहाँ के कन्नड़ वेदी का रक्षक करके कोई एक संस्था है, संगठन है, वो महाराष्ट्र में घुसी झंडा लेकर उनके संगठन का बोला ये गांव हमारे यहाँ इसमें समाविष्ट, उससे झगड़े बढ़ते गए। फिर उन्होंने कह दिया कि महाराष्ट्र के कोई भी मंत्री कर्नाटक में नहीं आए, ये तो संविधान के ऊपर हमला था। तो इसके लिए हमने माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना की कि आप इसमें इंटरव्यू करें, शांतता वहाँ शांति बरकरार रखने की आवश्यकता है। The Supreme Court decision would be very much decisive over the border dispute in Karnataka and Maharashtra. Bureau Report, Republic TV. Coming up on the other side, we'll get you that exclusive interview with Sukhwinder Sakhu as he's set to take oath today in Himachal. कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। इसलिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, सपने आपके, लैमिनेट्स हमारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। तो कांग्रेस के गढ़ में 18 कांग्रेस के जो सुपर फोर्ट्रेस में 12 में तो बीजेपी आगे है। आज जब रुझान आएंगे और नतीजों में जब तब्दील होंगे तब तक यही चलता रहेगा। तो बहुत ही नेक टू नेक फाइट है। गुजरात में इतिहास रचा जा रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता देश के लिए काम किया, प्रदेश के लिए काम किया, उसका आशीर्वाद है। तो कुल मिलाकर यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दौर से ही जो है बढ़त बनाई है। गुजरात में 141 सीटें मिली थी कांग्रेस को, उसके बाद आज 45 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। 149 ये इतिहास बनने वाली बात है। हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर 20,425 वोट से जीत गए। कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब हुई है, लेकिन साथ साथ मैं एक बात भी कहूंगा, जिस तरीके से गुजरात के अंदर चुनाव लड़ा गया उससे लोकतंत्र कमजोर होता है। हम हारे। Heavy security is being deployed to make sure that no untoward situation takes place. हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस जीते उनके लिए बहुत मायने रखेगा, क्योंकि 2018 से लेकर अब तक ये पहली कांग्रेस जीत होगी 2018 के बाद। जिस तरीके से नंबर्स एक के बाद एक और बढ़ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, हिमाचल में एक फाइट अभी भी बनी हुई है। क्लियर एंड ओपन लीड आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं। आम आदमी पार्टी इज नोवेयर इन द कॉन्टेस्ट इन गुजरात।
In the recently concluded meeting, which was hosted by the Indian NSA, Mr. Ajit Doval, he'd invited NSAs from 5 Central Asian countries and they had come to New Delhi to attend. Taliban has welcomed it. And this has led to a lot of heartburn in Pakistan. But the fact of the matter is that Taliban says that, this is a welcome step by India. And Taliban says that it wants to assure the world that its land will not be used for terror activities against the neighbors. The recently concluded meeting, which was hosted by the Indian NSA, Mr. Ajit Doval, he'd invited NSAs from 5 Central Asian countries and they had come to New Delhi to attend. Taliban has welcomed it. And this has led to a lot of heartburn in Pakistan. But the fact of the matter is that Taliban says that, this is a welcome step by India. And Taliban says that it wants to assure the world that its land will not be used for terror activities against the neighbors. A very good morning, viewers. You're watching Republic TV this morning, this Sunday morning. I'm Shivangi Shukla. Let's see what's making headlines right now. Chosen by Congress as Himachal Congress, Sukhvinder Sukhu set to take oath today along with Mukesh Agnihotri. Sidelined by High Command, but Pratibha Singh now says that she accepts the decision even as supporters stage protest. NIA team in Taran investigates RPG attack. Republic accesses evidence of Pakistan role as well as the crucial CCTV of the attack. The Prime Minister to land in Maharashtra today. Projects worth 75,000 to be launched, which will be dedicated by PM Modi. Dream project of Maharashtra Deputy Chief Minister, the 701-kilometer expressway to be inaugurated today. CBI to question KCR's daughter K. Kavita today in connection with the Liquorgate. We were getting some breaking updates starting at 8 a.m. now. West Bengal BJP President Sukanto Majumdar alleged that his car was attacked by miscreants who carried TMC flags with them during the incident. Sukanto Majumdar further alleged there is no democracy in the state and demanded a probe into the incident. This is what we're getting for you right now. Some breaking updates coming in at this point of time, viewers. Where we can tell you is that the West Bengal BJP President Sukanto Majumdar has now alleged, I repeat, he has alleged that his car was attacked by miscreants who carried TMC flags with them during that incident. Sukanto further alleged that there is no democracy in the state and demanded a probe into the incident. Now, we know that the BJP has attacked the TMC government time and again. The TMC government already on the back foot. A couple of its ministers are right now being investigated for scams, whether it be recruitment scam or the cattle smuggling scam. Right now, viewers, we are getting some more updates. Many reactions coming in, viewers. Let's play them out. সাথে দক্ষিণ 24 পরগনা এই জেলাকে ভাইপো এবং তার ডাকাত কোম্পানি একেবারে সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর করেছে। রিপাবলিক বাংলার গাড়িতেও আক্রমণ চালানো হচ্ছে, জানানোর ভাষা নেই, চোখে চোখ যারা চালিয়ে যান আরো জোরে চালান, এদের দুর্নীতি প্রকাশ করুন। রাজ্যের সাথে সাথে দক্ষিণ 24 পরগনা এই জেলাকে ভাইপো এবং তার ডাকাত কোম্পানি একেবারে সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর করেছে। রিপাবলিক বাংলার গাড়িতেও আক্রমণ চালানো হচ্ছে, জানানোর ভাষা নেই, চোখে চোখ যারা চালিয়ে যান আরো জোরে চালান, এদের দুর্নীতি প্রকাশ করুন। All right, viewers, so right now we can see visuals coming in and also we can see how Sukanto Majumdar has said that
action should be taken. This incident which has come in from West Bengal where Sukanto Majumdar's car was allegedly attacked. He says it was attacked, that's what he's saying, and it was attacked by miscreants who carried TMC flags. We're also getting some reactions coming in from the BJP. We're getting a couple of reactions. Let's play them out for our viewers. जो चोरों का सरकार है, जैसे जैसे इसका अपना स्वरूप बाहर आ रहा है, ये अपना जन समर्थन खो रहा है। आज ये जो बुआ भतीजा का सरकार है, आज ये सारे चीज में इसके पूरा मंत्री जेल में बैठा हुआ है। तो आज जो हम लोग इसको एक्सपोज कर रहा है, इसीलिए डर गए हैं। और सुकांतो मजूमदार जी, हमारा अध्यक्ष बंगाल के सुकांतो मजूमदार जी हर घर हर नुक्कड़ में पहुंच जा रहा है और इस आंदोलन को एकदम जमीन तक लेके जा रहा है। इसीलिए कायर के तरह आज उसका गाड़ी में हमला किया है, उसको मारने का कोशिश किया है। पुलिस टीएमसी का कैडर बन गया है और कैडर बन के टीएमसी का गुंडे जैसा बर्ताव कर रहा है। All right, let's go straight to Kishore. Kishore joining us live. Kishore, very good morning to you. You're joining us live from the Republic Bangla newsroom. Tell us what's happening right now, and has any kind of word also coming from the TMC? The TMC, in fact, is being said that they were the ones that attacked Sukanto Majumdar's car. Well, Shivangi, yesterday what happened, we all saw that the LOP leader of opposition Shubhendu Adhikari and his car and several of his followers were attacked in Joynagar at around 5 p.m. in the evening. Yesterday also Republic Bangla's car was attacked and our journalist was also targeted by miscreants, and allegedly all these are Trinamool Congress backed miscreants and goons. What happened was he was trying to visit one of the Sukanto Majumdar and Shubhendu Adhikari, all of them, both of them have alleged that this has been done by the Trinamool Congress miscreants, and he was actually trying to visit one of the houses of BJP workers who were previously attacked by Trinamool Congress, alleged Trinamool Congress goons in Hotuganj, when the day Shubhendu Adhikari and Abhishek Banerjee both were holding meetings in different parts of the state. Especially Shubhendu Adhikari was holding a meeting in Abhishek Banerjee's area in Diamond Harbour, and Abhishek Banerjee was holding a meeting in Shubhendu Adhikari's area in near Kathi. So that particular day several BJP workers were attacked allegedly by Trinamool Congress goons, that's the allegation. And then yesterday we saw how his car was attacked, and then also Republic Bangla's car and journalist was attacked by alleged Trinamool Congress goons. That's what the update was yesterday. Today we have got several reactions how Shubhendu Adhikari and Sukanto Majumdar both have spoken out, and both have alleged that this is actually being done by the Trinamool Congress goons who are directly supported by, they are saying, Abhishek Banerjee and Mamata Banerjee herself. They know about this, that's what they are saying. Therefore it's before the Panchayat elections next year, it's utter chaos in West Bengal where different parts of the state is witnessing such clashes between these two political parties, BJP and Trinamool Congress. And when such big leaders and stalwart leaders are also being attacked, especially in times like these, then we have to question what the police administration is doing in the state. Shivangi. Right, Kishore. Well, thank you so much for getting us all the top updates. Kishore, you're getting us top updates. The top update today has come from West Bengal, where the West Bengal BJP president Sukanto has alleged that his car was attacked by miscreants who were carrying TMC flags. Thank you, Kishore, and we'll be coming back to you as we get more updates on this top story. All right, viewers, now after the Congress has finalized Sukhwinder Singh Sukhu's name as its Chief Minister pick for Himachal Pradesh, he has now been officially made the Chief Minister designate at the Congress Legislature Party meeting. Pratibha Singh, who was also one of the contenders for the top post, was visibly upset during the official appointment. Meanwhile, Mukesh Agnihotri has been officially appointed as the Deputy Chief Minister designate. A swearing-in ceremony will take place today. Here is the full report. Close to 7 p.m., Congress made it official that Sukhwinder Sukhu has been named the next Chief Minister of Himachal. Mukesh Agnihotri will be the Deputy Chief Minister.
मैं एक आम परिवार से उठकर मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है और जब भी मैं जीवन के जिस काल में पहुंचा, मुझे एनएसयूआई का अध्यक्ष राजीव गांधी जी ने बनाया, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया और गांधी परिवार ने मुझ पर जो एक साधारण परिवार से उठकर राजनीति की जो सीढ़ियां मैंने चढ़ी है, उसमें गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। Pratibha Singh, wife of six-time Himachal CM Veerbhadra Singh, was seemingly sidelined by the party. Her demand to elevate her son was clearly overlooked. हम हाई कमांड का जो फैसला है उसको मानते हैं। अच्छा, क्या आपको कैबिनेट में तरजीह दी जाएगी आपके कैंप को? मैंने बोल दिया हाई कमांड का फैसला हमें मान्य है। On the face of it, Pratibha Singh, who is credited to have led the Congress to victory in the Hill State, is maintaining a united front. But Pratibha supporters have expressed their disappointment towards the top leaders of Congress. हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस रानी प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में सत्ता में आई है, तो इतना वक्त क्यों लगाया जा रहा है? उनको तुरंत घोषित किया जाए मुख्यमंत्री और आने वाले 2024 के चुनावों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आएगी अगर यहाँ पर रानी प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री नहीं होगी। With lot of crowd, if you can see the visuals, that huge supporters, after 48 hours, finally the announcement was made that Sukhwinder Singh Sukhu is the Chief Minister and Mukesh Agnihotri is the Deputy Chief Minister. Two announcements has been made by the Congress Party High Command. So did the Congress ignore the ground sentiment with their decision? Is Vadra Congress staring at further rebellion in Himachal? Bureau Report, Republic TV. Now viewers, after the official announcement by the Congress, Himachal Pradesh CM designate Sukhwinder Singh Sukhu met outgoing Himachal Pradesh CM Jairam Thakur at CM residence in Shimla. Following which, Sukhu spoke exclusively to Republic Media Network. Here's what he said and told us. Listen in. बहुत बहुत बधाई हो आपको। कितनी बड़ी चुनौती है और जनता को क्या कहेंगे आप? सर आप एक मिनट रुकिए। अब जो चुनौतियां ठाकुर साहब हमें छोड़कर गए हैं, उन चुनौतियों का सामना हम लोगों ने करना है और हम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, वर्तमान में तो अभी मुख्यमंत्री है, इनके सुझाव, इनके अनुभव भी लेंगे और राजनीतिक दृष्टिकोण जो होगा और जहां इनके अच्छे सुझाव होंगे वो भी हम सरकार में सम्मिलित करेंगे। सर आप बधाई देंगे? मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और आप जनता की सेवा में अपने कार्यकाल में सफल हों, ऐसी मेरी कामना है। और सबका एक लक्ष्य है कि हिमाचल आगे बढ़े, हिमाचल के लोगों की हम सेवा कर सके, बेहतर ढंग से कर सके, ये हमारा लक्ष्य है। और यहाँ हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है और राजनीति यहाँ बहुत सिद्धांत और इसके साथ होती है और हमने की भी है उस तरह से। सबसे पहले सबसे बड़ा काम आपको क्या होगा और मुख्यमंत्री आप बन रहे हैं तो मंत्रिमंडल का क्या स्वरूप होगा, शपथ किस तरह से? देखिए, अभी तो 2 लोगों को नाम अनाउंस हुए हैं और अभी इस बारे में कोई विस्तृत चर्चा हमारे इंचार्ज साहब से नहीं हुई है और काफी दिनों से हम चुनावों से थके भी, थोड़ा आराम भी करना चाहेंगे और उसके बाद इसमें पूरा आपस में कोई मतभेद की जो बातें हैं उससे निपट लेंगे आप? देखिए, मैं एक चीज बताऊं, मतभेद कांग्रेस पार्टी में था ही नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा क्रिएट किया गया था। हाँ, मैं नहीं के सामने इसलिए कह रहा हूँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा कि इनका दूल्हा कौन होगा, कौन किसके नेतृत्व में चुनाव होंगे। नहीं, मुझे तो वक्त लग गया तलाश करने में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ हैं मनोनीत नए मुख्यमंत्री और साथ ही हमारे साथ जो मुख्यमंत्री अभी भी हैं, क्योंकि कल के बाद वो पूर्व मुख्यमंत्री होंगे, जयराम ठाकुर जी। जयराम ठाकुर जी ने बधाई दी नए मुख्यमंत्री को। सुखविंदर सिंह सुक्खू बन गए हैं और कल वो औपचारिक रूप से शपथ ले लेंगे। आज उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है कांग्रेस
कांग्रेस की तरफ से चुनौती उनके सामने है। लेकिन देखा आपने, राजनीति इसी को कहते हैं, जब चुनाव प्रक्रिया चल रही थी तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ, पार्टियों के खिलाफ बयान देते थे, लेकिन आज जब अच्छी घड़ी आई है तो मुबारकबाद भी दी है। और देखा आपने किस तरह की जो दोस्ताना और मित्रता जो सामने देखने को मिली है। Viewers, Republic also spoke to the outgoing Himachal Pradesh Chief Minister Jairam Thakur, and here's what he had to say. हमने चुनाव कैंपेन के दौरान भी आपको देखा, आपने अपनी सीट फिर एक बार बड़े मार्जिन से जीती है। आपके इलाके की मंडी की ज़्यादातर सीटें, 10 में से 8 सीटों पर भी विजय हासिल हुई, लेकिन चुनाव में जो रिवाज था वो आप लोग खत्म नहीं कर पाए। देखिए, चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है, हमारा मुद्दा था, और जिस बात को लेकर के हमने चुनाव के दिनों में अपनी बात लोगों के बीच में कही है, लेकिन चुनाव का परिणाम तो जनता के माध्यम से आता है। जनता का जो जनादेश है उसका उसको हम स्वीकार करते हैं। और जो नई सरकार हिमाचल प्रदेश में बनने जा रही है, जो बनी है सरकार, अब बनी कांग्रेस पार्टी की, तो उसको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो वादे उनने किए हैं हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ वो उनको पूरा करे। और हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहां बहुत शालीनता, सहजता, सरलता मनुष्य के जीवन में है, और उसी रूप में इस सारी सरकार का संचालन करते हुए देवभूमि के संस्कारों के मुताबिक जो है आगे काम करे, यही मैं उम्मीद करता हूं। वोटों की अगर हम संख्या की बात करें तो उसमें बहुत ही थोड़े, कुछ हजार वोटों का ही फर्क है, सीटों में बहुत अंतर है। आप लोग समीक्षा करेंगे कि कहाँ खामी रह गई, क्या बागियों की वजह से ये स्थिति पैदा हुई? देखिए, हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है जब 1% से भी कम, 0.9% से जो सरकार बनी है, यानी कि जनादेश बिल्कुल बराबर का है। 37,000 वोटों का ही अंतर है, लेकिन सीटों का नंबर में अंतर है। लेकिन जनादेश, जनभाव, जो व्यक्ति ने अपना वोट दिया है, उस दृष्टि से अगर देखें तो अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी उस जनादेश को, क्योंकि बहुत थोड़ा सा जनादेश है, उसको संभाल कर रखना कठिन चुनौती भी है। और खास तौर से जिस प्रकार के मुद्दों को लेकर के उन लोगों के बीच में चुनाव के दिनों में अपनी जो गारंटीज का जिन्होंने जिक्र किया है, वो हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि सरल काम नहीं, कठिन काम है। और हम लोग देखेंगे, बारीकी से देखेंगे और उनको याद भी दिलाते रहेंगे, ये आपने कहा था, ये करिए। नेता विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? निश्चित रूप से हमारी भूमिका जो है, हम विपक्ष की इसमें होगी। नेता विपक्ष के नाते तो हमारा पार्टी का नेतृत्व का दायित्व किसको देना है, ये सारी चीजें अभी तय होंगी, क्योंकि अभी हमारी विधायक दल की बैठक नहीं हुई है। तो ऐसे में सिर्फ मैं एक ही चीज कहता हूं कि मेरी पार्टी विपक्ष में होगी, और विपक्ष में रह करके हम हिमाचल के विकास की, हिमाचल की समस्याओं को हर कदम पर इनको याद दिलाते रहेंगे कि ये आप करिए, और ये जो कमी है इसको दुरुस्त करिए, इसको ठीक करिए, और हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने की जहां तक बात आती है उसमें निश्चित रूप से हमारा भी सहयोग होगा। लेकिन कुछ बातें मैं ज़्यादा कहने नहीं चाह रहा हूं। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें जिस तरह से देखने को मिली हैं, सुनने को मिली हैं, लोगों ने देखी हैं, पूरे देश भर में देखी हैं। अभी बहुत तनातनी का एक माहौल चल रहा है। उस पहले तो बहुत बड़ी कठिनाई उसी से ही, लोगों की समस्याओं का समाधान तो एक जगह है, लेकिन उसी से ही बाहर निकलने में थोड़ा अभी कठिनाई है। और मैं इस बात को देख रहा था, पिछले कल महामहिम राज्यपाल जी के पास इनके वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता गए, जिसमें हिमाचल के नेता ही नहीं थे। वो भी बड़ा विचित्र लगा कि कोई सरकार की फॉर्मेशन के लिए, गठन के लिए जो निमंत्रण देने के लिए राज्यपाल के लिए प्रदेश के जस्ट जो व्यवस्था आज की उनने, हाँ जी, तो मुझे मालूम नहीं उन्होंने किस तरह से सारी चीजें, लेकिन उस पर मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ। तो आपको आशंका है कि सरकार स्मूथली चलेगी कि नहीं चलेगी? मुझे तो है ही है, लेकिन पूरे हिमाचल को है वो, क्योंकि हिमाचल पूरा देख रहा था
और बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये क्या हो रहा है। जो हमने आपका भी सरकार का गठन देखा, हम जो लोग नाटी डाल करके और स्वागत करते हुए पूरे प्रदेश भर से आए और यहाँ धक्का मुक्की में काम चल रहा है, तो हमने कहा इनकी नाटी ऐसी ही होती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जयराम ठाकुर, देखिए अभी भी उनके चेहरे पर मुस्कान है क्योंकि उनका अपना परफॉर्मेंस शानदार रहा है हमेशा की तरह, और जैसे एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री की भूमिका उन्होंने निभाई है। अब जनता उम्मीद करती है कि विपक्ष में बैठकर भी वो उतनी ही मजबूती से काम करेंगे और सरकार को लगातार उनको मजबूर करते रहेंगे कि वो जो वादे उन्होंने जनता से किए हैं उन्हें समय पर और जल्द से जल्द पूरा करें। Now, viewers, after being appointed as Himachal Pradesh Chief Minister, Sukhvinder Singh Sukhu is also to take oath today. Here's a detailed report on how protests gripped Himachal after Congress overlooked Vibhadra Singh's family. Congress makes it official that Sukhvinder Sukhu has been named the next Chief Minister of Himachal, while Mukesh Agnihotri will be the Deputy Chief Minister. गांधी परिवार ने मुझ पर जो एक साधारण परिवार से उठकर राजनीति की जो सीढ़ियां मैंने चढ़ी है, उसमें गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस योगदान के लिए मैं उनका व्यक्तिगत तौर से धन्यवाद करता हूं, और हिमाचल की जनता का, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाई है, जो वादे हिमाचल की जनता से हमने किए हैं, उन वादों को अक्षरशः लागू करने का दायित्व और जवाबदेही मेरी है। The oath of office will be held in the state capital today at 11 a.m. in the presence of top Congress delegation with the induction of Council of Ministers later as per the discretion of the Chief Minister. Meeting was held. Unanimously it was passed that choice of Chief Minister was left to High Command. Today it has been decided. All has accepted it. The appointment of Himachal Chief Minister witnessed all-out chaos as Pratibha Singh, wife of six-time Himachal Chief Minister Veerbhadra Singh, was seemingly sidelined by the party. Her demand to elevate her son was clearly overlooked. It was on this name we fought the election. It was Veerbhadra model that we brought forward, and even the posters, even the candidates who were fighting the elections thought that without Veerbhadra's picture in their posters will not solve the problem. So they put his picture and people were happy to see, and they said ki no. So now we will vote for the Congress. So everybody made it a point to bring his picture in the posters. Despite high voltage drama, celebrations did take place for Sukhu taking over as Himachal Chief Minister. On the face of it, Pratibha Singh, who is credited to have led the Congress to victory in the Hill State, is maintaining a united front. सर्वविदित है क्या डिसाइड हुआ, सर्वविदित है, हम हाई कमांड का जो फैसला है उसको मानते हैं। But Pratibha supporters have expressed the disappointment towards the top leaders of Congress. ये हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव हुए हैं, वो चुनाव राजा वीरभद्र सिंह के नाम पे लड़े गए, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के नाम पे लड़े गए। आज जब जीत मिली, रानी साहबा को जीत मिली, आज रानी साहबा को इग्नोर किया जा रहा है। हम हिमाचल में आग लगा लेंगे, आग लगा लेंगे। With lot of crowd, if you can see the visuals, that huge supporters, after 48 hours, finally the announcement was made that Sukhvinder Singh Sukhu is the Chief Minister and Mukesh Agnihotri is the Deputy Chief Minister. Two announcements has been made by the Congress Party High Command. The Vadra Congress concluded the meeting while locking the fourth-time legislator Sukhu as Chief Minister. With overlooking the ground sentiments that echoed Rani Sahiba Kulao, it remains to be seen whether the Congress could maintain a stability. Bureau Report, Republic TV. Viewers, much more coming up on the other side. NIA team in Taran investigates RPG attack. Republic accesses evidence of Pakistan role as well as crucial CCTV of the attack emerges. Plus, Prime Minister to land in Maharashtra today. Projects worth 75,000 crores to be launched or dedicated by Prime Minister Modi. कुछ मेरा
कुछ तुम्हारा। इसलिए ग्रीन लैम्प लैमिनेट्स, सपने आपके, लैमिनेट्स हमारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। One man was killed after a massive fire ravaged a shopping mall in Moscow's northwestern outskirts on Friday. Chennai cyclone Mandus had made a landfall around early in the morning today. A lot of damage has happened. 1 or 2 building had collapsed, poles and trees that is also uprooted and fallen down. 8-year-old boy Tanmay has now passed away. He was stuck at 400 feet deep borewell in Manvi village of Madhya Pradesh. तो कांग्रेस के गढ़ में 18 कांग्रेस के जो सुपर फोर्ट्रेस में 12 में तो बीजेपी आगे है। आज जब रुझान आएंगे और नतीजों में जब तब्दील होंगे तब तक यही चलता रहेगा। तो बहुत ही नेक टू नेक फाइट है। गुजरात में इतिहास रचा जा रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता देश के लिए काम किया, प्रदेश के लिए काम किया, उसका आशीर्वाद है। तो कुल मिलाकर यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दौर से ही जो है बढ़त बनाई है। गुजरात में 141 सीटें मिली थी कांग्रेस को। उसके बाद आज 45 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। 149 ये इतिहास बनने वाली बात है। हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर 20,425 वोट से जीत गए। कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब हुई है, लेकिन साथ साथ मैं एक बात भी कहूंगा, जिस तरीके से गुजरात के अंदर चुनाव लड़ा गया उससे लोकतंत्र कमजोर होता है। हम हारे। Heavy security is being deployed to make sure that no untoward situation takes place. हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस जीते उनके लिए बहुत मायने रखेगा, क्योंकि 2018 से लेकर अब तक ये पहली कांग्रेस जीत होगी 2018 के बाद। जिस तरीके से नंबर्स एक के बाद एक और बढ़ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, हिमाचल में एक फाइट अभी भी बनी हुई है। क्लियर एंड ओपन लीड आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं। आम आदमी पार्टी इज नोवेयर इन द कॉन्टेस्ट इन गुजरात। In the recently concluded meeting, which was hosted by the Indian NSA, Mr. Ajit Doval, he'd invited NSAs from 5 Central Asian countries and they had come to New Delhi to attend. Taliban has welcomed it. And this has led to a lot of heartburn in Pakistan. But the fact of the matter is that Taliban says that, this is a welcome step by India. And Taliban says that it wants to assure the world that its land will not be used for terror activities against the neighbors. कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। इसलिए ग्रीन लैम्प लैमिनेट्स, सपने आपके, लैमिनेट्स हमारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस जीते उनके लिए बहुत मायने रखेगा, क्योंकि 2018 से लेकर अब तक ये पहली कांग्रेस जीत होगी 2018 के बाद। जिस तरीके से नंबर्स एक के बाद एक और बढ़ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, हिमाचल में एक फाइट अभी भी बनी हुई है। क्लियर एंड ओपन लीड आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं। आम आदमी पार्टी इज नोवेयर इन द कॉन्टेस्ट इन गुजरात।
One man was killed after a massive fire ravaged a shopping mall in Moscow's northwestern outskirts on Friday. Chennai cyclone Mandus had made a landfall around early in the morning today. Lot of damages happened. 1 or 2 building had collapsed. Poles and trees that is also uprooted and fallen down. 8-year-old boy Tanmay has now passed away. He was stuck at 400 feet deep borewell in the Manvi village of Madhya Pradesh. तो कांग्रेस के गढ़ में 18 कांग्रेस के जो सुपर फोर्ट्रेस में 12 में तो बीजेपी आगे है। आज जब रुझान आएंगे और नतीजों में जब तब्दील होंगे तब तक यही चलता रहेगा। तो बहुत ही नेक टू नेक फाइट है। गुजरात में इतिहास रचा जा रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता देश के लिए काम किया, प्रदेश के लिए काम किया, उसका आशीर्वाद है। तो कुल मिलाकर यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दौर से ही जो है बढ़त बनाई है। गुजरात में 141 सीटें मिली थी कांग्रेस को। उसके बाद आज 45 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। 149 ये इतिहास बनने वाली बात है। हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर 20,425 वोट से जीत गए। कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब हुई है, लेकिन साथ साथ मैं एक बात भी कहूंगा, जिस तरीके से गुजरात के अंदर चुनाव लड़ा गया उससे लोकतंत्र कमजोर होता है। हम हारे। We will stop headlines right now. Chosen by Congress as Himachal Congress, Sukhvinder Sukhu set to take over today along with Mukesh Agnihotri. Sidelined by High Command, but Pratibha Singh says she accepts the decision even as supporters stage protest. NIA team in Tarantar investigates RPG attack. Republic accesses evidence of Pakistan role as well as crucial CCTV of the attack. Prime Minister to land in Maharashtra today. Projects worth 75,000 crores to be launched or dedicated by the Prime Minister. Dream project of Maharashtra Deputy CM, the 701-kilometer expressway to be inaugurated today. CBI to question KCR's daughter K. Kavita today in connection with Liquorgate. Viewers, let's go straight to the top story coming in this Sunday morning. We're getting in visuals right now of the CBI officials at K. Kavita's residence. And remember, the Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao's daughter, and she's also, remember, the BRS MLC K. Kavita will be questioned in connection with the Delhi excise policy scam. Now, those visuals will be on your screen soon already, viewers. And also, we are also learning that security has been tightened outside K. Kavita's residence in Hyderabad ahead of the CBI questioning. Security has been tightened and the CBI team is right now at the K. Kavita residence as well. Now her questioning will happen very, very shortly, viewers. And the questioning will be held at Kavita's Banjara Hills residence in Hyderabad. This is the big news coming in right now. Viewers, remember that approximately the questioning will be starting a little bit later after around 11 a.m. That's what we're learning. Let's go to Samiksha joining us from the Mumbai newsroom. Samiksha, very good morning to you. Now, K. Kavita's name has come up in Liquorgate, in the same Liquorgate where Manish Sisodia is named as a number 1 in the FIR. Samiksha, take us to the details.
Well, absolutely, Shivangi. To begin with, let's not forget that there was a remand copy that was submitted by the Enforcement Directorate in the court where it had stated that how Kavita allegedly received kickbacks. So, of course, with the ED, the CBI simultaneously also probing the alleged kickbacks that were received in the scam gate. Now, what we are expecting today is a questioning of K. Kavita, the daughter of KCR, which will happen at around 11 a.m. At her residence. In fact, an FIR that was also filed by the CBI, to which K. Kavita had responded saying that her name did not feature in any way in that complaint copy that was filed in this case. So we can expect the questioning to happen at around 11 a.m. in her residence. In fact, not just that, there were posters also that were put up earlier outside her residence in her support by her supporters, saying that she's the daughter of a fighter and that she's not going to give up. So let's just see how this pans out. But of course, that questioning can happen, will happen anytime at around 11 a.m. Shivangi. Right, and she had in fact been called earlier as well, and Kavita had said earlier she will not be able to make appearance before December 11 due to a preoccupied schedule. Right now, Samiksha, just take us through the details, because Kavita's name has been coming up. Now the CBI questioning will take place. Take us through exactly what the Delhi excise policy scam was about and how Kavita's name is connected to Liquorgate. So, Shivangi, there are a lot of political links also that have emerged in this liquor scam case. Now, just to talk about the accused in this case, another accused who is Vijay Nair. In fact, as per the investigation that has been carried out so far, it's been stated that on behalf of leaders of AAP, Vijay Nair, who's also an accused in this case, had received kickbacks to the tune of almost over 100 crore rupees. So, other than Vijay Nair, we have Sarath Reddy, Kavita Reddy, who are also being probed by the agency. In fact, these are the details of the remand copy that was submitted by the Enforcement Directorate in the Delhi court, where it stated that how Kavita allegedly received kickbacks on behalf of some political leaders. So yes, it's political angle also that has emerged in this case. The questioning, of course, will happen at around 11 a.m. in a case after that FIR was registered in this case. So it's not just the CBI and but the ED as well that is probing the money laundering charge in this particular case. So we can expect host of developments in this case. But K. Kavita for now says that her name does not feature anywhere in this FIR, but she would cooperate with the agency. In fact, in that reply also that she submitted to the summons that were given by the CBI to her in this case, she stated that she would be available for questioning between December 11 to December 15, but not categorically on 13. So yes, that's the development expected today. CBI will be questioning K. Kavita at her residence today. Shivangi. All right, Samiksha, thank you for joining us. So Samiksha is saying that the questioning will start very soon in just a couple of hours. And remember, like she's saying, K. Kavita's name came up in the remand copy filed by the ED in a Delhi court on the alleged illicit payments in the Liquorgate scam. Well, thank you, Samiksha. We'll be coming back to you as we get more details. Let's move on to the other big story we're tracking in Republic TV right now. The Republic has accessed the CCTV footage of a purported terror attack in the police station in Punjab Borders district of Taran. Notably, the police station was attacked with a RPG during the intervening night of Friday and Saturday at around 1 a.m. Here is the full story. Saturday 11:12 p.m. at Sarhali police station in Punjab's border district of Taran, a rocket-propelled grenade was fired. This video captures the moment of blast, showing splinters. ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਗੇਟ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਟ੍ਰਾਂਸ ਬਾਰਡਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਾਡੇ ਗਵੰਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਟੂ ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ ਬਾਈ 1000 cuts. The Pakistani imprint on the attack is clear. These military-grade shells with Pak inscription reveal Pakistan's role in attack. They are linked to the gangster Satta, who has been a close associate of the Pakistani Khalistani terrorist Harvinder Rinda, and he was actively supporting Rinda to carry out act of terror. The laxity on the part of Punjab police is also under question.
there was already an alert that was issued by the Punjab police. Now that alert copy, this was the copy of the poster that was pasted here, which clearly mentioned that there are regular inputs that terrorists will try to carry out the attack on the police station, and all need to be on the alert. There need to be a special deployment of the Santri, but there was nothing that was done, and now the poster also has been removed after we played this news that there was an alert, there was a poster, there was an intelligence input that was issued, but that was not paid heed to. There was no deployment of the Santri. Only one CCTV was deployed. This is the second RPG attack in 7 months in the border state of Punjab. With Pakistan trying to stoke fire in Punjab using Khalistani elements, it's time to crush anti-India elements. Bureau Report, Republic TV. And viewers, the Maharashtra-Karnataka border row continues, and in a latest development, fresh attempt of pro-Kannada activists to protest was foiled by the police in Bengaluru. Meanwhile, former Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray said Prime Minister Modi should clarify his stand on the simmering border dispute. Here is a full report. Shiv Sena faction Uddhav Thackeray hits out at the Prime Minister. Moreover, he asked the Prime Minister to give a proper stand over the Maharashtra-Karnataka border issue. He also defended the collegium system of appointment of judges and hit out at the Bharatiya Janata Party-led central government for pressurizing the judiciary and trying to bring it under its thumb. On the other hand, Shiv Sena Uddhav Bala Sahab Thackeray MP Sanjay Raut launched a blistering attack on the ruling Eknath Shinde government. लेकिन आपके एक मुख्यमंत्री आपके पार्टी के अगर गृह मंत्री अमित शाह जी को मानने को तैयार नहीं, उसका मतलब क्या है? ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि इस देश में अमित शाह जी की बात मैं नहीं मानूंगा ऐसा उनका मुख्यमंत्री बोल रहा है। उसका मतलब ऐसा है कि ऐसी एक शक्ति है जो महाराष्ट्र को अपमानित करना चाहती है और उसे पूरा समर्थन कहां से मिल रहा है। लेकिन हम देख लेंगे, ये बात इंच की नहीं है, बात स्वाभिमान की है। To which Maharashtra Chief Minister responded by saying that the issue will be resolved soon. The Chief Minister further said that the Maharashtra government wants to maintain peace at the border areas. The development comes after an MVA delegation led by NCP MP Supriya Sule met the Union Home Minister in Delhi on Saturday over the border row. Moreover, Shah on his part is expected to call for a peace meeting between the two states. To which Karnataka Chief Minister Bommai said that the meeting will not make any difference. Following Bommai's statement, Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis said no village in his state will be ceded to Karnataka. Notably, responding to the counter-attack, Bommai dubbed Fadnavis' statement provocative and staked claim to Kannada-speaking regions of Maharashtra. Remember, earlier on December 8th, Karnataka police cracked down protest which was demonstrated by the pro-Kannada activists in Bengaluru. The issue was strongly taken up in the parliament with demonstrations from Shiv Sena and NCP MPs when NCP leader Supriya Sule had called on Amit Shah. वहाँ के कन्नड़ वेदी का रक्षक करके कोई एक संस्था है, संगठन है, वो महाराष्ट्र में घुसी झंडा लेकर उनके संगठन का बोला ये गांव हमारे यहाँ पे समाविष्ट करो। उससे झगड़े बढ़ते गए। फिर उन्होंने कह दिया कि महाराष्ट्र के कोई भी मंत्री कर्नाटक में नहीं आए, ये तो संविधान के ऊपर हमला था। तो इसके लिए हमने माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना की कि आप इसमें इंटरव्यू करें, शांतता वहाँ शांति बरकरार रखने की आवश्यकता है। The Supreme Court decision would be very much decisive over the border dispute in Karnataka and Maharashtra. Bureau Report, Republic TV. Viewers, much more coming up on the other side, sidelined by High Command. But Pratibha Singh says she accepts the decision even as supporters stage protest.
heavy security is being deployed to make sure that no untoward situation takes place. गुजरात में 141 सीटें मिली थी कांग्रेस को, उसके बाद आज 45 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। 149 ये इतिहास बनने वाली बात है। हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर 20,425 वोट से जीत गए। कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब हुई है, लेकिन साथ साथ मैं एक बात भी कहूंगा, जिस तरीके से गुजरात के अंदर चुनाव लड़ा गया उससे लोकतंत्र कमजोर होता है। हम हारे। हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस जीते उनके लिए बहुत मायने रखेगा, क्योंकि 2018 से लेकर अब तक ये पहली कांग्रेस जीत होगी 2018 के बाद। जिस तरीके से नंबर्स एक के बाद एक और बढ़ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, हिमाचल में एक फाइट अभी भी बनी हुई है। क्लियर एंड ओपन लीड आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं। आम आदमी पार्टी इज नोवेयर इन द कॉन्टेस्ट इन गुजरात। One man was killed after a massive fire ravaged a shopping mall in Moscow's northwestern outskirts on Friday. Chennai cyclone Mandus had made a landfall around early in the morning today. A lot of damages happened. 1 or 2 building had collapsed. Poles and trees that is also uprooted and fallen down. 8-year-old boy Tanmay has now passed away. He was stuck at 400 feet deep borewell in the Manvi village of Madhya Pradesh. तो कांग्रेस के गढ़ में 18 कांग्रेस के जो सुपर फोर्ट्रेस में 12 में तो बीजेपी आगे है। आज जब रुझान आएंगे और नतीजों में जब तब्दील होंगे तब तक यही चलता रहेगा। तो बहुत ही नेक टू नेक फाइट है। गुजरात में इतिहास रचा जा रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता देश के लिए काम किया, प्रदेश के लिए काम किया, उसका आशीर्वाद है। कुल मिलाकर यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दौर से ही जो है बढ़त बनाई है। गुजरात में 141 सीटें मिली थी कांग्रेस को, उसके बाद आज 45 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। 149 ये इतिहास बनने वाली बात है। हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर 20,425 वोट से जीत गए। कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब हुई है, लेकिन साथ साथ मैं एक बात भी कहूंगा, जिस तरीके से गुजरात के अंदर चुनाव लड़ा गया Top global updates. Chinese President Xi Jinping during the meeting vowed to import more oil and natural gas from energy-rich Gulf Arab states while not going ahead and interfering with their affairs. Japanese Liberal Democratic Party lawmaker Koichi Hagyuda met with Taiwanese President Tsai Ing-wen in Taipei City on today, pledging to help his country and Taiwan deepen relations with each other. Hundreds of protesters marched in Manila, demonstrated against rising number of extrajudicial killings and other injustices under the administration of Philippine President Ferdinand Marcos Jr. Police estimated around 800 protesters took part in the rally, which coincided with International Human Rights Day. Grant Wahl, one of the most well-known soccer writers in the US, died early today while covering the World Cup match between Argentina and Netherlands. According to sources, he received immediate medical treatment on site, though the cause of his death is yet not found. Viewers, we continue to be live and breaking this morning on Sunday. NIA team in Tarantaran investigates RPG attack and Republic accesses evidence of Pakistan role as well as crucial CCTV of the attack. तो
तो कांग्रेस के गढ़ में 18 कांग्रेस के जो सुपर फोर्ट्रेस में 12 में तो बीजेपी आगे है। आज जब रुझान आएंगे और नतीजों में जब तब्दील होंगे तब तक यही चलता रहेगा। तो बहुत ही नेक टू नेक फाइट है। गुजरात में इतिहास रचा जा रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता देश के लिए काम किया, प्रदेश के लिए काम किया, उसका आशीर्वाद है। तो कुल मिलाकर यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दौर से ही जो है बढ़त बनाई है। Heavy security is being deployed to make sure that no untoward situation takes place. गुजरात में 141 सीटें मिली थी कांग्रेस को, उसके बाद आज 45 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। बिल्कुल 149 ये इतिहास बनने वाली बात है। हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर 20,425 वोट से जीत गए। कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब हुई है, लेकिन साथ साथ मैं एक बात भी कहूंगा, जिस तरीके से गुजरात के अंदर चुनाव लड़ा गया उससे लोकतंत्र कमजोर होता है। हम हारे। हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस जीते उनके लिए बहुत मायने रखेगा, क्योंकि 2018 से लेकर अब तक ये पहली कांग्रेस जीत होगी 2018 के बाद। जिस तरीके से नंबर्स एक के बाद एक और बढ़ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, हिमाचल में एक फाइट अभी भी बनी हुई है। क्लियर एंड ओपन लीड आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं। आम आदमी पार्टी इज नोवेयर इन द कॉन्टेस्ट इन गुजरात। One man was killed after a massive fire ravaged a shopping mall in Moscow's northwestern outskirts on Friday. Chennai cyclone Mandus had made a landfall around early in the morning today. A lot of damages happened. 1 or 2 building had collapsed. Poles and trees that is also uprooted and fallen down. 8-year-old boy Tanmay has now passed away. He was stuck at 400 feet deep borewell in Manvi village of Madhya Pradesh. तो कांग्रेस के गढ़ में 18 कांग्रेस के जो सुपर फोर्ट्रेस में 12 में तो बीजेपी आगे है। आज जब रुझान आएंगे और नतीजों में जब तब्दील होंगे तब तक यही चलता रहेगा। तो बहुत ही नेक टू नेक फाइट है। गुजरात में इतिहास रचा जा रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता देश के लिए काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के नागपुर में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ और नाग नदी प्रदूषण उपशमन परियोजना का शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत प्रदूषण उपशमन परियोजना 1925 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से संचालित की जाएगी। पीएम मोदी सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथिस चंद्रपुर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उन्होंने इसकी आधारशिला 2019 में रखी थी। इसके साथ ही पीएम केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान चंद्रपुर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री एम्स नागपुर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री ने जुलाई 2017 में रखी थी। शहरी गतिशीलता में क्रांति लाने वाला एक और कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नागपुर मेट्रो के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वो खपरी मेट्रो स्टेशन पर 2 मेट्रो ट्रेनों, खपरी से ऑटोमोटिव स्क्वायर और प्रजापति नगर से लोकमान्य नगर एक्वा लाइन को हरी झंडी दिखाएंगे।
नागपुर मेट्रो का पहला चरण 8,650 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री 6,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित होने वाले नागपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी नागपुर रेलवे स्टेशन पर नागपुर और बिलासपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम मोदी नागपुर में सार्वजनिक समारोह में नागपुर रेलवे स्टेशन और अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास भी करेंगे। वो सरकारी मेंटेनेंस डिपो अजनी नागपुर और नागपुर इटारसी तीसरी लाइन परियोजना के कोहली नरखेर खंड को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा के भी दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में रखी थी। इस हवाई अड्डे को लगभग 2,870 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इसे स्थायी बुनियादी ढांचे के थीम पर तैयार किया गया है और इसमें सौर अन्य सुविधाओं के साथ साथ ऊर्जा संयंत्र, हरित भवन, रनवे पर एलईडी लाइटें, वर्षा जल संचयन, रिसाइकलिंग सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक सीवेज उपचार संयंत्र हैं। हवाई अड्डे के निर्माण में 3D मोनोलिथिक प्रीकास्ट बिल्डिंग, स्टेबल रोड, रोबोमेटिक हॉलो प्रीकास्ट वॉल, 5G कंपैटिबल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कुछ सर्वश्रेष्ठ तकनीकों को अपनाया गया है। हवाई अड्डे की कुछ विशेषताओं में दुनिया के सबसे बड़े विमानों को संभालने में सक्षम रनवे, विमानों के लिए रात की पार्किंग सुविधा के साथ साथ 14 पार्किंग बे, सेल्फ बैगेज ड्रॉप सुविधाएं, अत्याधुनिक और आत्मनिर्भर हवाई नेविगेशन बुनियादी ढांचा शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का भी उद्घाटन करेंगे और 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। पीएम 3 संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करेंगे और लोगों के लिए सस्ती आयुष सेवाओं की सुविधा भी प्रदान करेंगे। इन संस्थानों को लगभग 970 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित किया गया है। इनके माध्यम से अस्पताल के बिस्तरों की संख्या में लगभग 500 की वृद्धि होगी और छात्रों के प्रवेश में भी लगभग 400 की वृद्धि होगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल के नेता पद पर निर्वाचित होने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं पिछली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शनिवार शाम को विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा की। हिमाचल में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनेगा। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। इसके अलावा पूर्व सांसद चंद्र कुमार के नाम पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू इन तमाम दावेदारों को पीछे छोड़ने में सफल रहे। In the recently concluded meeting, which was hosted by the Indian NSA, Mr. Ajit Doval, he had invited NSAs from 5 Central Asian countries and they had come to New Delhi to attend. Taliban has welcomed it. And this has led to a lot of heartburn in Pakistan. But the fact of the matter is that Taliban says that, this is a welcome step by India. And Taliban says that it wants to assure the world that its land will not be used for terror activities against the neighbors. कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। इसलिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, सपने आपके, लैमिनेट्स हमारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। In the recently concluded meeting, which was hosted by the Indian NSA, Mr. Ajit Doval, he had invited NSAs from 5 Central Asian countries and they had come to New Delhi to attend. Taliban has welcomed it.
And this has led to a lot of heartburn in Pakistan. But the fact of the matter is that Taliban says that, this is a welcome step by India. And Taliban says that it wants to assure the world that its land will not be used for terror activities against the neighbors. तो कांग्रेस के गढ़ में 18 कांग्रेस के जो सुपर फोर्ट्रेस में 12 में तो बीजेपी आगे है। आज जब रुझान आएंगे और नतीजों में जब तब्दील होंगे तब तक यही चलता रहेगा। तो बहुत ही नेक टू नेक फाइट है। गुजरात में इतिहास रचा जा रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता देश के लिए काम किया, प्रदेश के लिए काम किया, उसका आशीर्वाद है। कुल मिलाकर यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दौर से ही जो है बढ़त बनाई है। Heavy security is being deployed to make sure that no untoward situation takes place. गुजरात में 141 सीटें मिली थी कांग्रेस को, उसके बाद आज 45 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। बिल्कुल 149 ये इतिहास बनने वाली बात है। हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर 20,425 वोट से जीत गए। कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब हुई है, लेकिन साथ साथ मैं एक बात भी कहूंगा, जिस तरीके से गुजरात के अंदर चुनाव लड़ा गया उससे लोकतंत्र कमजोर होता है। हम हारे। हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस जीते उनके लिए बहुत मायने रखेगा, क्योंकि 2018 से लेकर अब तक ये पहली कांग्रेस जीत होगी 2018 के बाद। जिस तरीके से नंबर्स एक के बाद एक और बढ़ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, हिमाचल में एक फाइट अभी भी बनी हुई है। क्लियर एंड ओपन लीड आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं। आम आदमी पार्टी इज नोवेयर इन द कॉन्टेस्ट इन गुजरात। Good morning. Thanks for tuning in this Sunday morning. We are live and breaking. I'm Samiksha Srivastava. Let's get started with the top headlines this Sunday morning. Liquorgate probe widens KCR's daughter to be grilled by CBI in Hyderabad today. On fast unto death, YSRTP chief Y Sharmila arrested by KCR co-ops, moved to hospital as health worsens. From Maharashtra to Goa, Prime Minister Modi said to inaugurate a plethora of projects. Dream project of Maharashtra Deputy Chief Minister, the 701-kilometer expressway to be inaugurated today. Chosen by Congress as Himachal Chief Minister, Sukhwinder Sukhu set to take oath today along with Mukesh Agnihotri as Deputy Chief Minister. Sidelined by High Command, but Pratibha Singh says she accepts the decision even as supporters stage protest. And straight up starting with a big breaking news coming in from Himachal, where the oath-taking ceremony of Sukhwinder Sukhu will take place today. In fact, we've also accessed the full list of the key attendees at the oath-taking ceremony. Even as the Vadra Congress chaos continues and rebellion has only been brewing within the Congress, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra, Mallikarjun Kharge and Sachin Pilot will be attending the oath ceremony of Sukhwinder Sukhu, who's all set to take oath as a Himachal Pradesh Chief Minister. So after nearly 4 decades of his loyalty for the Grand Old Party, Sukhwinder Singh Sukhu has been chosen as a Himachal Chief Minister.
This even as the rebellion continues to grow within the Congress, and Pratibha Singh supporters staged a protest as they demanded Pratibha Singh to be elected as the Chief Minister of the Congress. So the breaking update coming in this hour that Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra will be attending, along with the Congress Chief Mallikarjun Kharge, will be attending the oath-taking ceremony. We have Amandeep reporting live from Shimla. Amandeep, good morning. Take us through the breaking updates you're picking up, starting with the guest list that we've accessed who will be attending the oath-taking ceremony of the CM. Well, absolutely. Samiksha, the point is that Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Mallikarjun Kharge, these are the main faces from Congress High Command who are attending the oath-taking ceremony of Sukhwinder Singh Sukhu as a Chief Minister and Mukesh Agnihotri as a Deputy Chief Minister. Just because it was the direct intervention of Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra for deciding the Chief Minister's name after so many complications and after the wait of almost 48 hours. So that is the reason they are coming here. They are landing in Shimla and will attend the oath-taking ceremony of Sukhwinder Singh Sukhu and Mukesh Agnihotri. Though none of other has been decided as a minister, and in fact on the other side, Pratibha Singh, who was highlighting the fact that the legacy of late Veerbhadra Singh should not be ignored and should be considered by the Congress High Command. So far, Vikramaditya's name has not been mentioned in the cabinet ministry, and no one else is taking the oath today. And in fact, no cabinet decided. Vikramaditya has not been decided as a cabinet minister, and only Chief Minister and Deputy Chief Minister are taking oaths today itself by 1:30 p.m. That will be taking place at the Mall Road at Ridge. And in fact, this is a very important ceremony for the Himachal Congress, just because from past 48 hours we have witnessed so many rebellion, so much protest when the name of Sukhwinder Sukhu was decided as a Chief Minister. Pratibha's camp was protesting and raising the slogans for Pratibha to be the Chief Minister. But now finally the Congress has streamlined the system, and even the point is, Samiksha, let's wait and watch that either Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi or Mallikarjun Kharge will meet Pratibha family separately apart from all this group, and or they will be meeting with the entire group of the Congress workers and the leaders. It is the most important part, just because from yesterday we have trying to observe the situation. Pratibha Singh has accepted the decision of Congress High Command, but with a lot of disappointment. She was not openly speaking against the decision, but yes, she is disappointed. Her expressions revealed that. Well, absolutely, Amandeep. It will be interesting to watch, as you mentioned, that will the Congress High Command meet Pratibha Singh's family or not. But Amandeep, just a short while back, also spoke to the family of the CM designate, Sukhwinder Sukhu. Let's listen in on what they had to say ahead of the oath-taking ceremony. बहुत बड़ा दिन है, भगवान की बहुत कृपा आप सब लोगों की और प्रदेशवासियों की, सबकी बहुत बहुत हाँ जी धन्यवाद। हाँ जी। एक लंबी वेट थी और उसके बाद ये दिन आया है, तो आज आप भी ओथ सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर रही हैं? हाँ जी, मैं जा रही हूँ, उनके साथ जरूर जा रही हूँ। हाँ जी, जा रही हूँ। आप ऐसे लग रहा है कि बहुत भगवान की पूजा करके यहाँ पहुँच रही हैं, बहुत धन्यवाद करके पहुँच रही हैं। आपका एक्सप्रेशन बहुत बता रहा है कि खुशी बहुत है। नेचुरली, ऑब्वियसली, और धन्यवाद हाई कमान का और हमारे प्रदेशवासियों का, सबका मैं निःशब्द है। थैंक यू। कैसे देखते हैं आप, बहुत बड़ा दिन है आज सब लोगों के लिए, हिमाचल के लिए, परिवार के लिए? डेफिनेटली वी आर वेरी हैप्पी। हमें बहुत खुशी है कि हमारे जो फादर है वो इतनी मेहनत के बाद बन गए हैं, एंड वी वुड लाइक टू थैंक द पीपल ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस घाटी एंड ऑफ हिमाचल मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। Yeah. Anything special that you want to convey to your father after he was appointed as a chief minister? He's made all these promises, like the party's made all these promises, and I'm sure they're going to be fulfilled in the near future. So I just hope that they're quick in doing it. Yes. Thank you. Amandeep, of course, continues to be live with us, reporting live from Shimla. Amandeep, we've seen the kind of high-voltage drama in Shimla over the past few days with the supporters of Pratibha Singh staging protest. The question is that how exactly is the Congress planning to, assuage the concerns and tackle, and its strategy way forward to tackle that growing rebellion within the Congress in Himachal Pradesh?
Well, Samiksha, this strategy was planned yesterday by settling down Vikramaditya as a cabinet minister, and in fact earlier the decision was made by the Congress High Command that CM, Deputy CM and Vikramaditya will take oath as a cabinet minister. But later by the evening when the CLP meet started, and in fact all of a sudden it was a shocking announcement that only Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu and Deputy Chief Minister Mukesh Agnihotri, they both names of both persons has been announced by Rajiv Shukla and Bhupinder Singh Hooda and Bhupesh Baghel. Vikramaditya's name, which was very much expected, that was not actually in the list, and in fact that turned to be the most important point. But now again Congress is trying to settle down the issue by making sure that Vikramaditya will be adjusted in the Sukhu's cabinet. Even in the late night several meetings were held with certain MLAs of Chief Minister, designated Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu, and in fact more names to be decided for the cabinet ministry. But Pratibha camp stay separate from all these meetings. They are at their residence. They are not participating in any kind of meeting with Chief Minister, designated Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu or Deputy Chief Minister Mukesh Agnihotri. So somewhere we are sensing that that issue has not died down so far. It was a Congress which was in very hurry, just make the announcement of the Chief Minister and organize the oath ceremony at the earliest, so that at least the rebellion should not get time to react on this. But the issue is still alive. The issue is still sustaining. The disappointment of Pratibha camp is still sustaining. We have witnessed a huge protest yesterday, and behind that protest there is the emotions and the disappointment of the Pratibha family. And in fact so far they have not been settled down. Congress is trying to console, and in fact that is the reason we are keeping a very sharp eye that either Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra is going to meet Pratibha separately from the Congress meetings, or the meeting will take place entirely in front of all Congress leaders. All right, yes, Samiksha. Amandeep, thank you for the moment. So Amandeep reporting live. So we'll be watching out for that oath ceremony of Sukhvinder Sukhu that will take place today. But at the same time, as Amandeep was telling us, the camp of Pratibha Singh have not been attending the key meetings that are being held by the Congress High Command in the state of Himachal Pradesh. For now, moving on to another breaking news coming in. This one in relation to the Taran attack which happened yesterday, the RPG attack, which is the second such attack to have happened in last 7 months. In fact, we've accessed the full FIR copy in the Taran RPG attack case, the FIR that's been registered under sections for charges of attempt to murder, UAPA for conspiracy against India, and Explosives Substance Act to endanger life using explosives. So, Republic having accessed the full FIR that's been registered in the Taran case, the FIR that has been registered on information of the ASI Bishan Das, who was inside the police station when the attack took place. Important to note here that it is the second such RPG attack to have happened in past 7 months. We'll try and go across to Gursimran as well to get us more details of this FIR copy that's been registered. But remember, another such attack took place on 10th of May in 2022 in Mohali, where RPG was fired at police headquarters, Intel headquarters in Punjab, and yet another attack to have happened, this time in Taran, where RPG was fired at police station near the headquarters of the police. We have Gursimran joining us. Gursimran, if you could give us more details on this FIR that's been registered in the Taran attack case. See, Samiksha, we have accessed the 3-page FIR that has been registered by the Taran police on the Sarhali RPG attack case, and this FIR clearly reads that intention to wage a war against Union of India, a conspiracy that was hatched, and that's why Section 18 of UAPA has been included in the FIR along with the Section 307, as the 9 cops, including the SHO, were inside the police station when the RPG attack was carried out by the terrorists, and also the Section 3 of the Explosive Act has also been included in the FIR. This FIR is based on the complaint that was registered by the ASI Bishan Das, who was inside the police station at the time of incident, and he has narrated that how when they heard a loud bang and when they came out towards the Sanch Kendra, they saw
smoke cloud there, and after that they saw a projectile landed on the inside the Sanch Kendra, and when they carried out searches in the nearby area, they found a rocket launcher, a pipe-type rocket launcher on the national highway that is heading from Amritsar to Bathinda. Based on that, the police has registered an FIR and investigation has begun. 7 people who have been detained yesterday afternoon, they are presently being grilled by the agencies. Their mobile phones are also being checked, and the Europe connection with gangster Sattar is the key point in this case that the police and the agencies are working upon. Yes. Gursimran, just a very small question. You know, this is the second RPG attack to have happened in 7 months. Is that goes though in the Mohali attack, which has probably emboldened the Khalistani elements, is another question that arises when we talk about this attack. As well as intelligence agencies have said that there is active involvement of the Khalistani terrorists. This is a Pakistan-Khalistan gangster plot that is being hatched, sitting from Pakistan, executed from possibly from Europe on the directions of gangster Sattar. This is what the agencies are saying, that it has been executed by Harvinder Rinda. Though there were some reports that Rinda is dead, but now the agencies are saying that Rinda is the one who is carrying out these kind of attacks, sitting from Pakistan on the directions of the ISI. All right, Gursimran, thank you for the moment. So those are the details coming in this hour. But the key question is that is this a failure of the state intel, and has the go-slow on Mohali attack emboldened the Khalistani elements? This is another question that has arisen. And is there a need for agencies to go on an overdrive to crush the anti-India elements that are very much active? For now, moving on to a quick roundup of all that's making news from across the country. YS Sharmila, leader of the YSR Telangana party, was on an indefinite fast protesting against the TRS government for not being granted permission to hold her Padayatra, was arrested from her location. Later, she was shifted to a hospital in Jubilee Hills in the city late last night. The doctors who were monitoring her health stated that YS Sharmila's blood pressure and glucose levels have fallen down to alarming levels, and thereby expressed concerns over her health. In Telangana, one person was reported injured in a blast in Bada Bazar area of Nizamabad. Fire brigade was called in following the blast, and the injured was rushed to the hospital and has been reported to be in a stable condition now. In a late night development, Republic has learned that a key meeting on Gujarat cabinet was held at 7 Lok Marg and was chaired by the Prime Minister himself. Sources even say that at least half a dozen sitting ministers are to be changed. So major reject that is expected in the Gujarat cabinet. After Meghalaya government filed a criminal defamation suit against the Trinamool Congress spokesperson Saket Gokhale for his alleged claim that a state-owned tourism firm misappropriated funds worth over 630 crore rupees, TMC has now hit out, calling it an latest attempt by the BJP and its ally NPP to intimidate Saket Gokhale and after two arrests in Gujarat. West Bengal BJP President Sukanta Majumdar's alleged that his car was attacked by miscreants who carried out TMC flags with them during the incident. Prime Minister Modi will visit Maharashtra to inaugurate Phase 1 of Samruddhi Mahamarg, covering a distance of 520 kilometers and connecting Nagpur and Shirdi. The Prime Minister will inaugurate the complete stretch from Nagpur to Shirdi, while the remaining stretch of the expressway will be finished in the next 6 months. Prime Minister Modi will formally inaugurate Goa's second international airport in Mopa during his visit to Goa. The airport, built at a cost of 2,870 crore rupees, will begin operations starting January the 5th. After Congress finalized Sukhwinder Singh Suku's name as the Chief Minister pick for Himachal Pradesh, he has now been officially made the CM designate at the Congress Legislature Party meeting and will take oath as the Chief Minister today. The CBI would question Telangana Chief Minister KCR's daughter and BRS MLC K. Kavita today in connection with the liquor gate.
National Investigation Agency team reached the Sarhali police station that was attacked by an RPG in Punjab's Taran Taran. Two officials of the NI are reviewing the spot where the grenade was launched at the police station. The NI officials also met police officials of Sarhali police station to take stock of the situation. Well, on to more breaking news coming in. This one from Jersey, where an explosion has been reported, claiming lives of 3 people. So, an explosion that rocked an apartment building in Jersey's capital. A search and rescue operation has also been launched for those unaccounted. So, there are several others who are reported to be missing after this explosion was reported, while 3 people have lost their lives. In this particular incident, in fact, the police said that the reason for this explosion is not yet known, but a blaze ignited by the explosion was initially believed to have been extinguished, with an emergency service also carrying out significant work at the scene. But those are the visuals also on your screens of the explosion that was reported in Jersey. Rescue operations are still underway to find those missing and a feared trapped in the rubble after that building collapsed in Jersey late last night. The cause of the blast, of course, remains unknown as of yet. The cause of the explosion is not known, as emergency crews say that the #1 priority is to locate anyone who is alive in the rubble. So, we have Gurpreet joining us live from the Mumbai newsroom, but Rudhi also joining us live from the Mumbai newsroom. Rudhi, if you could give us more details on what is known about this explosion to have rocked Jersey. Yes, Samisha, and massive explosion has taken place on the island of Jersey, which is in... Yes, Samisha, a massive explosion has taken place in the island of Jersey, which is in France, and 3 people have died in this explosion. Dozens have gone missing. The police was contacted immediately, and the teams rushed soon at the site and carried out their rescue operations. Although the rescue operations are still underway and the police do not know the cause of explosion yet, the investigation is underway and they are finding why this explosion took place. But Samiksha, this is a 3-story building which completely collapsed, and the police have described the site of the collapse as completely devastating, where the property has been damaged and 3 people have died in this explosion, and several have been injured. And as it is a 3-story building, it is completely collapsed, and police have described the situation as completely devastating. And 20 to 30 people have been taken to a nearby town hall for shelter, because they had to completely vacate the site because of the collapse, and they have been taken to the shelter for further help, and they will be taken care of at that particular location. All right, Rudhi, thank you so much. So, Rudhi getting us those details of the explosion that has rocked Jersey, in which 3 people lost their lives. And before we slip into a very short break, let's take a look at another video, as 69 cadets who completed their training at the Officers Training Academy at Gaya were commissioned as officers in the Indian Army following the 22nd passing out parade that was organized at the OTA campus.
कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। इसलिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, सपने आपके, लैमिनेट्स हमारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। Heavy security is being deployed to make sure that no untoward situation takes place. हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस जीते उनके लिए बहुत मायने रखेगा, क्योंकि 2018 से लेकर अब तक ये पहली कांग्रेस जीत होगी 2018 के बाद। जिस तरीके से नंबर्स एक के बाद एक और बढ़ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, हिमाचल में एक फाइट अभी भी बनी हुई है। क्लियर एंड ओपन लीड आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं। आम आदमी पार्टी इज नोवेयर इन द कॉन्टेस्ट इन गुजरात। In the recently concluded meeting, which was hosted by the Indian NSA, Mr. Ajit Doval, he'd invited NSAs from 5 Central Asian countries and they had come to New Delhi to attend. Taliban has welcomed it. And this has led to a lot of heartburn in Pakistan. But the fact of the matter is that Taliban says that, this is a welcome step by India. And Taliban says that it wants to assure the world that its land will not be used for terror activities against the neighbors. तो कांग्रेस के गढ़ में 18 कांग्रेस के जो सुपर फोर्ट्रेस में 12 में तो बीजेपी आगे है। आज जब रुझान आएंगे और नतीजों में जब तब्दील होंगे तब तक यही चलता रहेगा। तो बहुत ही नेक टू नेक फाइट है। गुजरात में इतिहास रचा जा रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता देश के लिए काम किया, प्रदेश के लिए काम किया, उसका आशीर्वाद है। कुल मिलाकर यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दौर से ही जो है बढ़त बनाई है। Heavy security is being deployed to make sure that no untoward situation takes place. गुजरात में 141 सीटें मिली थी कांग्रेस को। उसके बाद आज 45 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। बिल्कुल 149 ये इतिहास बनने वाली बात है। हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर 20,425 वोट से जीत गए। कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब हुई है, लेकिन साथ साथ मैं एक बात भी कहूंगा, जिस तरीके से गुजरात के अंदर And round up from across the globe, Chinese President Xi Jinping during the meeting in Riyadh vowed to import more oil and natural gas from energy-rich Gulf Arab states while not interfering in their affairs. Japanese Liberal Democratic Party lawmaker met with Taiwanese President in Taipei, pledging to help his country and Taiwan deepen and help the two countries in deepening relations with one another. Meanwhile, hundreds of protesters marched in Manila demonstrating against rising number of extrajudicial killings and other injustices under the administration of the Philippine president. A very short break, lots coming up on the other side as Liquorgate providence, KCR's daughter to be grilled by CBI in Hyderabad. Sidelined by the High Command, Pratibha Singh says she accepts the decision even as supporters stage protest. गुजरात में 141 सीटें मिली थी कांग्रेस को। उसके बाद आज 45 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। बिल्कुल 149 ये इतिहास बनने वाली बात है। हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर 20,425 वोट से जीत गए। कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब हुई है, लेकिन साथ साथ मैं एक बात भी कहूंगा, जिस तरीके से गुजरात के अंदर चुनाव लड़ा गया उससे लोकतंत्र कमजोर होता है। हम हारे,
security is being deployed to make sure that no untoward situation take place. हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस जीते उनके लिए बहुत मायने रखेगा, क्योंकि 2018 से लेकर अब तक ये पहली कांग्रेस जीत होगी 2018 के बाद। जिस तरीके से नंबर्स एक के बाद एक और बढ़ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, हिमाचल में एक फाइट अभी भी बनी हुई है। क्लियर एंड ओपन लीड आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं। आम आदमी पार्टी इज नोवेयर इन द कॉन्टेस्ट इन गुजरात। In the recently concluded meeting, which was hosted by the Indian NSA, Mr. Ajit Doval, he had invited NSAs from 5 Central Asian countries and they had come to New Delhi to attend. Taliban has welcomed it. And this has led to a lot of heartburn in Pakistan. But the fact of the matter is that Taliban says that, this is a welcome step by India. And Taliban says that it wants to assure the world that its land will not be used for terror activities against the neighbors. तो कांग्रेस के गढ़ में 18 कांग्रेस के जो सुपर फोर्ट्रेस में 12 में तो बीजेपी आगे है। आज जब रुझान आएंगे और नतीजों में जब तब्दील होंगे तब तक यही चलता रहेगा। तो बहुत ही नेक टू नेक फाइट है। गुजरात में इतिहास रचा जा रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता देश के लिए काम किया, प्रदेश के लिए काम किया, उसका आशीर्वाद है। तो कुल मिलाकर यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दौर से ही जो है बढ़त बनाई है। Heavy security is being deployed to make sure that no untoward situation take place. गुजरात में 141 सीटें मिली थी कांग्रेस को। उसके बाद आज 45 साल का रिकॉर्ड। Thanks for tuning in this Sunday morning. We are live and breaking. I'm Samiksha Srivastava. We have a lot lined up for you with the next half an hour, starting with the top headlines. Liquorgate probe widens KCR's daughter to be grilled by the CBI in Hyderabad. On fast unto death, YSRTP chief Sharmila arrested by KCR cops moved to hospital as health worsens. From Maharashtra to Goa, Prime Minister Modi set to inaugurate a plethora of projects. Dream project of Maharashtra Deputy Chief Minister, the 701-kilometer expressway to be inaugurated today. Chosen by Congress as Himachal CM Sukhwinder Sukhu set to take oath today along with Mukesh Agnihotri. Sidelined by the High Command, but Pratibha Singh says she accepts the decision even as supporters staged protest. Straight up, starting with breaking news coming in from Maharashtra, where ink was thrown at Maharashtra Minister Chandrakant Patil over his remarks on Ambedkar and Mahatma Phule. Following the incident, the Pimpri-Chinchwad police has suspended its 7 police constables and 3 officers in connection with the incident that was reported yesterday. So the update coming in that the police officers, 7 of them have been suspended by the police, and this after ink was thrown at Maharashtra Minister Chandrakant Patil on Saturday while he was leaving a party leader's residence in Pimpri-Chinchwad area of Maharashtra. We have a reaction coming in from BJP's Ram Kadam. Let's listen in. महाराष्ट्र के दिग्गज नेता तथा वर्तमान मंत्री
आदरणीय चंद्रकांत पाटिल जी का व्यक्तित्व राष्ट्र सेवा के लिए त्यागपूर्ण और समर्पित रहा। राष्ट्र सेवा की उनकी तपस्या अपने आप में बहुत बड़ी है। उनके वक्तव्य को तोड़ मरोड़ करके लोगों के बीच में प्रस्तुत कर लोगों को गुमराह करने का काम महाराष्ट्र का विपक्ष दल कर रहा है। अब उन्होंने राजनीति की सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया, उन पर स्याही फेंक रहे हो। क्या हो क्या गया? यदि आपको कुछ विचार रखने हैं तो उसका तरीका होता है। आपके वसूली के गोरख धंधे बंद हो गए, कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन बंद हुआ, तबादलों के पैसे बंद हो गए। क्या इन सारी चीजों का फ्रस्ट्रेशन इस प्रकार से आप स्याही फेंक करके निकालोगे? महाराष्ट्र का विपक्ष कान खोल करके सुन ले, आपने ये षड्यंत्र के तहत किया है। जिन्होंने स्याही फेंकी उन लोगों के घर में घुसकर उन्हीं की भाषा में जवाब देना हर भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता जानता है। हम कानून और सुव्यवस्था का सम्मान करते हैं, उसका कतई यह मतलब नहीं कि विपक्ष हमारा संयम देखे। हाथ जोड़ करके विपक्ष के नेताओं को चंद्रकांत दादाजी की माफी मांगनी होगी। And Alisha is also joining us for more on that. Alisha, any update on this? Have the accused been arrested who carried out this attack on Chandrakant Patil? Well, Savicha, we know that who throw in catch was apprehended at that by the police have been booked for attempt to murder against people for throwing ink at BJP leader and Maharashtra Chandrakant Patil. So this is of yesterday, where Chandrakant Patil was leaving a party leader house, and there was a point when some people who were also raising slogans against him, and one person who thrown ink at Chandrakant Patil, he was apprehended, and not only that, the people have been identified from some political party, and the interrogation is also underway. All right, Alisha, thank you for those updates. So that's the latest coming in on the ink attack on Maharashtra minister. But moving on to another big breaking update coming in this hour, Prime Minister's touchdown in Nagpur. In fact, he's landed just a short while back to inaugurate several development works in the city. So the first visuals coming in this hour of Prime Minister's touchdown in Nagpur. We have Alisha joining us for more on that. Alisha, if you can take us through those projects that are all set to be inaugurated by the Prime Minister today. All right, we'll connect with Alisha again, but those are the first visuals coming in which you can see the Prime Minister Eknath Shinde, Deputy Chief Minister of Maharashtra Devendra Fadnavis, who are there in fact, you have Nitin Gadkari as well, who are there as Prime Minister has landed in Nagpur to inaugurate several development projects, which includes the Samruddhi Mahamarg or the Nagpur-Mumbai Expressway, which is a dream project of the Deputy Chief Minister. Alisha with us for more on that. Alisha, give us more details on the development projects which will be inaugurated today. Samruddhi Mahamarg is open. All right, we seem to have lost that connection with Alisha, but those are the first visuals coming in this hour of Prime Minister's touchdown in Nagpur. We can see Devendra Fadnavis, Eknath Shinde and Nitin Gadkari as well, who are present as Prime Minister arrived in Nagpur to inaugurate the Samruddhi Mahamarg or the Nagpur-Mumbai Expressway, which is the dream project of Devendra Fadnavis. In fact, the AIIMS Nagpur will also be inaugurated, which will be dedicated to the nation. And other than that, the Nagpur-Bilaspur Vande Bharat Expressway will also be launched by the Prime Minister. So, host of development projects that will be launched today on Prime Minister's visit to Maharashtra's Nagpur. Alisha, back with us. Alisha, give us more details on the project.
Well, Samiksha, we know that Prime Minister Narendra Modi, who already landed on Nagpur, is going to inaugurate a phase 1 of Hindu Hriday Samrat Bharat Thackeray Maharashtra Samruddhi Mahamarg, which connecting Nagpur and Shirdi. It is something a dream project, and here today, where the Prime Minister has already landed, is going to lay foundation stone and dedicate to the nation a project which worth rupees 75,000 crore in Maharashtra. Talking about Samruddhi Mahamarg or Nagpur Mumbai Super Communication Express is a major step towards releasing a Prime Minister's vision of improved connectivity and infrastructure across the country. Not only Prime Minister's vision, but this is something, a project which was really a dream project for Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, and he was looking for this project back before 2019, but it was stalled when the Mahavikas Aghadi came to the power. But again, when now we know that Devendra Fadnavis and whereas Eknath Shinde, who is the Chief Minister of Maharashtra, has given a go-ahead with the phase 1, and now today, where Prime Minister has already landed, if I talk about the program that is being scheduled of Prime Minister, when at 9:30 is going to flying off Vande Mataram Express in Nagpur railway station. By around 9:45, when he's going to visit exhibition on Nagpur Metro Rail project. Around 10 a.m., where the metro ride from Freedom Park to Kopli Metro Station, and later the dedication of Nagpur Metro Phase 1 to nation and to lay foundation stone of Phase 2 Metro, which is at Kopli Metro Station. And by around 11 a.m., where there is the inauguration of Samruddhi Mahamarg, which is at Workman Toll Plaza. So this is something we can see the schedule of Prime Minister Narendra Modi, and finally, when today the phase 1 of Samruddhi Mahamarg is going to be dedicated to Maharashtra. All right, Alisha, thank you for those details. So, Alisha, they're getting us the details of Prime Minister's itinerary as well as details of this project, which amounts to crores of rupees. In fact, talking more about this project, for which the Prime Minister will lay the foundation stone and inaugurate projects amounting to 75,000 crore rupees. According to the Prime Minister's office, Prime Minister will also flag the Vande Bharat Expressway connecting Bilaspur and Nagpur and inaugurate AIIMS Nagpur as well. Here's a detailed report on the projects to be inaugurated today. December comes as a special day for Maharashtra, as Prime Minister Modi will lay foundation stone and dedicate projects worth rupees 75,000 crore. The projects majorly include Vande Bharat Express, Nagpur Metro, AIIMS and the spectacular Samruddhi Mahamarg between Nagpur and Shirdi. At 9:30 a.m. this morning, Prime Minister Modi will reach Nagpur railway station, where Prime Minister will flag off the Vande Bharat Express. At around 10 a.m., he will take a metro ride and dedicate Nagpur Metro Phase 1 to the nation. He will also lay the foundation stone of Nagpur Metro Phase 2. At around 10:45 a.m., Prime Minister will inaugurate Phase 1 of Samruddhi Mahamarg. Known as the dream project of the Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, Samruddhi Mahamarg Expressway is a step towards the mega boost for connectivity. प्रधानमंत्री जी का नागपुर का जो दौरा है, महाराष्ट्र को बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग की एक बहुत बड़ी भेंट सौगात इस दौरे से मिलने वाली है। इससे महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और नॉर्थ महाराष्ट्र जैसे इलाकों का भाग्य बदलने वाला है। साथ साथ कई और कार्यक्रम हैं, लेकिन दो बड़ी सौगातें नागपुर शहर को हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है। मेट्रो का फेज 2 और नाग नदी रिजुविनेशन का प्रोजेक्ट, जो 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसको जायका फंड कर रहा है। इसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि नागपुर के विकास में बहुत बड़ी गति मिलने वाली है। तो प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र को और नागपुर को बहुत बड़ी सौगात दी है। Set to be a game changer in providing major boost to the economic development of the state, the expressway connects Nagpur and Shirdi. The 701 kilometer long expressway project is being built at a cost of 55,000 and is one of India's longest expressways.
Samruddhi Mahamarg will connect to the Delhi-Mumbai Expressway, Jawaharlal Nehru Port Trust and tourist locations like Ajanta Ellora Caves, Shirdi, Verul, Lunar, etc. From infrastructure to health, Prime Minister will dedicate AIIMS Nagpur to the nation at around 11:15 am. Later in Nagpur, Prime Minister will lay the foundation stone and dedicate national rail projects worth more than 1,500 crores. In total, rupees 75,000 crore worth of projects are in the list of Prime Minister today as he sets for Maharashtra. In this entire inauguration where Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde and Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis is also going to be present in the same event. The Samruddhi Mahamarg or Nagpur-Mumbai Super Communication Expressway, officially known as Hindu Hriday Samrat Babasaheb Thackeray Maharashtra Samruddhi Mahamarg, is under construction, 6-lane wide, 701 km long access control expressway in Maharashtra. It will be amongst the country's longest greenfield road projects, which will connect the two capital city of the state, its capital Mumbai, and its third largest and vice capital city Nagpur. The project has been led by the state infrastructure arm Maharashtra State Road Development Corporation and is designed under the engineering, procurement and construction model. So this is a dream project of Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, which was brought when he was the Chief Minister back before 2019. But it was some of the either way was laid down, but later now when Devendra Fadnavis is now the Deputy Chief Minister of Maharashtra, the project has completely started and now the first phase is going to be inaugurated by where Prime Minister Narendra Modi is going to inaugurate. माननीय प्रधानमंत्री जी, Bureau Report, Republic TV. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Very short break. Lots coming up on the other side. YSRTP chief Sharmila arrested by KCR cops, then moved to hospital as health worsens. Chosen by Congress as Himachal Congress Sukhwinder Sukhu set to take oath today along with Mukesh Agnihotri. तो कांग्रेस के गढ़ में 18 कांग्रेस के जो सुपर फोर्ट्रेस में 12 में तो बीजेपी आगे है. आज जब रुझान आएंगे और नतीजों में जब तब्दील होंगे तब तक यही चलता रहेगा. तो बहुत ही नेक टू नेक फाइट है. गुजरात में इतिहास रचा जा रहा है. मोदी जी की लोकप्रियता देश के लिए काम किया, प्रदेश के लिए काम किया, उसका आशीर्वाद है. तो कुल मिलाकर यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दौर से ही जो है बढ़त बनाई है. गुजरात में 141 सीटें मिली थी कांग्रेस को. उसके बाद आज 45 साल का रिकॉर्ड टूटेगा. बिल्कुल 149. ये इतिहास बनने वाली बात है. हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर 20,425 वोट से जीत गए. कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब हुई है, लेकिन साथ साथ मैं एक बात भी कहूंगा, जिस तरीके से गुजरात के अंदर चुनाव लड़ा गया उससे लोकतंत्र कमजोर होता है. हम हारे. Heavy security is being deployed to make sure that no untoward situation takes place. हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस जीते उनके लिए बहुत मायने रखेगा, क्योंकि 2018 से लेकर अब तक ये पहली कांग्रेस जीत होगी 2018 के बाद. जिस तरीके से नंबर्स एक के बाद एक और बढ़ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, हिमाचल में एक फाइट अभी भी बनी हुई है. क्लियर एंड ओपन लीड. आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं. आम आदमी पार्टी इज नोवेयर इन द कॉन्टेस्ट इन गुजरात. In the recently concluded meeting, which was hosted by the Indian NSA, Mr. Ajit Doval, he'd invited NSAs from 5 Central Asian countries and they had come to New Delhi to attend. Taliban has welcomed it. And this has led to a lot of heartburn in Pakistan.
But the fact of the matter is that Taliban says that, this is a welcome step by India. And Taliban says that it wants to assure the world that its land will not be used for terror activities against the neighbors. तो कांग्रेस के गढ़ में 18 कांग्रेस के जो सुपर फोर्ट्रेस में 12 में तो बीजेपी आगे है। आज जब रुझान आएंगे और नतीजों में जब तब्दील होंगे तब तक यही चलता रहेगा। तो बहुत ही नेक टू नेक फाइट है। गुजरात में इतिहास रचा जा रहा है। मोदी जी की लोक Thanks for staying tuned. Getting in inside details of the probe into Taran RPG attack case, Republic has learned that 400 mobile numbers under Punjab police scanner is what we are given to understand. So 400 mobile phone numbers which are under the scanner of the Punjab police. In fact, more details coming in that these mobiles were active near the police station 1 hour before. And after the attack, the timing and movement of these numbers post the attack is also being tracked by the police. Furthermore, data generated from the mobile towers in 3 kilometers area near the police station is also being scanned. So, police there investigating the Taran attack which happened at the Punjab police headquarters. The Punjab police is on alert. Details coming in of how the mobile phone numbers were pretty much active 1 hour before the attack was reported. Remember, this is the second such RPG attack to have happened in the last 7 months. Gursimran joining us for more on that. Gursimran, take us through the inside details that you've got on the probe into the attack. So, see, Samiksha, it was yesterday when this attack took place. Soon after that, the Punjab police has requested the mobile companies for the dump call data, that is the nearby tower data, and around 15 towers are present in the 3 kilometers diameter of this area. That are on the side of the border as well as on the Bathinda and Amritsar side. And from these 15 towers, they have got the dump call data of around 400 mobile numbers that were active in the area. Since this is a highway, so not all 400 are the suspects, but police is saying that they are looking into the call details of each and every mobile data that has been recovered. All 400 mobile data will be thoroughly analyzed, and their movement pattern will also be tracked, whether they were very near to the police station prior to the attack and where they went after the attack. This is what they are being analyzing, and these 400 call data, they are presently being analyzed. DGP Punjab Gaurav Yadav has been briefed about the development. Even the details of 400 mobile phones have already been shared with the intelligence chief of Punjab as well as the DGP Punjab, and now the Punjab and especially the Taran police along with the Amritsar and Bathinda police, they are now looking into it. All right, Gursimran, thank you for those details. So, inside details coming in on the probe into the attack, where we understand that the 400 mobile numbers are being scanned by the Punjab police. In fact, not just this, the police is also probing those mobile numbers which were pretty much active 1 hour before the attack happened at the police headquarters, which brings us to the question that whether the warning by the central agency was ignored by the state, and also why is the state police is failing to rein in the Khalistani elements in the state of Punjab. YSRTP chief YS Sharmila was blocked and arrested by KCR cops yet again. YS Sharmila, who was on an indefinite fast protesting against TRS for not being able granted permission to hold her Padyatra, was moved to a private hospital after her arrest around midnight. Doctors monitoring her health expressed concern, stating that YS Sharmila's health is worsening rapidly. Earlier on December 9, Telangana police denied permission to Sharmila for a Padyatra, following which she staged a demonstration in Hyderabad. And the big question is, why is the KCR government rattled by YS Sharmila? Bureau Report, Republic TV.
And getting in more news breaks right now, a big statement coming in by the External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, where he said, and what is a whale attack on China, saying that Pakistan believes in dealing with neighbor that is compatible with cross-border terrorism. So those were the remarks that were made by Dr. S. Jaishankar. Let's listen in quickly to that soundbite of the External Affairs Minister. SARC is currently not active because one member of the SARC believes that dealing with other neighbors is compatible with the practice of cross-border terrorism. Now, we have reached a stage today where we don't think the two can happen side by side. So, और वो भी नई जो एनसीटी टेक्निक आई है उस टेक्निक के जरिए तो पर All right, so these are the first visuals coming in of Prime Minister in Nagpur, and with the Prime Minister, you can see Devendra Fadnavis, Eknath Shinde, Prime Minister all set to inaugurate projects which also includes the Samruddhi Mahamarg or the Nagpur-Mumbai Expressway, which is in fact the dream project of Devendra Fadnavis, the Deputy Chief Minister of Maharashtra. In fact, talking a little more about the Samruddhi Mahamarg project, which is 701 kilometer long expressway that connects Nagpur and Shirdi. The project in fact costs 55 crore rupees and is also one of India's longest expressway that will pass through 10 districts of Maharashtra. So the Prime Minister there inspecting and going through those details of the projects which are set to be launched by the Prime Minister while he is on a visit to Maharashtra. The visuals there coming in live of Prime Minister there accompanied by Eknath Shinde and Devendra Fadnavis as he's all set to inaugurate several projects, which includes one of those key projects, which is the Samruddhi Mahamarg project. We also have a senior executive editor, Abhishek Kapoor, joining us. Abhishek, if you could once again give us more details of this project which will be launched today, the Samruddhi Mahamarg project, which amounts to over 55 crore rupees. 55,000 crore rupees, Samiksha, and 701 kilometers. Though today, of course, the Prime Minister is inaugurating or dedicating to the nation phase 1, which is I believe 520 kilometers. है किस तरह से ये इतिहास रचा गया है और एक के बाद एक जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरह से एक बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन रेलवे की यात्री सुविधाओं में, गति में, सुरक्षा में, संरक्षा में, उसमें वंदे भारत एक अपने आप में बड़ा उदाहरण है और छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नागपुर से बिलासपुर को जोड़ेगी, महज 5 घंटे 20 मिनट में पहुंचाएगी। तमाम सुविधाओं से लैस है ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए उनके साथ में तमाम गणमान्य नेता जो हैं वो मौजूद हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल और तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो भी वहां मौजूद हैं। ये ट्रेन अब अपने गंतव्य के लिए चल पड़ी है। प्रधानमंत्री ने इसको हरी झंडी दिखाई है। तो एक और इतिहास रचा गया है इस वक्त नागपुर में। हाथ हिलाकर यात्रियों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री, जो यात्री हैं वो भी बेहद उत्साहित हैं इस पहली बार इस ट्रेन में सफर करके, यात्रा करके। तो वंदे भारत, छठी वंदे भारत की सौगात देश को मिली है। नागपुर से बिलासपुर जाएगी वाया रायपुर और महज 5 घंटे 20 मिनट में ये यात्रा तय होगी। जो 7 घंटे 8 घंटे की पहले यात्रा होती थी वो इस शानदार सुविधाजनक ट्रेन में महज 5 घंटे 20 मिनट में तय हो सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो यात्री बैठे हैं वो हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण क्षण है ये इस लिहाज से भी कि भारतीय रेलवे में जो आमूल-चूल परिवर्तन की शुरुआत की बात कही गई थी वो अब उसका मूर्त रूप में वो दिखाई पड़ने लगी है और एक के बाद एक वंदे भारत ट्रेनें हम देख रहे हैं कि लगभग हर महीने किसी न किसी स्थान पर वंदे भारत ट्रेन को चलाया जा रहा है। और अगले 3 वर्षों का जो लक्ष्य रखा गया है
वो 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी पूरे देश भर में। 27 से अधिक रूट्स पर इनको चलाया जाएगा और खासतौर पर जो ट्रेन की सुविधाओं को बढ़ाने की बात कही गई है वो बहुत उच्चतम स्तर पर ले जाया जा रहा है। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक इसकी गति हो सकती है। तो इतिहास रचा गया है। छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर के रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है प्रधानमंत्री ने, और यात्री बेहद उत्साहित हैं। ये इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और उसके साक्षी प्रधानमंत्री स्वयं बन रहे हैं। इससे बड़ा और अविस्मरणीय क्षण किसी के जीवन में क्या कुछ हो सकता है ये समझा जा सकता है। तो इस इतिहास के साक्षी बने हैं वो सब यात्री जो इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ तमाम लोग, देश इसका साक्षी बन रहा है। तो यात्रियों की सुविधा के लिए एक और नया मील का पत्थर, छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो नागपुर से बिलासपुर जाएगी वाया रायपुर, वो गुजर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनका स्वागत करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए, उनका हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए। एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को रेलवे से जुड़ी हुई एक तस्वीर भी यहाँ भेंट की जा रही है, जिसमें रेलवे की जो विकास सुविधाएं हैं उसका खाका पेश किया जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण है ये क्षण रेलवे के कायाकल्प के लिए। हमारे संवाददाता जिस तरह से बता रहे थे कि 2014 में एक महीने में महज 12 से 13 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया जाता था और अब एक सप्ताह में 40 से 45 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया जा रहा है। पूरे देश में जो हेरिटेज रूट्स हैं उनको छोड़कर लगभग सभी जगह पर जो आवागमन के मार्ग हैं, रेल मार्ग हैं, उनका दोहरीकरण किया गया है। जो विद्युतीकरण है वो भी लगभग पूर्ण किया गया है। बहुत तेजी से विद्युतीकरण किया जा रहा है। तो इस तरह से जो ट्रेनों की गति है वो बढ़ी है और अब सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स का दौर आ गया है और भारत एक के बाद एक नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स का साक्षी बन रहा है। यह छठी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस जो अपने आप में तमाम खूबियों को समेटे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर के स्टेशन से उसको रवाना किया। बिलासपुर तक जाती है ये ट्रेन, जाएगी रायपुर के रास्ते। 5 घंटे 20 मिनट का इसका सफर रहेगा। तो निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है ये क्षण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर जो नागपुर में मौजूद है। आज तमाम सारी जो रेलवे से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं उसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। जो एक लोकोमोटिव शेड है अजनी में उसका उद्घाटन करेंगे। उसके साथ ही साथ जो मेट्रो ट्रेन है नागपुर में उसके जो पहले चरण है उसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और दूसरे चरण का शिलान्यास करेंगे। तो जो शहरों के भीतर की जो आवागमन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, उस सुविधा में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आएगी। मेट्रो ट्रेन्स लेकर आई है दरअसल मेट्रो ट्रेन्स और वो शहर दर शहर उसका विस्तार हो रहा है। नागपुर अब फिर उसका साक्षी बन रहा है। तो नागपुर का जो रेलवे स्टेशन है उसको भी शानदार तरीके से डेवलप किया जाएगा। तमाम अत्याधुनिक वर्ल्ड क्लास सुविधाएं जो है वो यहां पर लेकर आई जाएंगी। तो न सिर्फ यात्री सुविधाओं में बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए भी लगातार जो सरकार है वो काम कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। आप देख रहे हैं जो ये तस्वीरें हैं अब से थोड़ी देर पहले की हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ये छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। जैसा कि बताया आपको कि अगले 3 वर्षों में जो योजना है उसके मुताबिक 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चल सकेंगी। 200 जोड़ी जिसको कहते हैं। तो 400 नई रैक्स होंगी। 27 नए रूट्स पर इनको चलाया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि जो वर्तमान में जो शताब्दी ट्रेनें हैं उनको रिप्लेस करेंगी तमाम स्थानों पर, तमाम नई जगहों पर इनको चलाया जाएगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का नागपुर दौरा और यहां प्रधानमंत्री तमाम जो नई परियोजनाएं हैं
उनका शिलान्यास करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे। करीब करीब नागपुर में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री आज शिलान्यास करेंगे और लोकार्पण करेंगे। नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग का पहला चरण भी आज प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये भी बेहद महत्वपूर्ण है, न सिर्फ यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा के लिए बल्कि गति जो है वो भी बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन होगा नागपुर में। नागपुर और बिलासपुर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री ने अभी। तो नागपुर को विकास परियोजनाओं की सौगात मिल रही है और बेहद महत्वपूर्ण है ये इस लिहाज से भी। प्रधानमंत्री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ और नाग नदी प्रदूषण उपशमन परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत प्रदूषण उपशमन परियोजना 1,925 करोड़ रुपए से अधिक की लागत। All right, viewers, so getting those visuals first on Republic, the Prime Minister flagging off Vande Bharat Express. And let's go straight to our Senior Executive Editor, Abhishek Kapoor. Abhishek, a very good morning to you this Sunday. We are seeing visuals on the screen and all of you are seeing visuals of the Prime Minister there. He has reached Nagpur railway station and he will also take a metro ride from Freedom Park metro station to the Khapri metro station, Abhishek. Well, yes, so this is phase 2 of the Nagpur metro, Shivangi, and Prime Minister is going to dedicate to the people of Maharashtra projects worth about 75,000 crore rupees, and this should be a significant development push. Apart from metro, of course, he's going to inaugurate the phase 1 of the Bala Saheb Thackeray, completely named Hindu Hriday Samrat Bala Saheb Thackeray Maharashtra Samruddhi Mahamarg, which is connecting Nagpur and Shirdi. 520 kilometers being dedicated today, which is phase 1. When it's completed, it will be 700 plus kilometers, affecting or directly connecting 14 districts in the state. And that's, as of now, I believe once completed, would be the longest, one of the longest expressways in the country till the time that the Delhi-Mumbai expressway really takes shape. Apart from that, he's going to dedicate AIIMS Nagpur to the people and then flag off the Vande Bharat Express connecting Nagpur and Bilaspur. These are some of the projects. Apart from, of course, these are being inaugurated, and then there is foundation stone laying for many projects, including the redevelopment of the Nagpur railway station, the nearby Ajni railway station, and then laying foundation stone for the National Institute of One Health. That's also in Nagpur. And then another project connected with the pollution abatement of Nag River, around which Nagpur is settled. So all these important projects. There are many more. For example, Central Institute of Petrochemicals and Engineering and Technology, Chandrapur, the Center for Research, Management and Control of Hemoglobinopathies, again in Chandrapur. And these are all the projects where he would be, laying foundation stone or dedicating to the people today in Nagpur. And then, of course, he travels to Goa, and tomorrow he inaugurates the redone and freshly done, in fact, the Mopa International Airport. So all these things there, apart from, of course, Prime Minister addressing the valedictory function of the 9th World Ayurveda Congress is going to happen in Goa itself. So all these events, programs planned, the Prime Minister spending about a day and a half in Maharashtra between Nagpur and Goa. There would be some element of, from the opposition side, perhaps an element of politicking, given the fact that the longest expressway in Maharashtra is named after Bala Saheb Thackeray. Remember, the entire politics of Maharashtra have been centered around the issue of claiming or reclaiming the legacy of Bala Saheb Thackeray over the last 6 months or a year. And in that sense, I think the Shiv Sena BJP government or the Shinde Shiv Sena BJP government making a statement of sorts with that. Right. Well, thank you so much, Abhishek Kapoor, Senior Executive Editor, for joining us there. So this is a Prime Minister right now in Maharashtra, where he will unveil multiple projects
projects worth 75,000 crores in Maharashtra. Today we'll track every development on Republic TV. Breaking updates coming in, more details coming in the Taran RPG attack case. Police sources have informed that 3 vehicles we know that these 3 vehicles, including 2 bikes and a car, have been recovered. And these vehicles are suspected to be used in the attack. Furthermore, police said to grill the gangsters in Punjab jail. These were said to be in touch with the gangster Satpreet Satta, an associate of Harvinder Renda. Okay, some more details, inside details coming in the Taran case right now, the attack case. The police sources have said 400 mobile. In fact, these details that we can tell you on your screen, viewers, is that the Punjab continues to be on high alert as well. And police sources have informed that 3 vehicles, including 2 bikes and a car, have been recovered, and these vehicles were suspected to be used in the attack. The police will be grilling the gangsters in Punjab jails, and these gangsters are said to be in touch with gangster Satpreet Satta, who is an associate of Harvinder Renda. So these details coming in right now. Let's go straight to Gursimran. Gursimran, our viewers had watched this CCTV footage as well, which you can see on the left-hand side of the screen. The CCTV footage captures the moment of the Taran police station terror attack. The NIA is also on spot right now. Take us through these details. 400 mobile numbers are being investigated also as well, Gursimran. See, the details that we are picking up from the sources in the Punjab police, that 3 vehicles have been recovered by the Punjab police. That includes 2 bikes and a car. And the police suspects that these vehicles were used to carry out the RPG attack on the Sarhali police station in the Taran late day before yesterday it happened. On the intervening night of 9th and 10th of December, the attack that happened. And now the police is looking into the details of these vehicles so that it can be found out that why they were left at this place abandoned, and were they the same that were used to carry out the attack, the RPG attack. And more details that are coming to us via the Punjab police sources. They are saying that the gangsters who are in the jails of Punjab, they will be grilled, and it is highly possible that some of the gangsters who are in the jails of Punjab, they will be taken on the production warrant by the Taran police in connection with the RPG attack case. These gangsters, we are told, are said to be in contact with Europe-based gangsters Satpreet Satta, who is a close associate of Harvinder Renda, Pakistani terrorist, a Khalistani terrorist who is getting support of ISI to carry out acts of terror in India. And also one more name that is emerging is of Deepak Jhajjar. He is the main accused of the Mohali RPG attack case and is still at large. His role is very crucial in this case, as the police is saying that they are probing his role also in the case. Right, Gursimran. So Gursimran is getting us all the details right now where these 400 mobile numbers were also active. Very, very important details coming in, viewers, right now. The NIA officials are at the spot as well. Gursimran, take us through more details, because we have learned a couple of more details as investigation continues. Republic TV has also learned that the RPG launcher which was used for carrying out the attacks was a 125 mm Russia-made rocket-propelled grenade launcher, Gursimran. Let's go to Dipesh. I'll go back to Gursimran. Dipesh is joining us live right now from Taran. Very good morning to you, Dipesh. Many details coming in right now on this RPG attack which had taken place in Taran. What are the latest details which we are picking up? You're on spot right now. What is happening on ground? देखिए, अभी जांच पड़ताल जो है वो लगातार तेज हो चुकी है और जांच पड़ताल में अभी तक ये बात निकलकर सामने आई है कि जब इस थाने पर अटैक हुआ था उस दौरान जो यहाँ पर 400 से ज्यादा मोबाइल एक्टिव थे, उन 400 मोबाइल्स की डिटेल्स अब खंगाली जा रही है कि उसके बाद उनका मूवमेंट आखिर क्या था, वो कितनी देर सक्रिय रहे, कहां से कहां तक उनका मूवमेंट रहा, उसे ट्रैक किया जा रहा है। इससे इतर जो वाहन है उन्हें भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है 2 बाइक और 1 कार जो है वो बरामद की गई है। अब उसका एंगल तलाशा जा रहा है कि क्या
जब ये आरपीजी अटैक हुआ उस दौरान ये बाइक उन हमलावरों के पास थी जिन्होंने रॉकेट लॉन्चर से इस थाने पर अटैक किया था। ये तमाम चीजें अब जांच पड़ताल के दायरे में लाई गई है और यही कारण है कि अब इस एंगल से भी जांच पड़ताल जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। अभी सुबह से अब लगातार एक बार फिर जो अधिकारी हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ अधिकारी अभी थाने पर पहुंचे हैं और वे यहां पर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अभी जांच पड़ताल में और क्या चीजें यहां से निकलकर सामने आती है, क्योंकि जब आरपीजी अटैक हुआ उस दौरान जो पुलिस जवान है वो यहां पर मौजूद थे, उनसे भी बातचीत की जा रही है, उनसे भी समझा जा रहा है कि आखिर क्या हुआ था उस दौरान, कैसा जब ये अटैक हुआ था उसके बाद की किस तरह की परिस्थितियां थी, वो तमाम चीजें जांच में कहीं ना कहीं अब इन्वॉल्व की जा रही है। उससे इतर जो आसपास के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी जो यहाँ पर रहते हैं कि आखिर उन्होंने कहीं कुछ देखा तो नहीं है। आसपास अगर कोई सीसीटीवी लगे हुए हैं तो उन्हें भी खंगाला जाएगा। उनके आधार पर भी जो जांच पड़ताल है वो कहीं ना कहीं अब तेज होती हुई नजर आने वाली है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह निकलकर सामने आ रही है कि उस दौरान जब ये अटैक हुआ था तब यहाँ पर जितने मोबाइल एक्टिव थे इस पूरे थाना परिसर के आसपास जो 3 किलोमीटर का जो प्रेमाइसेस है उस प्रेमाइसेस में जो मोबाइल एक्टिव थे उनकी जो संख्या है वो लगभग 400 नजर आ रही है। उन 400 मोबाइल के जो लोकेशंस हैं वो देखे जा रहे हैं, ट्रैक किया जा रहा है उन मोबाइल्स की लोकेशन को, ताकि स्पष्ट हो सके कि आखिर उनमें से वो लोग कौन हैं जिन्होंने इस थाने पर अटैक किया था। जी Right, Dipesh, thank you so much, Dipesh. Dipesh is getting us a live report from Taran, where we're getting inside details in the Taran RPG attack case. Police sources have told us 3 vehicles, including 2 bikes and a car, have been recovered. Now, these vehicles are suspected to be used in the attack, plus 400, I repeat, 400 plus mobile numbers are being investigated as well. They're under the scanner. Now, let's have a look at this report filed by our bureau. Not active because one member of the SARC believes that dealing with other neighbors is compatible with the practice of cross-border terrorism. Now we have reached a stage today where we don't think the two can happen side by side. So if you ask me today what is holding up SARC, because do look at this period. If you look at India, Bangladesh, India, Nepal, India, Bhutan, India, Maldives, India, Sri Lanka, India, Myanmar, even India, Mauritius, India, Seychelles, each one of these relationships has grown in the last 5 years. The trade has grown, investments have grown, cooperation has grown. So we want regionalism. We see benefits in it. We think everybody would take. But the problem we faced when it came to SARC was, how do you deal with somebody in the room who actually is sitting with you on the table by the day and actually sending people over with guns at night? And that is a problem. Coming up on the other side, we continue to be live and breaking this Sunday morning, viewers. Coming up, Liquor Gate pro-Biden, KCR's daughter to be grilled by CBI in Hyderabad. Plus, chosen by Congress as the CM face, Sukhvinder Sukhu is now set to take oath today along with Mukesh Agnihotri. कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। इसलिए ग्रीन लैम्प लैमिनेट्स, सपने आपके, लैमिनेट्स हमारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। A movement transforming millions of lives in rural Maharashtra. An initiative empowering communities to transform their own lives. A journey that is changing the face of rural India. A holistic area where we want to make impact across everything that affects people's life, with the holy grail being livelihood to sort of empower them. Catch the stories of aspiration on Swadesh Foundation's Swa Se Bane Desh this weekend only on Republic TV. One man was killed after a massive fire ravaged a shopping mall in Moscow's northwestern outskirts on Friday. Chennai cyclone Mandus had made a landfall around early in the morning today. A lot of damage has happened. 1 or 2 building had collapsed. Poles and trees that is also uprooted and fallen down. 8-year-old boy Tanmay has now passed away. He was stuck at 400 feet deep borewell in the Manvi village of Madhya Pradesh.
तो कांग्रेस के गढ़ में 18 कांग्रेस के जो सुपर फोर्ट्रेस में 12 में तो बीजेपी आगे है। आज जब रुझान आएंगे और नतीजों में जब तब्दील होंगे तब तक यही चलता रहेगा। तो बहुत ही All right, viewers, getting some visuals of the Prime Minister right over there. Visuals coming in. The Prime Minister a short while back had unveiled and flagged off the Vande Bharat Express on Nagpur railway station. And let's go ahead and see what's happening on ground. और ये देख रहे हैं कि किस तरह से मेट्रो ट्रेन में प्रधानमंत्री ने यात्रा की, एक मेट्रो राइड ली और उस मेट्रो राइड के दौरान ये जो छात्र हैं ये उनके साथ बैठे हुए हैं और उनके साथ गुफ्तगू करते हुए कुछ बातचीत करते हुए परिचय का दौर शायद चल रहा है। ये तस्वीरें जो है अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं कि किस तरह से चाहे वो सामान्य नागरिक हो, खासतौर पर स्टूडेंट से इंटरैक्ट करने में प्रधानमंत्री बहुत रुचि रखते हैं और बहुत कई बार रोचक जानकारियां भी उनके साथ साझा करते हैं। इस तरह की तमाम तस्वीरें हम पहले भी देख चुके हैं और आज जब इस फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन पर प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्होंने इसी तरह से एक जो स्टूडेंट्स का दल था उनके साथ में बातचीत की, उनको अपने पास में बैठाया और उनके साथ संवाद स्थापित किया। ये देखिए अपने बारे में, कुछ अपने साथियों के बारे में जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो बता रहे हैं। और बहुत बड़ा दिन है आज महाराष्ट्र के लिए, गोवा के लिए, देश के लिए। जिस तरह से विकास की तमाम परियोजनाएं, 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं एक दिन में प्रधानमंत्री उनका शिलान्यास करेंगे और उद्घाटन करेंगे। तमाम वो परियोजनाएं जिनका प्रधानमंत्री ने 2016 में, 2017 में, 2019 में जिनका शिलान्यास किया था, उन सब का मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जब बात करें तो वो उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री ने 2016 में किया था और ये कहा जा रहा था कि यात्री सुविधाओं में जबरदस्त इजाफा होगा उससे। वो भी बनकर तैयार है। आज शाम प्रधानमंत्री आज दोपहर के बाद उसका भी उद्घाटन करेंगे। हमारे साथ में हमारे संवाददाता योगेश शीतल मौजूद हैं। योगेश, किस तरह से आज न सिर्फ नागपुर के लिए बल्कि महाराष्ट्र के लिए, गोवा के लिए आज बड़ा दिन है। 75,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र और गोवा के लोगों को समर्पित करेंगे। देखिए, अगर राज्य बात करें तो नागपुर की अगर महाराष्ट्र और गोवा की अगर बात करें तो ये लगता है कि इतने करोड़ की योजनाएं हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक पुश जो पीएम गति शक्ति कार्यक्रम है उसके तहत जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप क्षेत्र वाइज देखेंगे, रीजन वाइज देखेंगे तो मराठवाड़ा। All right, viewers. So right over there, we can see that there we have the Prime Minister who's taking a metro ride right now. He's taking a metro ride from Freedom Park Metro Station to Khapri Metro Station, where he will dedicate the Nagpur Metro Phase 1 to the nation, and he will lay the foundation stone for Nagpur Metro Phase 2 as well. He will inaugurate the Phase 1 of Hindu Balasaheb Thackeray Maharashtra Samruddhi Mahamarg connecting Nagpur and Shirdi, and undertake a tour of the highway. That will also happen a little bit later. So many development projects are being launched right now by the Prime Minister. He's going to go ahead and dedicate AIIMS Nagpur to the nation at around 11:15 a.m. So a very special day, in fact, today, where Modi had also tweeted yesterday that 11 December is a special day for Maharashtra, as projects worth 75,000 crore rupees will either be inaugurated or their foundation stones would be laid. Now, these include Vande Bharat Express, Nagpur Metro, AIIMS, and the spectacular Mahamarg between Nagpur and Shirdi. Alisha is joining us on the phone line. A very good morning to you, Alisha. Take our viewers through the significance of these development projects which are being launched by Prime Minister Modi. Prime Minister Narendra Modi, who is already in Maharashtra, he will lay the foundation stone and inaugurate projects of worth rupees 75,000 crore during his visit to the second capital of Maharashtra, that is Nagpur. Moreover, where he already flagged off the Vande Mataram Express, which is between Nagpur and Bilaspur, and also going to launch phase 1 of the Nagpur
metro. At this point of time, we can see Prime Minister Narendra Modi, who already is also going to lay foundation stone of a Nagpur Metro Phase 1, inaugurate the first phase of Samruddhi Mahamarg, which is connecting Nagpur and Shirdi and dedicate to the nation. And the AIMS, that is All India Institute of Medical Science, located in cities, that is in Nagpur. Moreover, we have been seeing that Prime Minister Narendra Modi, who has already given a flag off, a green signal to the Vande Mataram Express, and now he has also been travelling where he's been also travelling to the same metro from the same express is what we have been witnessing. Later in the day, he will also take part in various functions before travelling to Goa. So this is a schedule that is we can see that the Prime Minister Narendra Modi, who is already in Maharashtra, at first he flagged off Vande Mataram Express. Also now then he's going to visit the exhibition on the Nagpur Metro Rail project. And now we have been seeing that he's taking a metro ride from Freedom Park to Capri Metro Station. So this is a schedule of Prime Minister Narendra Modi. Moreover, it's a very important project where he is going to inaugurate of Samruddhi Mahamarg, also known as Hriday Samrat by Thackeray Maharashtra Samruddhi Mahamarg, where he is going to dedicate this to the nation, and after which there is also a dedication of AIMS Nagpur to nation. And the last where we are going to see that there is the inauguration of the laying of foundation stone and dedication of various projects worth rupees of 1,500 crores. So this is a various event that we have been witnessing at this point of time, where we can see the Prime Minister who has been taking a metro ride from Freedom Park to Capri Metro Station. Right. Well, Alisha, thank you for joining us for those details. And as Alisha explained to us what's happening on the screen, we can see the Prime Minister sitting there in the metro station and speaking to youngsters as well, having a conversation with them, heart-to-heart conversation with them right now, viewers, as this comes as a big boost to connectivity as well. The Prime Minister is visiting Maharashtra and he has reached the Nagpur metro station, the railway station, at around 9:30 a.m. Now he's taking a metro ride from Freedom Park station to the Capri metro station, and he will dedicate Nagpur Metro Phase 1 to the nation, and then he will also lay the foundation stone of the Nagpur Metro Phase 2. On that note, time for a very short break, viewers. We will get to every detail as Prime Minister Modi is taking a metro ride in Nagpur. Stay tuned to India's #1 news channel, Republic TV. In the recently concluded meeting, which was hosted by the Indian NSA, Mr. Ajit Doval, he'd invited NSAs from 5 Central Asian countries, and they had come to New Delhi to attend. Taliban has welcomed it. And this has led to a lot of heartburn in Pakistan. But the fact of the matter is that Taliban says that, this is a welcome step by India. And Taliban says that it wants to assure the world that its land will not be used for terror activities against the neighbors. कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा. इसलिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, सपने आपके, लैमिनेट्स हमारा. अमेजिंग स्पेसेस के लिए कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा. A movement transforming millions of lives in rural Maharashtra. An initiative empowering communities to transform their own lives. A journey that is changing the face of rural India. A holistic area where we want to make impact across everything that affects people's life, with the holy grail being livelihood to sort of empower them. Catch the stories of aspiration on Swadesh Foundation's Swa Se Bane Desh this weekend only on Republic TV. हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस जीते, उनके लिए बहुत मायने रखेगा, क्योंकि 2018 से लेकर अब तक ये पहली कांग्रेस जीत होगी 2018 के बाद. जिस तरीके से नंबर्स एक के बाद एक और बढ़ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, हिमाचल में एक फाइट अभी भी बनी हुई है. क्लियर एंड ओपन लीड आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं. आम आदमी पार्टी इज नोवेयर इन द कॉन्टेस्ट इन गुजरात. One man was killed after a massive fire ravaged a shopping mall in Moscow's northwestern outskirts on Friday.
Chennai. Cyclone Mandus had made a landfall around early in the morning today. Lot of damages happened. 1 or 2 building had collapsed. Poles and trees that is also uprooted and fallen down. 8-year-old boy Tanmay has now passed away. He was stuck at 400 feet deep borewell in Manvi village of Madhya Pradesh. तो कांग्रेस के गढ़ में 18 कांग्रेस के जो सुपर फोर्ट्रेस में 12 में तो बीजेपी आगे है। आज जब रुझान आएंगे और नतीजों में जब तब्दील होंगे तब तक यही चलता रहेगा। तो बहुत ही नेक टू नेक फाइट है। गुजरात में इतिहास रचा जा रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता देश के लिए काम किया, प्रदेश के लिए काम किया, उसका आशीर्वाद है। तो कुल मिलाकर यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दौर से ही जो है बढ़त बनाई है। गुजरात में 141 सीटें मिली थी कांग्रेस को। उसके बाद आज 45 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। 149 ये इतिहास बनने वाली बात है। हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर 20,425 वोट से जीत गए। कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब हुई है, लेकिन साथ साथ मैं एक बात भी कहूंगा, जिस तरीके से गुजरात के अंदर चुनाव लड़ा गया उससे लोकतंत्र कमजोर होता है। हम हारे। Heavy security is being deployed to make sure that no untoward situation takes place. In the very recently concluded Islamabad Conclave 2022 Joint Chief of Staff Committee, the former General, now retired, Zubair Hayat, made a few statements about India, about Pakistan, and why the two countries could not get along together, why Pakistan was seen as in a state of permanent conflict with India. And very interestingly, these are the points that he had to say. Hi, I'm Major Gauravari and you're watching Checkmate. So friends, General Zubair Hayat, now retired, he said that India has never actually accepted the existence of Pakistan. And he made this claim publicly in front of people, and this has been done many times in the past. I've had common Pakistanis, journalists and businessmen coming up to me, speaking on the phone and saying that, Major Sahab, you have never accepted Pakistan. India has never accepted Pakistan. India never accepted partition. Now, while partition is not something that we, remember very fondly, because many people died and, a part of our country was, taken away from us. But the fact of the matter is, of course, India has accepted Pakistan. Of course, India has accepted Pakistan because, we have a high commission in Pakistan, and Pakistan has a high commission here in New Delhi in Chanakyapuri. There was a time when Mr. Atal Bihari Vajpayee, former and now late deceased Atal Bihari Vajpayee, went to Minar-e-Pakistan as an offering of peace, and what he got back from Pakistan was Kargil. And when Vajpayee Sahab left Minar-e-Pakistan, it was the Jamaat-e-Islami who washed the Minar-e-Pakistan with rose water, saying that a kafir had come here, an infidel had come to the Minar-e-Pakistan and must be cleansed. This was done when Parvez Musharraf was Chief of Army Staff, and when Kargil was being planned and executed by the Pakistani armed forces. Lal Krishna Advani ji went all the way to Pakistan. I mean, we've had gestures from India. All the while, we've had embassies, we've had exchanges. They've come and acted in Bollywood films. They've come and sung here. They've come and played here in the IPL. We've had trade with Pakistan in the past. Of course, Pakistan has now stopped all trade with India. And but we've always accepted Pakistan as a reality. But this is something that Pakistan has
told its own people, because the generals in Pakistan need to live a certain lifestyle. The generals in Pakistan need to live in a certain manner. They need to live in palatial bungalows. They need to have their kids studying abroad in Ivy League colleges. They need to have properties in Dubai and London. They need to have large farmhouses in Pakistan. And you can't get that on a mere salary. So you have to tell the people of Pakistan that you're in danger. You have to tell the people of Pakistan there is existential danger. India will gobble you up. India wants Akhand Bharat, and India says that unless the entire nation of Pakistan is again taken back, we will not rest in peace. And this is something that everybody in Pakistan believes. You speak to their generals, their ambassadors, this is what they believe, that India will attack. India will somehow gobble up Pakistan. Now, I want to show you a few things here on screen. Look at this book. You know, Raiders in Kashmir. Raiders in Kashmir is a book written by Major General Akbar Khan, formerly of the Pakistan Army, now deceased. And he admits that it is the Pakistani army that came into Kashmir in 47 and 48. He says in this book that we attacked Kashmir. Now look at this book. Friends, not masters, Ayub Khan, claiming very proudly that it was we who attacked India in 1965. You've all heard about Operation Changiz Khan, how the Pakistani Air Force attacked India on the day/night intervening 2nd and 3rd of December, which triggered the 1971 conflict. Now what about this book, In the Line of Fire by Parvez Musharraf, in which he proudly claims that yes, it was he who attacked the Indian army in Kargil. It is he who actually went inside and stayed one night across the line of control with his boys. This is proof. These are not Indians. These are Pakistani generals, and two of them former presidents and martial law administrators. At the peak of their powers in Pakistan, people who control the destiny of that benighted nation of 220 million souls. These were the people who led Pakistan forward. They made a national security state because the generals needed to have money, and they instilled hatred in the people. And this is what you get. You have to keep telling the people that India means harm. India will gobble you up. India does not recognize your existence. And this has again happened in 2022, 75 years after India became independent and 75 years after Pakistan came into existence. Another news is that in the recently concluded meeting, which was hosted by the Indian NSA, Mr. Ajit Doval, he'd invited NSAs from 5 Central Asian countries, and they had come to New Delhi to attend. Taliban has welcomed it. And this has led to a lot of heartburn in Pakistan. But the fact of the matter is that Taliban says that, this is a welcome step by India. Taliban is talking about connectivity, especially regional connectivity. And Taliban says it wants to assure the world that its land will not be used for terror activities against the neighbors. This is something that Taliban has been very, very firm on. And initially, Taliban had also spoken about, how it wants trade, how it wants connectivity inside India, so India and Afghanistan can trade, etc. This is what is happening around the world. This is happening when the NSA, the Indian NSA, called his counterparts from Central Asian republics, and this is what they decided, and this is what they said, that we must help Afghanistan. We must ensure there is peace and stability, and there is zero terrorism inside Afghanistan, because it endangers this entire part of the world. Afghanistan is not alone, and this is something welcomed by the Taliban, but not by the Pakistanis. In a recent case, this whole thing about Imran Khan selling his watch, I'm sure you know about the Tosha Khana case. And things can't seem to be getting any better for Imran Khan. Every day there are surprises and things come out of the woodwork. Recently, there was this voice recording between Bushra Bibi, who is Imran Khan's wife, also known as Pinky Pirni, and one of Imran Khan's very close friends called Zulfi Bukhari. And listen to this recording, please. हेलो सलाम जी जी वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ मुर्शिद आप कैसी हैं अल्लाह के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की कुछ घड़ियां हैं उन्होंने कहा है कि आपको भेज दें आपको भेज दूं वो आपके उनको बेच वगैरह दें क्योंकि उनकी यूज की नहीं है तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें जरूर मुर्शिद मैं कर दूंगा
So seen in this recording how Zulfi Bukhari talks to Bushra Bibi, and Bushra Bibi is talking to Zulfi Bukhari saying that you sell the watch now. You see, there's nothing wrong in selling the watch. If that is the watch that they're talking about, there's nothing wrong. And except for the fact that the person whom they claim to have sold it to has come out in the open with an affidavit, no less, saying that I never bought or sold any watch. People are blaming me. They've misused my shop's letterhead. They've misused my stamp. They've misused my signatures. Everything is fake. Everything is a forgery. I've had nothing to do with this. And the British newspaper Daily Mail, in 2019, in the month of July, I think, they had written an article. We're talking about how things can't get any worse. Or maybe when you think that things can't get any worse for Imran Khan, things do get worse. Daily Mail, a very prestigious British newspaper, had published an article in 2019, I think it was the month of July, when they said that Shehbaz Sharif, then in the opposition, had actually embezzled funds, British taxpayer money, meant for Pakistan. And they stuck by their story, and this Daily Mail article was used as a hook by the Pakistan Tehreek-e-Insaf in belittling Shehbaz Sharif and saying that, Shehbaz Sharif is the root of all evil. It is the Sharif brothers who have taken enormous amounts of wealth outside the country. And this Daily Mail article, which is actually a foreign publication as far as Pakistanis are concerned, was held up as if it was a piece of holy paper or some sacrament or something like that. And the Daily Mail says, and they also said that, the Daily Mail would never make a statement unless they had thoroughly investigated all the issues against Shehbaz Sharif. And after a very detailed investigation, this is what the Pakistan Tehreek-e-Insaf said, that after a very, very detailed investigation, what has actually come to light is that Shehbaz Sharif has actually embezzled funds meant for the poor of Pakistan, something like 50 odd million pounds. Very recently, the Daily Mail apologized to Shehbaz Sharif and they said that we are sorry, we were wrong. Our correspondent, the writer of the article, was wrong. You have not taken any money, because Shehbaz Sharif actually went ahead and filed a case against Daily Mail. And he said that you're slandering my reputation and I will have none of it. And I want an apology and I want a withdrawal of the article. So the Daily Mail, under pressure, apologized. They took down that article. But now Imran Khan has nothing to say. Imran Khan has nothing to say actually, because Shehbaz Sharif has been proven innocent. Now, people from the Pakistan Tehreek-e-Insaf are going all across town using social media and saying that no, Shehbaz Sharif has actually exercised influence on a British newspaper. Till yesterday, there was no better newspaper than the Daily Times. Today, the Daily Times has become victim to Pakistani politics. Another news from Pakistan is that Imran Khan, in a public rally, you remember, on 26th of November, in a public rally, he had said, in Rawalpindi no less, that he will ensure, Imran Khan said that he will ensure that both, the Khyber Pakhtunkhwa and the Punjab assemblies are dissolved. He would simply dissolve both the assemblies, and that would force the federal government, of which Shehbaz Sharif is the head, the PDM actually, force them to declare elections, and there would be elections, and let people choose Imran Khan as their next Prime Minister. The problem is that Imran Khan has developed cold feet. Chaudhry Parvez Elahi of the Kaf League and a very, very close friend of Imran Khan, actually he went ahead and said to Imran Khan that even if I dissolve the assemblies today, elections will take a while. Elections are going to take a while, and there is no point in dissolving the assemblies. And he had also hinted to Imran Khan some time back that, Khan Sahab, if I'm not the Chief Minister of Punjab, the Pakistani army will use the other person, the incumbent, to file cases against you and you will be in prison. And there were lots of things which are happening. Anyway, Chaudhry Parvez Elahi said he will not resign, he will not dissolve the Punjab Assembly. But I fail to understand why Imran Khan, I can understand Punjab Assembly not being dissolved because Kaf League is not the Pakistan Tehreek-e-Insaf. They're partners. But what about the Khyber Pakhtunkhwa? Khyber Pakhtunkhwa is ruled by Imran Khan's own party and has been ruled by Imran Khan's party for several years. I'm sure Imran Khan can dissolve the Khyber Pakhtunkhwa Assembly, but he's not doing that. And there are two reasons why he's facing such a pushback, both from KP and from Punjab. Because the fact of the matter is that all the legislators,
all those politicians have spent, people in Pakistan say, I'm not sure of these figures, but what people in Pakistan say is that every person has spent around 20 to 25 crores. That is Pakistani rupees. 20 to 25 crore Pakistani rupees in fighting these elections. They have spent huge amount of resources. They have begged, they have borrowed, they have stolen, and they have somehow managed to pump in money in these elections and have won those elections. And when Imran Khan says, because of an ill thought through plan or whatever passes for a plan for Imran Khan, he says resign from these assemblies, obviously there is going to be huge pushback. Because the fact of the matter is that Imran Khan has taken a U-turn on each and every single thing that he's ever mentioned. He said it all started with that cipher. You remember Imran Khan waving that cipher in the Jalsa saying that there is an American conspiracy and there is somebody called Donald Who and he wants to overthrow my regime and he has overthrown my regime, etc. Now, Imran Khan has taken a U-turn. Imran Khan says that I want to forget about the foreign conspiracy. No conspiracy. Let's have good relations with America. Even in case of Qamar Javed Bajwa. Now General Bajwa is retired. What is Imran Khan to do about it? Nothing. Thirdly, Asim Munir, the new Chief of Army Staff, General Asim Munir, is somebody that Imran Khan threw out when he was DG ISI. Now Asim Munir does not like Imran Khan. Imran Khan is failing at each and every single turn. And you know the death knell of Imran Khan's politics was sounded when at one point in time Imran Khan could not get an FIR registered in that assassination attempt. And Chaudhry Parvez Elahi, his closest ally, who by the way Imran Khan had called a dacoit a few years back, you know. Imran Khan had said that in Pakistan there is no bigger dacoit than Chaudhry Parvez Elahi. That Parvez Elahi has become Imran Khan's best friend, Chief Minister of Punjab, and in spite of Chaudhry Parvez Elahi being the Chief Minister of Punjab, Imran Khan could not get an FIR registered for the assassination attempt on himself. Now this is where Pakistani politics is going. They've blamed India for funding terror. All lies, absolute Pakistani propaganda. They've said that the Indians funded through their embassies, through their high commissions in Afghanistan, they were controlling the TTP. Now India has been gone for more than a year. India has been gone from Afghanistan for more than a year. And yet, India is blamed for things that are Pakistan's own doing. You know, Pakistan created the Taliban. Pakistan created the Taliban. And how can you trust an armed group who says that its sole motivation in life is jihad? Wouldn't there be splinter groups? There are splinter groups in political parties. There are splinter groups everywhere. People who disagree move away from the mother body and start their own movement. Heavy security is being deployed to make sure that no untoward situation takes place. गुजरात में 141 सीटें मिली थी कांग्रेस को, उसके बाद आज 45 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। बिल्कुल 149 ये इतिहास बनने वाली बात है। हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर 20,425 वोट से जीत गए। कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब हुई है, लेकिन साथ साथ मैं एक बात भी कहूंगा, जिस तरीके से गुजरात के अंदर चुनाव लड़ा गया उससे लोकतंत्र कमजोर होता है। हम हारे। हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस जीते उनके लिए बहुत मायने रखेगा, क्योंकि 2018 से लेकर अब तक ये पहली कांग्रेस जीत होगी 2018 के बाद। जिस तरीके से नंबर्स एक के बाद एक और बढ़ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, हिमाचल में एक फाइट अभी भी बनी हुई है। क्लियर एंड ओपन लीड आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं। आम आदमी पार्टी इज नोवेयर इन द कॉन्टेस्ट इन गुजरात। One man was killed after a massive fire ravaged a shopping mall in Moscow's northwestern outskirts on Friday.
Chennai. Cyclone Mandus had made a landfall around early in the morning today. Lot of damages happened. One or two building had collapsed. Poles and trees that is also uprooted and fallen down. 8-year-old boy Tanmay has now passed away. He was stuck at 400 feet deep borewell in Manvi village of Madhya Pradesh. तो कांग्रेस के गढ़ में 18 कांग्रेस के जो सुपर फोर्ट्रेस में 12 में तो बीजेपी आगे है। आज जब रुझान आएंगे और नतीजों में जब तब्दील होंगे तब तक यही चलता रहेगा। तो बहुत ही नेक टू नेक फाइट है। गुजरात में इतिहास रचा जा रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता देश के लिए काम किया, प्रदेश के लिए काम किया, उसका आशीर्वाद है। तो कुल मिलाकर यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दौर से ही जो है बढ़त बनाई है। गुजरात में 141 सीटें मिली थी कांग्रेस को, उसके बाद आज 45 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। 149 ये इतिहास बनने वाली बात है। हिमाचल सीएम The National Counter-Terrorism Authority of Pakistan, NACTA, recently made a comment that, the ceasefire between the Pakistani forces and the Tehreek-e-Taliban Pakistan allowed the TTP to regroup, and this is the reason why the TTP has come back stronger. This is one of the arguments that were given by NACTA, the National Counter-Terrorism Authority, in saying that this is why the TTP is so strong. But Pakistan had launched so many operations in the past against the TTP. The Zarb-e-Azb and Raddul Fasad. What happened? Didn't these operations, which cost hundreds of millions of dollars, weren't they able to break the back of the Tehreek-e-Taliban Pakistan? Ladies and gentlemen, let me tell you something about terrorism in Pakistan. Pakistan does not realize that there is no external factors which are harming Pakistan. They seem to think that TTP disappears into Afghanistan after attacking Pakistan. That is true, that part is true. But the fact of the matter is, people from the TTP are Pakistani citizens. And they don't like Pakistan. They don't like the way Pakistan is being run. They don't agree with the constitution of Pakistan. They don't agree with the geographical entity that is Pakistan. And this is what a largely Punjabi elite has done to Pakistan. They've blamed India for funding terror. All lies, absolute Pakistani propaganda. They've said that the Indians funded through their embassies, through their high commissions in Afghanistan, they were controlling the TTP. Now, India has been gone for more than a year. India has been gone from Afghanistan for more than a year. And yet, India is blamed for things that are Pakistan's own doing. Pakistan created the Taliban. Pakistan created the Taliban. And how can you trust an armed group who says that its sole motivation in life is jihad? Wouldn't there be splinter groups? There are splinter groups in political parties. There are splinter groups everywhere. People who disagree move away from the mother body and start their own movement. The Taliban also had splinter groups. And the Tehreek-e-Taliban Pakistan has a bet in the sense that they have sworn loyalty to the Afghan Taliban. They consider the head of the Afghan Taliban as their own head. That is the level of loyalty that the Tehreek-e-Taliban Pakistan has for the Afghan Taliban. The Pakistanis can go around in circles. They can send Hina Rabani Khar, the Minister of State for Foreign Affairs, to Kabul and say that talk to Taliban. But the fact of the matter is, Mullah Yaqub, the son of Mullah Umar, refused to meet her. I have said this publicly many times. Mullah Yaqub, the son of the founder of the Taliban, refused to meet Hina Rabani Khar. He said, I will not meet the Pakistanis. The Afghans have traditionally blamed Pakistan for unmitigated treachery. Afghanistan was once a prosperous nation. It was a modern nation. It was a forward-looking nation. Pakistan took money from the United States of America. It changed the social fabric of Pakistan and Afghanistan just for a few dollars more. America pumped in billions of dollars, and this entire infrastructure of jihad was created by the deep state of Pakistan. And today, Pakistan is reaping the fruit of that poisonous tree. Today, if the Tehreek-e-Taliban Pakistan
attack Pakistani soldiers and kill them. This is Pakistan's doing. The ceasefire that NACTA was talking about, what ceasefire? In this ceasefire, more than 300 Pakistani soldiers and policemen have been killed. Just imagine if this is the state of ceasefire, what will be the state when there is no ceasefire? The Tehreek-e-Taliban Pakistan has called for an all-out war against the state of Pakistan. And Pakistan needs to do a very, very deep think as to how it came to this stage, where its own people, and that's what I'm saying, the Tehreek-e-Taliban Pakistan are actually Pakistani citizens, where its own people are fighting an existential war against their own state. The state of Pakistan's economy is terrifying. That Pakistan did not pay India for the medicines that it had imported is old news now. Pakistan has blocked $225 million of funds that it owed various airlines. And Pakistan is among the top 3 on IATA's list. So I'm quoting from Dawn here, Dawn News. It says that Pakistan has blocked some 225 million of airlines' dues, becoming one of the top countries restricting the industry from repatriating funds, the Global Airline Association, IATA, said on Wednesday. So, Pakistan has stopped global airlines of taking money out of Pakistan. So it has joined Sri Lanka and Bangladesh and a few other countries, Lebanon and Algeria, of stopping funds outflow. Because Pakistan is facing a very, very severe foreign exchange reserve problem. It does not have, I think, 7.5 billion odd money which is there with Pakistan, and most of that money, $7.5 billion, is aid given by countries. It's not like Pakistan has earned that money. It is aid given by countries to Pakistan. Saudi Arabia gave $3 billion, and that $3 billion Saudi Arabia said that you cannot spend it, just keep it. So it makes you look good. It makes you look nice, but don't spend that money. So this is the kind of money that Pakistan has. It's monopoly money. If you can understand what I'm saying and what the reference is, it's monopoly money. And IATA called on governments to remove all barriers for airlines repatriating their revenues from ticket sales and other activities. So IATA says that all these countries that I mentioned, Algeria, I mentioned Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan. So IATA has said, please remove all the barriers. We need to get this money out of the country. We need to get this money out of Pakistan back to the various airlines. But Pakistan has said, absolutely not. We don't have money. You can't take back to your country your own money. Now, this is the money that the airlines had earned from inside Pakistan. And somewhere along the way, I think all these airlines must understand that they've learned a very, very important lesson. You can't trust Pakistan. You can't trust Pakistan. It's not beyond them to steal your money. They'll just take your money and not return it. And these are the countries, countries like Qatar. The Qatar Airlines is impacted. Most of the airlines are. These are the very countries from which Pakistan asks for money. Pakistan will want aid from these countries. Pakistan will want loans from these countries. But when it comes to giving back the money that the airlines have rightfully earned by their business ventures inside Pakistan, Pakistan will refuse to give them money. And I think this issue has brought to fore one very important factor, that the world needs to look very, very closely at the economic model being followed in Pakistan. You put money in Pakistan, it goes down a deep, deep dark hole from which there is no coming out. Thank you for watching Checkmate, ladies and gentlemen. I'll see you again next week. Till then, have a great weekend. तो कांग्रेस के गढ़ में 18 कांग्रेस के जो सुपर फोर्ट्रेस में 12 में तो बीजेपी आगे है। आज जब रुझान आएंगे और नतीजों में जब तब्दील होंगे, तब तक यही चलता रहेगा। तो बहुत ही नेक टू नेक फाइट है। गुजरात में इतिहास रचा जा रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता देश के लिए काम किया, प्रदेश के लिए काम किया, उसका आशीर्वाद है। कुल मिलाकर यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दौर से ही जो है बढ़त बनाई है।
security is being deployed to make sure that no untoward situation take place. गुजरात में 141 सीटें मिली थी कांग्रेस को, उसके बाद आज 45 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। 149 ये इतिहास बनने वाली बात है। हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर 20,425 वोट से जीत गए। कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब हुई है, लेकिन साथ साथ मैं एक बात भी कहूंगा, जिस तरीके से गुजरात के अंदर चुनाव लड़ा गया उससे लोकतंत्र कमजोर होता है। हम हारे। हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस जीते उनके लिए बहुत मायने रखेगा, क्योंकि 2018 से लेकर अब तक ये पहली कांग्रेस जीत होगी 2018 के बाद। जिस तरीके से नंबर्स एक के बाद एक और बढ़ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, हिमाचल में एक फाइट अभी भी बनी हुई है। क्लियर एंड ओपन लीड आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं। आम आदमी पार्टी इज नोवेयर इन द कॉन्टेस्ट इन गुजरात। One man was killed after a massive fire ravaged a shopping mall in Moscow's northwestern outskirts on Friday. Chennai cyclone Mandus had made a landfall around early in the morning today. A lot of damages happened. 1 or 2 building had collapsed, poles and trees that is also uprooted and fallen down. 8-year-old boy Tanmay has now passed away. He was stuck at 400 feet deep borewell in the Manvi village of Madhya Pradesh. तो कांग्रेस के गढ़ में 18 कांग्रेस के जो सुपर फोर्ट्रेस में 12 में तो बीजेपी आगे है। आज जब रुझान आएंगे और नतीजों में जब तब्दीली Viewers, top headlines right now. Taran RPG attack probe gets bigger now. 15 details so far, and the gangsters have been lost in jails. They will be grilled soon. Big boost to connectivity in Maharashtra as Prime Minister flags off mega projects. Dream project of Maharashtra Deputy CM, the 701 kilometer expressway now will be inaugurated. Chosen by Congress as Himachal face of the Congress party now, Sukhvinder Sukhu is set to take over today along with Mukesh Agnihotri. Liquor Gate probe widens. KCR's daughter to be grilled by CBI in Hyderabad. On fast unto death, YSRTP chief YS Sharmila arrested by KCR cops moved to hospital as health worsens. Viewers, a very good morning. You're watching Republic TV this Sunday morning. I'm Shivangi Shukla. The big story coming in right now is that Himachal is all set to get a new chief minister amidst the Vadra Congress chaos. Republic has learned that Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Vadra, Mallikarjun Kharge and Sachin Pilot are to attend the ceremony. So the oath-taking ceremony is going to happen very, very shortly, viewers. The swearing-in ceremony of the Himachal Pradesh CM will be, of course, tracked here on Republic TV. But the former Congress state chief Sukhvinder Singh Sukhu will take oath as Himachal Pradesh's chief minister exactly any time right now. And remember that 2 days ago, after Congress had taken power from the BJP, winning 40 seats in the 68-member assembly, Congress leadership has named Sukhvinder Sukhu as the next CM. And we're also learning the Republic has learned that Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Vadra, Mallikarjun Kharge and Sachin Pilot will be attending that ceremony. We will quickly, very shortly in fact, go to Amandeep who will be joining us live very shortly.
But as we wait for Amandeep, who's at location right now, getting us all the updates, we can tell you that Himachal is all set to get a new chief minister amidst the Vadra Congress chaos. Now, the swearing-in ceremony of the new government in Himachal will be attended by Congress President Mallikarjun Kharge, party leader Rahul Gandhi, AICC General Secretary Priyanka Gandhi as well. And the party choice of CM is a major setback to state party chief Pratibha Singh. A lot of infighting also can be seen in a way because it's a big setback to state party chief Pratibha Singh. Let's go straight to Amandeep, and as we go to Amandeep, we're getting some more breaking updates. The Vikram Aditya was offered deputy CM post as well. Getting some scoops coming in right now, Amandeep. Well, absolutely, Shivangi. A formula that Congress High Command was trying to opt is that a post of Deputy Chief Minister was offered to Vikram Aditya, but with the limited powers. And in fact, he denied to stay in a restriction while having the post of Deputy CM. Then again, Congress forced to rethink about the formula just because, Shivangi, yesterday after so many complications, they have reached to conclusion that Mukesh Agnihotri turned to be the Chief Minister and two Deputy Chief Minister, one Sukhwinder Sukhu and another Vikram Aditya. But when Vikram Aditya refused to be the Deputy Chief Minister with the limited powers, then again Congress has changed their formula. They went by the numbers. Who is having the majority of the MLAs, he will be the CM. And finally, Sukhu's name was stamped. And in fact, now when Pratibha Singh was separate from all the meetings, and in fact Sukhwinder Sukhu, designated Chief Minister, went to his residence at Holly Lodge to settle down each and everything, to negotiate the things so that at least rebel voice should not come out. But Shivangi, everything is not very well settled. Everything is not well in the Congress. Unrest is somewhere down the line sustaining in the Congress when late Veerbhadra's family has been brushed aside from this entire episode. Yesterday, 2 names has been announced, and even till now, the official is that this Chief Minister Sukhwinder Sukhu and Deputy Chief Minister Mukesh Agnihotri will take the oath and nobody else. Where is Vikram Aditya in the scene? That is missing, and that turned to be the conflict point inside the Congress party so far. Yes, Shiva. Right. Well, Amandeep, thank you for getting us all the details. Top updates coming here and big political scoop coming in from Himachal Pradesh. Amandeep keeping us ahead on this story coming in. Thank you, Amandeep. Let's go now to what's happening in Maharashtra. The Prime Minister is in Maharashtra right now, viewers. And what we can tell you, viewers, is that we're getting in visuals of the Prime Minister a short while back. He had taken a metro ride. He will inaugurate key development work in the city. And visuals coming in right now from Maharashtra, you'll soon see them on your screen, where PM Modi has just a short while back, he has inaugurated the 6th Vande Bharat Express train at Nagpur railway station. He will also inaugurate 2 phases of the metro corridor at the Freedom Park metro station. And he will unveil AIIMS Nagpur. Now, that's going to happen very, very shortly, viewers. We are waiting for that to happen. But key development projects are being inaugurated, viewers. This is the big news coming in from Maharashtra. He is, like we just told you, he will also be inaugurating the phase 1 of the Samruddhi Expressway, which is a 520-kilometer stretch connecting Nagpur and Shirdi as well. And the 6-lane road is the second greenfield expressway in the state after the Mumbai-Pune Expressway. So back-to-back development projects are being inaugurated by the Prime Minister. All right, so right now, viewers, he had tweeted yesterday itself that a short while back he tweeted that he will be inaugurating multiple projects. He had also tweeted that the Prime Minister's office has said that the Prime Minister has landed in Nagpur a short while ago. He will inaugurate key development work in the city. And we also are learning that he will flag off 2 metro stations, which has just happened as well. He is also going to unveil AIIMS Nagpur. AIIMS Nagpur. Prime Minister's commitment to strengthen the health infrastructure across the country has been very, very well known. He has spoken about health in multiple addresses of his and has put health as the #1 priority. So the Prime Minister's
commitment to strengthen the health infrastructure will be strengthened through the dedication of AIIMS Nagpur to the nation. Now, the unveiling of AIIMS Nagpur will happen very, very shortly. We're getting you all the details here on Republic TV as we get to top updates. The Prime Minister had in fact lauded the work of the people in Nagpur who have worked very, very hard to make these development projects a reality. He's inaugurating various development projects in Maharashtra as well. So on his visit to Maharashtra, viewers, you're seeing that a lot of projects are being inaugurated, where he's inaugurating the phase 1 of the Mumbai-Nagpur Bala Saheb Thackeray Samruddhi Expressway. And he will also be inaugurating multiple projects as well. The 6-lane road is a second greenfield expressway in the state after the Mumbai-Pune Expressway. So the entire project is around 701 kilometers. Project connecting Mumbai to Nagpur is expected to be completed by the year 2023. And later, he will be visiting Goa to inaugurate the Mopa International Airport as well. So later on, he'll be in Goa. Alisha is joining us. Alisha, very soon we'll be seeing that the Prime Minister will be unveiling AIIMS Nagpur. So we're waiting for that to happen. But take our viewers through why this visit of the Prime Minister in Maharashtra is significant. We know that the visit of Prime Minister Narendra Modi is significant, and whereas he's the Nagpur, where he already started off the Nagpur service, also Vande Bharat Express at Nagpur railway station. Also, Prime Minister dedicated the Nagpur Metro phase 1 and to side from either station to metro station, which will lay the foundation for the phase 2 of the project costing around 15,000 crores. Importantly, the Prime Minister Narendra Modi also inaugurated the phase 1 of Mumbai-Nagpur Samruddhi Marg, which is a super communication expressway, and take a tour of a new two-way. Not only this, but the 520 kilometer long phase 1 is part of a total 701 kilometer super expressway project, linking the capital Mumbai with Nagpur, passing through 10 districts. Being constructed at the cost of around 55,000 crore, it is among the country's largest greenfield 6-lane expressway, and will allow the travel time between two cities from the existing 16 hours to just 8 hours. This is something a dream project of Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis since the time he was the Chief Minister of the state 2019. But whatever be either way was told by Mahavika Sangari. But again now when BJP is in power and Devendra Fadnavis is the Deputy Chief Minister, the phase 1 has already been completed, and now we can see that it has already been inaugurated by Prime Minister Narendra Modi, who has already been inaugurating and also dedicated the Nagpur Metro phase 1 to the nation, and now we have been seeing that he is also going to dedicate the state-of-the-art, that is AIIMS in Nagpur, built at a cost at around 1,575 crores to the nation, and lay the foundation stone of the National Institute of One Health to be built for around 110 crores. Absolutely, Alisha. Absolutely. So big projects are going to be inaugurated by the Prime Minister, and we will shortly be seeing the Prime Minister to unveil AIIMS Nagpur as well, viewers. So we're getting top updates here from Maharashtra. Later on, the Prime Minister will be going to Goa to inaugurate the airport as well, viewers. Top updates coming in. The Prime Minister will be visiting Goa later to inaugurate the Mopa International Airport today. And a short while back, he inaugurated the 6th Vande Bharat Express train at Nagpur railway station. SARC is currently not active because one member of the SARC believes that dealing with other neighbors is compatible with the practice of cross-border terrorism. Now, we have reached a stage today where we don't think the two can happen side by side. So, if you ask me today, what is holding up SARC? Because do look at this period. If you look at India, Bangladesh, India, Nepal, India, Bhutan, India, Maldives, India, Sri Lanka, India, Myanmar, even India, Mauritius, India, Seychelles, each one of these relationships has grown in the last 5 years. The trade has grown, investments have grown, cooperation has grown. So
We want regionalism. We see benefits in it. We think everybody would get. But the problem we faced when it came to South was, how do you deal with somebody in the room who actually is sitting with you on the table by the day and actually sending people over with guns at night? And that is a problem. Viewers, getting some more details coming in the Taran RPG attack case. Police sources have informed both Taran police and counter-intelligence wing are carrying out parallel, I repeat, parallel investigation, and 15 have been detained by Taran police and counter-intellectual wing in the RPG attack case. Getting some latest inputs coming in the Taran RPG attack case, the police sources have informed that both Taran police and the counter-intelligence wings are carrying out parallel investigation. 15 are detained by the police. Big updates coming in right now, inside details coming in. Let's go to Gursimran. Gursimran, we're getting top updates right now after we told our viewers that 400 mobile numbers are being investigated and are under the scanner. More details coming in. Gursimran, take our viewers through the latest updates. Some of the senior officials of the Punjab police who are privy to the development were monitoring the situation right from Chandigarh, and they have said that a total of 15 people have been detained by the Punjab police. This is separately. This is by the Taran police as well as the counterintelligence cell or the counterintelligence wing of the Punjab police. They have detained a total of 15 people who are suspected to be involved directly or indirectly in the RPG attack, and they are being questioned. Their mobile details are also being taken by the investigating agencies, and we are getting to know that these 15 people, they have been detained after the dump call letter that hinted of around 400 persons. They were among those persons, and they were suspected as the moment when the attack took place. They were very near to the police station Sarhali, after which they have now been detained and are being grilled by the agencies. Also, some of the central agencies are also carrying out a parallel investigation, though the details have not been shared yet, but we are told that at least 3 central agencies are camping in the Taran district, wherein they are carrying out their own investigation. This is a parallel investigation that is carried out as the central government is very serious after the second RPG attack has taken place on a police installation in Punjab. Right, Gursimran. Also, we are getting some more information coming in. Apart from the latest details, we also know that the Republic TV has learned that the Russia-made rocket-propelled grenade launcher was used to carry out the attack. And this Russia-made RPG is capable of penetrating through thick walls. So a big question also being raised: how did the culprits get access to a RPG launcher like that? See, this is a military-grade RPG shell that has been recovered from the spot, and also the RPG launcher. The RPG launcher is Russia-made 125mm launcher, and when it comes to the RPG shell, that is a Pakistan military-grade shell that is used by the Pakistani army. But how it came to the hands of the terrorists to carry out a terror attack on a police station in India, it is clearly evident that this is under the clear support of the Pakistani establishment, Pakistani army, that the terrorists here are getting the military-grade Pak-made RPG shells, and this cannot be done without the active support of the Pakistani establishment. And this, what sources are telling us, has come via drone in last few days from across the border. Possibly the dropping has taken place in the Firozpur or in the Taran district, since the travel distance is 30 to 40 kilometers from the international border, and then it was executed by some of the gangsters that were in touch with Satinder Satta, who is from the Pannu village of Nawashahar. Right, Gursimran, thank you for getting us those details. Also, Dipesh is joining us live from Taran. A very good morning to you, Dipesh. We're getting back-to-back updates. You're on ground as well. अभी क्या हो रहा है इन्वेस्टिगेशन में, क्या हो रहा है, डिटेल्स बोलिए. देखिए बिल्कुल अभी जो बम स्क्वाड की टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और लगातार खाक छान रही हैं, लगातार सबूत जुटाने की कोशिशें इस वक्त चल रही हैं. अभिषेक से कहूंगा जरा तस्वीरें दिखाइए. बम स्क्वाड की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और इस पूरे जो ग्रेनेड अटैक है उसके बाद जो एक सबूत है वो जुटाए जा रहे हैं, साक्ष्यों को कलेक्ट किया जा रहा है. तस्वीरों में हम आप तक पहुंचाते हैं कि किस तरह से इस अटैक के बाद जो लगातार जो यहाँ पर सबूत और साक्ष्य हैं उनको जुटाने का काम चल रहा है. जो दीवारों
ऊपर स्पॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे, उनके पिक्चर्स कलेक्ट किए जा रखे हैं। जो इस हमले के बाद इस पुलिस थाने के जो गेट के शीशे टूटे थे, उसके अलावा अंदर जब ग्रेनेड वहां पर गिरा था, उन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं कलेक्ट किया जा रहा है। और हाईवे से जिस स्पॉट से ग्रेनेड लॉन्च किया गया था, जिस स्पॉट से आरपीजी अटैक किया गया था, उस स्पॉट पर भी जो बम स्क्वाड है उसकी टीम पहुंची थी और वहां पर भी खाक छानने की कोशिश की गई थी। वहां से भी ये चीजें कहीं ना कहीं जानने का प्रयास किया गया था कि कहीं यहाँ पर तो कोई सबूत नहीं है जो अपने आप में जांच पड़ताल में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। यही वो स्पॉट था, यहाँ से जो आरपीजी है वो लॉन्च किया गया था और सीधे थाने को टारगेट किया गया था। यही कारण है कि बम स्क्वाड की टीमें यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ पर भी लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। जी All right, Dipesh, thank you so much for getting those details. Dipesh joining us live, telling us what's happening in Taran as the investigation continues in the RPG attack case. Thank you, Dipesh, and keep us ahead on this story from ground. Let's now, viewers, have a look at what else is making news. And this time, we'll have a quick look at all the global updates. Football fans clashed violently with police in central Paris following Saturday's quarter-final matches between France and England and Morocco and Portugal. Morocco supporters clashed with police on the streets of Brussels on Saturday after the North African team qualified for the World Cup semi-finals. Celebrations by Morocco fans in Belgian capital leads to several arrests. President Volodymyr Zelensky said the situation is very difficult in the Odessa region. Zelensky has also said that more than 1.5 million people are currently left without electricity in the area after a night strike by rain and drones, adding that this is the real attitude of Russia to Odessa. Ukrainian city of Bakhmut has come under heavy strikes. Russian forces were targeting a nearby emergency service headquarters. Donetsk region's governor has estimated 7 weeks ago that 90% of the city's population of over 70,000 had fled in the months since Moscow focused on seizing the entire Donbas region. सीधे दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण दिन नागपुर के लोगों के लिए और साथ ही साथ विदर्भ क्षेत्र के लोगों के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वहां पर जो आदिवासी इलाका है गढ़चिरौली का, गोंदिया का और मेलघाट का, उस इलाके के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्रधानमंत्री ने एम्स नागपुर को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर अब राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने ही इसकी आधारशिला रखी थी जुलाई 2017 में। 2017 में प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी थी। निशांत, हम आपसे बातचीत कर रहे थे अभी इसके बारे में और हमने दर्शकों को अभी वो दृश्य भी दिखाए जब प्रधानमंत्री ने एम्स नागपुर को राष्ट्र को समर्पित किया है। जुलाई 2017 में खुद प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था और अब प्रधानमंत्री के हाथों के द्वारा इसका उद्घाटन हो चुका है। निशांत, अगर इस एम्स नागपुर की हम लोकेशन की बात करें तो खासकर विदर्भ का जो इलाका है उसको तो इसका फायदा होगा ही, नागपुर के लोगों को होगा, लेकिन गढ़चिरौली, गोंदिया और मेलघाट ये सब आदिवासी इलाके हैं वहां पर ज्यादातर। और एक दशक पहले अगर हम चले जाएं तो इन इलाकों में स्वास्थ्य की जो सुविधाएं थी वो बिल्कुल ना के बराबर थीं। तो ऐसे में एम्स नागपुर का ये राष्ट्र को समर्पण कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? जी देखिए चंद्रशेखर, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये न केवल नागपुर बल्कि जो आसपास के जो आदिवासी क्षेत्र हैं जिनका जिक्र। All right, viewers, getting those top updates as the Prime Minister has inaugurated AIIMS Nagpur. The Prime Minister has spoken about his commitment towards the health infrastructure time and again. And this time we are seeing visuals come in as the Prime Minister has inaugurated and dedicated AIIMS Nagpur to the entire nation. There are multiple AIIMS in multiple cities. The main one which was in AIIMS Delhi. Now we are seeing multiple AIIMS. That means world-class infrastructure, health infrastructure, this time being inaugurated in Nagpur, viewers. And
This is coming, viewers, as the Prime Minister has just flagged off 2 metro stations. Phase 1 of Nagpur Metro has been developed at a cost of 8,650 crore, and he will also lay the foundation stone of the Phase 2 of Nagpur Metro Station, which has been developed at the cost of 6,700 crores. 75,000 crores worth of infrastructure projects being launched by the Prime Minister. The latest one right now, AIMS Nagpur, which has been dedicated to the nation. On that note, viewers, time for a very short break. We continue to be live and breaking this Sunday morning, getting you all the top updates on India's #1 news channel. Coming up on the other side, viewers, we see Liquorgate probe is widening now. KCR's daughter to be grilled by CBI in Hyderabad. And on fast unto death, YSRTP chief YS Sharmila, arrested by KCR cops, moved to hospital as health worsens. Stay tuned. झाके रे झाके झरोखे से झाके हैरत से आंखें अपनी सी दुनिया नई रंगी लागे ख्यालों की खिड़की से मन कूदे भागे झाके रे झाके झरोखे से झाके देख के दंग है छोटे बड़े सारे झाके रे झाके हर कोई ताके तरक्की को टुक टुक हर कोई ताके झाके रे झाके Reimagineering brighter futures with smarter steels. ArcelorMittal, Nippon Steel India. Smarter steels, brighter futures. In the recently concluded meeting, which was hosted by the Indian NSA, Mr. Ajit Doval, he'd invited NSAs from 5 Central Asian countries and they had come to New Delhi to attend. Taliban has welcomed it. And this has led to a lot of heartburn in Pakistan. But the fact of the matter is that Taliban says that, this is a welcome step by India. And Taliban says that it wants to assure the world that its land will not be used for terror activities against the neighbors. तो कांग्रेस के गढ़ में 18 कांग्रेस के जो सुपर फोर्ट्रेस में 12 में तो बीजेपी आगे है। आज जब रुझान आएंगे और नतीजों में जब तब्दील होंगे तब तक यही चलता रहेगा। तो बहुत ही नेक टू नेक फाइट है। गुजरात में इतिहास रचा जा रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता देश के लिए काम किया, प्रदेश के लिए काम किया, उसका आशीर्वाद है। तो कुल मिलाकर यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दौर से ही जो है बढ़त बनाई है। Heavy security is being deployed to make sure that no untoward situation takes place. गुजरात में 141 सीटें मिली थी कांग्रेस को, उसके बाद आज 45 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। 149 ये इतिहास बनने वाली बात है। हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर 20,425 वोट से जीत गए। कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब हुई है, लेकिन साथ साथ मैं एक बात भी कहूंगा, जिस तरीके से गुजरात के अंदर चुनाव लड़ा गया उससे लोकतंत्र कमजोर होता है। हम हारे। हिमाचल Viewers, a shocking news update coming in from Maharashtra's Palghar. A 10-month-old girl died after the mother flung from a cab on the Mumbai-Ahmedabad highway while her mother was allegedly molested on Saturday morning. The woman too was pushed, I repeat, the woman too was pushed out of the vehicle and sustained serious injuries.
The toddler was flung out of the car. Very, very shocking news coming in. Let's go to Samiksha. Samiksha is joining us from the Mumbai studio. Samiksha, this is a very, very shocking incident coming in from Maharashtra. What are the details that we're learning about this shocker? Well, that's right, Shivangi. It's shocking and unfortunate at the same time, where this woman who was traveling with her toddler in this particular cab, she was coming from Palghar, and this incident happened on the highway. She was, in fact, there were other passengers as well in this particular vehicle when this lady was molested, after which her toddler, 10-month-old toddler, was thrown out of the moving vehicle. Latest update, of course, coming in that the toddler has succumbed to those injuries. In fact, not just the toddler, the woman also sustained injuries. Latest update is coming in that the accused, we are able to understand, has been arrested as well. But we have that reaction as well of the victim. Let's listen. तो मध्ये बसलेली ना, ते भैया साईडला बसले होते मागे, पण माझ्या अंगाला हात लावित होते. ते असं छेडछाड करीत होते. न फोन केला तरी सांग तुझं काम झालं. मी तेवढंच ऐकलं, ते पोरी खेचली ना, फेकून दिली ना, मी डायरेक्ट उडी मारली तिच्या सोबत पकडायला. मुलीला कोणी फेकलं? पाठीमागे होते ते. किती जण होते? माहित नाही एवढा किती जण होते ते. ओके. तुला कोण वाचवला? मलाच नाही माहित, मी खाली पडलेली. तुम्हाला त्याच इको मध्ये पोलिसाही बसवले, पोलीस होता पुढे ना, मी मागे होते पोरीला घेऊन. माझे तेवढाच आठवते मला गाडीत बसवली कोणी त्या पण नाही माहित मला. गाडीमध्ये कोण होता तुझ्या बरोबर? ते पोलीसवाला होता का? हा, पोलीसवाला होता माझ्या जोडीला. So, as you just heard, the reaction coming in from the victim who sustained injuries after she was flung out of this moving vehicle. In fact, her 10-month-old toddler was also thrown out. Latest, we are given to understand. We'll wait on that confirmation whether the accused has been arrested or not. But a very shocking incident coming to light from Maharashtra's Palghar. Alright, we'll try and get some reactions as well on this, but this news coming in from Maharashtra's Palghar, where this incident happened on a moving vehicle, where this woman was allegedly molested by the driver, and in fact there were other passengers as well who were travelling on this vehicle when this incident happened. Alright, this news coming in from Maharashtra's Palghar, where the woman was travelling with her infant and with her toddler on this vehicle. She was coming from Palghar when she was allegedly molested by the passengers. But before we get more details, let's cut across to the live visuals coming in of Prime Minister Modi in Nagpur. इन संस्थानों के बारे में अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज की, जो हम बात कर रहे हैं, जो चंद्रपुर में सेंटर फॉर रिसर्च का स्थापना वहां पर हो रही है, विदर्भ इलाके की अगर हम बात करते हैं तो इस इलाके में सिकल सेल रोग का प्रसार है और जनजातीय जो इलाके हैं वहां पर ये काफी है. तो ऐसे में जैसे थैलीसीमिया की हम बात करें, एचबी है, तो इस तरह के रोग वहां पर काफी हैं. तो ये और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है उस इलाके के लिए? जी देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इन बीमारियों का यहाँ पर जो ट्राइबल इलाके हैं वहाँ पर ये बीमारियां काफी देखने को मिलती है. तो इससे निश्चित तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्था पर काफी बोझ पड़ता है. तो इस बोझ को कम करने के मकसद से और इन बीमारियों से जो इससे जुड़े हुए जो रिसर्च है उस पर ध्यान देने के मकसद से, रिसर्च करने के मकसद से ही प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है. जो ट्राइबल इलाके हैं जहां पर लोगों को इन बीमारियों का सामना करना पड़ता है, तो अब जब ये संस्थान बन जाएगा तो बेहतर तरीके से इनका इलाज, इन बीमारियों का इलाज किया जा सकेगा और बेहतर तरीके से रिसर्च हो सकेगा. और जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जिसका मैंने जिक्र किया, वो तकनीकों का विकास किया जा सकेगा ताकि आने वाले समय में लोगों का बेहतर तरीके से इलाज किया जा सके. तो निश्चित तौर पर जो हेल्थ के सेक्टर में नागपुर को सेंट्रल इंडिया का हब बनाने की दिशा में ये काफी महत्वपूर्ण प्रयास, ये जो प्रधानमंत्री आज जिन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने जा रहे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण प्रयास साबित होने जा रहे हैं.
और वैसे भी जो केंद्र सरकार है उसका काफी फोकस रहा है देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में। और जहां तक एम्स की बात करें तो टर्शियरी केयर का काफी महत्वपूर्ण संस्थान माना जाता है। लोग एम्स जैसे संस्थान जहां पर विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद है वहां पर आकर इलाज करवाना चाहते हैं। आपको मालूम होगा कि दिल्ली एम्स में कितना बोझ होता है लोगों का। लोग हर साल लाखों की तादाद में वहां पर इलाज करवाने आते हैं। उसी बोझ को कम करने के मकसद से केंद्र सरकार ने, वर्तमान सरकार ने देश के हर राज्य में एम्स जैसे संस्थान खोलने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। और जब से 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सत्ता में आई है तब से नए एम्स को खोलने की दिशा में काफी प्रयास किए गए हैं। और अब तक 15 नए एम्स को अप्रूवल दिया जा चुका है और 10 एम्स में ओपीडी सुविधाएं चालू हो चुकी है, फंक्शनल की जा चुकी हैं। और जो अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस पाठ्यक्रमों की शुरुआत 12 एम्स में की जा चुकी है और 8 एम्स में जो कंस्ट्रक्शन का काम है, निर्माण का कार्य, वो काफी एडवांस स्टेज में चल रहा है, काफी प्रगति पर है। और जो पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम जिसका मैंने जिक्र किया, जिसके तहत जो इन नए एम्स का निर्माण किया जा रहा है, इसके तहत जो मैं बात करूं तो इस साल, इस वित्तीय वर्ष में 2022-2023 में 10,000 करोड़ रुपए सरकार ने बजट में आवंटित किए थे और इसी के तहत इन तमाम एम्स का निर्माण किया जा रहा है। और जो वर्तमान जो एग्जिस्टिंग जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनका अपग्रेडेशन भी किया जा रहा है। तो और मैं एक बात और मैं आपको बताऊं चंद्रशेखर कि पिछले 8 साल में केंद्र सरकार ने 200 से ऊपर 209 नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं अब तक। तो पहले के मुकाबले करीब मैं आपको बताऊं तो 54% के आसपास वृद्धि हुई है नए मेडिकल कॉलेजों की संख्या में, जिनमें कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 73% वृद्धि हुई है मेडिकल कॉलेजों की संख्या में। और जो निजी मेडिकल कॉलेजों की बात करूं तो करीब 37% की वृद्धि हुई है, यानी ओवरऑल 54% की वृद्धि हुई है। तो सरकार का मुख्यतः फोकस है, स्वास्थ्य पर फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस है, शिक्षा के क्षेत्र में फोकस है, तमाम क्षेत्रों में फोकस है। और आज जिस तरह से एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री अब से उन्होंने थोड़ी देर पहले इसका लोकार्पण किया और अब यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री थोड़ी देर में पहुंचेंगे। तो नागपुर के लोगों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण रहा आज का प्रधानमंत्री का दौरा। काफी बेसब्री से उनको इंतजार था कि प्रधानमंत्री आए और ये जो नागपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी, सड़क परिवहन से जुड़ी और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी जो तमाम संस्थान हैं उनका वो उद्घाटन, करीब 75,000 करोड़ रुपए की योजनाएं जो कि नागपुर के लिए प्रधानमंत्री ने, जिनका आज या तो वो शिलान्यास किया है या फिर उन्होंने लोकार्पण किया है। तो ये मेडिकल कॉलेज जिसका अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया, वो काफी निशान साथ ही ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे हम इसमें एम्स की बात करें या उसके अलावा सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज की हम बात करें। ये जब इनका शिलान्यास किया गया उसके बाद ये लटकाए भटकाए नहीं गए, बल्कि एक समय सीमा के अंदर ये पूर्ण कर दिए गए और आज प्रधानमंत्री ने इस इलाके को ये सब योजनाएं समर्पित भी कर दी हैं। चाहे इसमें ट्रांसपोर्ट की योजनाएं हों, हेल्थ से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उसके अलावा उद्योगों से जुड़ा हुआ भी वहां पर प्रधानमंत्री एक पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान वहां पर मिलने वाला है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है कि जो समय सीमा दी गई उस समय सीमा के अंदर ये पूरा किया गया ताकि लोगों को सहूलियतें मिल सकें। जी चंद्रशेखर, देखिए बिल्कुल सही आपने कहा कि जिन योजनाओं का प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था उनका उन्होंने खुद उद्घाटन भी किया और समय सीमा के भीतर इन सभी योजनाओं को पूरा कर लिया गया। क्योंकि जैसा कि एम्स नागपुर का ही अगर उदाहरण दे तो
2017 में उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। चाहे जो सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज की बात करें तो 2019 में प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था और निश्चित तौर पर समय सीमा के अंदर इन सभी योजनाओं को पूरा कर लिया गया। और 2017 में एम्स नागपुर के शिलान्यास के बाद 2018 में एक अस्थायी कैंपस में 50 MBBS छात्रों के साथ पहले बैच की शुरुआत भी कर दी गई थी एम्स नागपुर में और उसके बाद ये नए कैंपस में 2019 के बाद ये शिफ्ट हुआ। तो निश्चित तौर पर जो समय सीमा तय की गई थी उसके अंदर ही तमाम कार्यों को पूरा कर लिया गया और जिस तरह से देश में जो मेडिकल कॉलेजों की पहले हम कमी देखते थे और लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, दिल्ली में एम्स जैसे जो संस्थान थे वो उस पर काफी बोझ था लोगों का। देश के तमाम दूर दराज के राज्यों से लोग दिल्ली एम्स में अपना इलाज करवाने आते थे, चूंकि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेजों में एम्स की गिनती होती है। तो ऐसे में देश के अलग अलग राज्यों में एम्स जैसे संस्थान खोलने की जो सरकार की पहल थी उसी के तहत यहाँ पर नागपुर के अलावा All right, so Prime Minister there in Nagpur earlier today, in fact, Prime Minister also flagged the Vande Bharat Express. And currently, Prime Minister there all set to launch the 701-kilometer long expressway that would connect Nagpur and Shirdi. Samruddhi Mahamarg project, which is the dream project of the Deputy Chief Minister of Maharashtra. Slipping into a very short break, but lots coming up on the other side. We'll get you the latest from Himachal Pradesh, where chosen by Congress as HP Chief Minister Sukhwinder Sukhu set to take oath today along with Mukesh Agnihotra. झाके रे झाके झरोखे से झाके हैरत से आंखें अपनी सी दुनिया नई रंगी लागे ख्यालों की खिड़की से मन कूदे भागे झाके रे झाके झरोखे से झाके देख के दम है छोटे बड़े सारे झाके रे झाके हर कोई ताके तरक्की को टुक टुक हर कोई ताके झाके रे झाके Reimagineering brighter futures with smarter steels. ArcelorMittal, Nippon Steel India. Smarter steels, brighter futures. Heavy security is being deployed to make sure that no untoward situation takes place. हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस जीते उनके लिए बहुत मायने रखेगा, क्योंकि 2018 से लेकर अब तक ये पहली कांग्रेस जीत होगी 2018 के बाद। जिस तरीके से नंबर्स एक के बाद एक और बढ़ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, हिमाचल में एक फाइट अभी भी बनी हुई है। क्लियर एंड ओपन लीड आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं। आम आदमी पार्टी इज नोवेयर इन द कॉन्टेस्ट इन गुजरात। In the recently concluded meeting, which was hosted by the Indian NSA, Mr. Ajit Doval, he'd invited NSAs from 5 Central Asian countries and they had come to New Delhi to attend. Taliban has welcomed it. And this has led to a lot of heartburn in Pakistan. But the fact of the matter is that Taliban says that, this is a welcome step by India. And Taliban says that it wants to assure the world that its land will not be used for terror activities against the neighbors. तो कांग्रेस के गढ़ में 18 कांग्रेस के जो सुपर फोर्ट्रेस में 12 में तो बीजेपी आगे है।
आज जब रुझान आएंगे और नतीजों में जब तब्दील होंगे तब तक यही चलता रहेगा। तो बहुत ही नेक टू नेक फाइट है। गुजरात में इतिहास रचा जा रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता देश के लिए काम किया, प्रदेश के लिए काम किया, उसका आशीर्वाद है। तो कुल मिलाकर यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दौर से ही जो है बढ़त बनाई है। Heavy security is being deployed to make sure that no untoward situation take place. One person sustained injuries after box full of chemicals exploded in Bada Bazaar area of Nizamabad in Hyderabad. आज हमारे के 100 एल का आया, ब्लास्टिंग हुआ बोल के आया। इमीडिएटली हमारा ब्लू कोट हम लोग आए, रश करे तो इंजर्ड को बात करें। इंजर्ड क्या बोल रहा, मतलब वो एक केमिकल वेस्टेज डब्बा, वो अंदर कुछ केमिकल है तो वो झटकाने के लिए ट्राई करे तो वो ब्लास्ट हो गया बोल के बोल रहा। उसके बारे में वो फायर इंजन को बुलाया, पूरा फोम डलाया, फिर हमारा क्रूज टीम आके वो क्या है, केमिकल है, क्या डब्बा है बोल के पूरे इन्वेस्टिगेशन करते। अब तो इंजर्ड को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिए, वो ट्रीटमेंट हो रहा और मी के बेचते रहता। अब तो उनका प्रेजेंट तो सिचुएशन कूल है, नॉर्मल है। Following which, fire brigades were immediately rushed to the spot. The injured was rushed to the hospital and has been reported to be in a stable condition now. A case has also been launched and a probe is now underway. Bureau Report, Republic TV. Stepping into a very short break for now, but coming up on the other side, we'll get you the latest from Nagpur, where Prime Minister is all set to inaugurate the Samruddhi Mahamarg project. गुजरात में 141 सीटें मिली थी कांग्रेस को, उसके बाद आज 45 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। बिल्कुल 149 ये इतिहास बनने वाली बात है। हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर 20,425 वोट से जीत गए। कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब हुई है, लेकिन साथ साथ मैं एक बात भी कहूंगा, जिस तरीके से गुजरात के अंदर चुनाव लड़ा गया उससे लोकतंत्र कमजोर होता है। हम हारे। Heavy security is being deployed to make sure that no untoward situation take place. हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस जीते उनके लिए बहुत मायने रखेगा, क्योंकि 2018 से लेकर अब तक ये पहली कांग्रेस जीत होगी 2018 के बाद। जिस तरीके से नंबर्स एक के बाद एक और बढ़ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, हिमाचल में एक फाइट अभी भी बनी हुई है। क्लियर एंड ओपन लीड आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं। आम आदमी पार्टी इज नोवेयर इन द कॉन्टेस्ट इन गुजरात। In the recently concluded meeting, which was hosted by the Indian NSA, Mr. Ajit Doval, he'd invited NSAs from 5 Central Asian countries and they had come to New Delhi to attend. Taliban has welcomed it. And this has led to a lot of heartburn in Pakistan. But the fact of the matter is that Taliban says that, this is a welcome step by India. And Taliban says that it wants to assure the world that its land will not be used for terror activities against the neighbors. तो कांग्रेस के गढ़ में 18 कांग्रेस के जो सुपर फोर्ट्रेस में 12 में तो बीजेपी आगे है। आज जब रुझान आएंगे और नतीजों में जब तब्दील होंगे तब तक यही चलता रहेगा। तो बहुत ही नेक टू नेक फाइट है। गुजरात में इतिहास रचा जा रहा है।
मोदी जी की लोकप्रियता देश के लिए काम किया, प्रदेश के लिए काम किया, उसका आशीर्वाद है। तो कुल मिलाकर यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दौर से ही जो है बढ़त बनाई है। Heavy security is being deployed to make sure that no untoward situation takes place. गुजरात में 141 सीटें मिली थी कांग्रेस को, उसके बाद आज 45 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। बिल्कुल 149 ये इतिहास बनने वाली बात है। हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर 20,425 वोट से जीत गए। कांग्रेस पार्टी साथ हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन की भी मांग की है, वो भी पूरी होगी। इसके साथ साथ जो अंडर सी केबल है, जिसके कारण डेटा सेंटर की इकोसिस्टम तैयार होती है, वो पूरा अंडर सी केबल हम इसके माध्यम से ला रहे हैं, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में हम लोग डेटा सेंटर्स तैयार कर पाएंगे। और साथ साथ ट्रांसमिशन की HVDC लाइन भी यहीं पर पड़ेगी, उसका भी कॉरिडोर हमने तैयार किया है। 150 मेगावाट बिजली जनरेशन की भी सोलर में व्यवस्था की है। तो कुल मिलाकर गति शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण यहां पर हमने किया है। और अब आपने जो योजना दी है, इससे उसको हम और समृद्ध करेंगे। मैं इस निमित्त से आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आने वाले दिनों में, क्योंकि आज आपने और गडकरी जी ने और नई सौगात हमको दी है। यहां पर हमारे रेलवे स्टेशन इतने सुंदर हो रहे हैं। अब रेल कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, हाई स्पीड रेल भी होने वाली है। और उसके साथ साथ आपके ही आशीर्वाद से अगले 1 महीने में नागपुर एयरपोर्ट के भी भूमि पूजन के लिए हम आपको बुलाने वाले हैं। तो सारी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी यहां पर होगी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आज 14 जिले हमने JNPT पोर्ट से जोड़े और हमारे मुख्यमंत्री जी गढ़चिरौली और गोंदिया को भी जोड़ने जा रहे हैं। तो पूरा महाराष्ट्र ये पोर्ट लेड डेवलपमेंट का एक नया मॉडल इस महामार्ग के माध्यम से करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं इस समय कुछ लोगों का उल्लेख जानबूझकर करना चाहता हूं। विशेष रूप से इस महामार्ग को बनाते समय हमारे राधेश्याम मोपलवार होंगे, या हमारे मनोज सौनिक होंगे, हमारे प्रवीण परदेसी होंगे, हमारे गायकवाड़ होंगे। मैं जिनके नाम का उल्लेख नहीं कर पाया उनकी माफी मांगता हूं। पर इस टीम ने जो काम किया है वो बहुत जबरदस्त काम इन्होंने किया है और इनके कारण ये महामार्ग हो पाया है। और अब अगले पादान पर नागपुर से गोवा इसी प्रकार का महामार्ग जो मराठवाड़ा, वेस्टर्न महाराष्ट्र और विदर्भ को इंटीग्रेट करेगा, इसकी भी संकल्पना हमने तैयार की है। मैं आपका बहुत विशेष आभार, मेरा समय समाप्त हो चुका है, फिर भी मैं इसलिए मानना चाहता हूं कि आपकी गति लोगों के ध्यान में आनी चाहिए। आज जो 2 प्रोजेक्ट हो रहे हैं, मेट्रो फेज 2 और नाग नदी का जो आज संवर्धन का हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारी पिछली सरकार में हमने ये दोनों प्रोजेक्ट भेजे थे, आपने फास्ट ट्रैक पर रखे थे। कुछ क्वेरीज आई थी, बीच में सरकार बदल गई, 2.5 साल में उन क्वेरीज का जवाब भी पिछली सरकार ने नहीं दिया। और जैसे ही सरकार बदली, हमने क्वेरीज पूरी की। प्रधानमंत्री जी, मैं आपके कार्यालय में गया और आपके कार्यालय में जाकर प्रधानमंत्री कार्यालय को मैंने विनती की, हमने क्वेरीज पूरी की है। आपके कार्यालय ने मात्र 35 दिनों में ये सारे दोनों प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करके कैबिनेट की मान्यता देकर आज उसका भूमि पूजन हो रहा है। ये मोदी सरकार है, ये गति है और ये डबल इंजन सरकार है। अगर डबल इंजन सरकार नहीं बनती तो शायद अगले और कुछ सालों तक क्वेरीज भी सेटिस्फाई नहीं होती और ये कार्यक्रम भी नहीं होते। मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री जी। आपका प्यार नागपुर पर, विदर्भ पर ऐसा ही बना रहे। एम्स जैसी सौगात आपने हमको दी है, वंदे भारत ट्रेन आपने दी है, इन सब के लिए, इन सभी की ओर से मैं आपको बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं।
तो कांग्रेस के गढ़ में 18 कांग्रेस के जो सुपर फोर्ट्रेस में 12 में तो बीजेपी आगे है। आज जब रुझान आएंगे और नतीजों में जब तब्दील होंगे तब तक यही चलता रहेगा। तो बहुत ही नेक टू नेक फाइट है। गुजरात में इतिहास रचा जा रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता देश के लिए काम किया, प्रदेश के लिए काम किया, उसका आशीर्वाद है। तो कुल मिलाकर यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दौर से ही जो है बढ़त बनाई है। गुजरात में 141 सीटें मिली थी कांग्रेस को, उसके बाद आज 45 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। 149 ये इतिहास बनने वाली बात है। हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर 20,425 वोट से जीत गए। कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब हुई है, लेकिन साथ साथ मैं एक बात भी कहूंगा, जिस तरीके से गुजरात के अंदर चुनाव लड़ा गया उससे लोकतंत्र कमजोर होता है। हम हारे। Heavy security is being deployed to make sure that no untoward situation take place. हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस जीते उनके लिए बहुत मायने रखेगा, क्योंकि 2018 से लेकर अब तक ये पहली कांग्रेस जीत होगी 2018 के बाद। जिस तरीके से नंबर्स एक के बाद एक और बढ़ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, हिमाचल में एक फाइट अभी भी बनी हुई है। क्लियर एंड ओपन लीड आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं। आम आदमी पार्टी इज नोवेयर इन द कॉन्टेस्ट इन गुजरात। In the recently concluded meeting, which was hosted by the Indian NSA, Mr. Ajit Doval, he had invited NSAs from 5 Central Asian countries and they had come to New Delhi to attend. और उसी समय मुंबई में 55 उड्डान पुल और देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट MSRDC के द्वारा ही बनाए गए थे। और आज MSRDC ने ये भी काम किया है, इसके लिए मैं निश्चित रूप से MSRDC का, देवेंद्र जी का और एकनाथ जी का हृदय से स्वागत करता हूं। इस काम में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री जी इस बात का जिक्र करते हैं, वो विशेष रूप से अमृत सरोवर का जल संधारण का। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मुझे बहुत खुशी है कि विशेष रूप से ये मार्ग बनाते समय बहुत बड़े प्रमाण पर विशेष रूप से तालाब, नदियां, नालों की खुदाई की गई और अनेक प्रकार से वाटर कंजर्वेशन का काम भी बड़े प्रमाण पर हुआ है। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 600 लाख क्यूबिक मीटर का वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ी, 300 फार्म पॉन्ड्स, 250 नदी नालों का खुलीकरण और 405 तालाब की खुदाई, ये भी काम हमने राष्ट्रीय महामार्ग बनाते समय किया है। मुझे विश्वास है कि हमारे यहाँ अमृत सरोवर में भी बहुत बड़े प्रमाण पर यह काम हुआ है। इसी हाईवे से मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम औरंगाबाद से पुणे तक हाईवे बना रहे हैं और जल्दी ही उसके कार्य का शुभारंभ होगा, जिससे नागपुर से पुणे हम केवल 6 घंटे में पहुंचेंगे, ये मेरा विश्वास है। इसके साथ साथ विशेष रूप से महाराष्ट्र में हम 6 एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। एक सूरत चेन्नई है, जो सूरत से मुंबई में पूना में ट्रैफिक आता है साउथ के तरफ जाने का, अब वो मुंबई और पूना नहीं आएगा। मुंबई को पोल्यूशन प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। और सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर और सोलापुर से बेंगलोर, मैंगलोर, त्रिवेंद्रम, चेन्नई, हैदराबाद, पूरे दक्षिण की तरफ जाएगा। इंदौर से हैदराबाद एक द्रुतगति महामार्ग बन रहा है। हैदराबाद से रायपुर ये मार्ग भी महाराष्ट्र से जाने वाला है।
नागपुर से विजयवाड़ा, पुणे से बेंगलुरु और पुणे से औरंगाबाद। ये करीब महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ के ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में होने वाले हैं। मुझे आज बहुत खुशी है कि ये एम्स प्रधानमंत्री जी की देन है। आज इस एम्स के कारण विदर्भ, मराठवाड़ा और छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत अच्छी वैद्यकीय सुविधाएं मिली है और इसके साथ साथ जो आईएम है उसकी भी बिल्डिंग इतनी सुंदर है कि पूरे देश से इसको देखने के लिए लोग आने लगे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने दोनों नागपुर को देकर हमारे लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी तैयार की है। कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। इसलिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, सपने आपके, लैमिनेट्स हमारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। One man was killed after a massive fire ravaged a shopping mall in Moscow's northwestern outskirts on Friday. Chennai cyclone Mandus had made a landfall around early in the morning today. A lot of damage has happened. 1 or 2 building had collapsed, poles and trees that is also uprooted and fallen down. 8-year-old boy Tanmay has now passed away. He was stuck at 400 feet deep borewell in the Manvi village of Madhya Pradesh. गुजरात में 141 सीटें मिली थी कांग्रेस को, उसके बाद आज 45 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। 149 ये इतिहास बनने वाली बात है। हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर 20,425 वोट से जीत गए। कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब हुई है, लेकिन साथ साथ मैं एक बात भी कहूंगा, जिस तरीके से गुजरात के अंदर चुनाव लड़ा गया उससे लोकतंत्र कमजोर होता है। हम हारे। Heavy security is being deployed to make sure that no untoward situation take place. In the recently concluded meeting, which was hosted by the Indian NSA, Mr. Ajit Doval, he'd invited NSAs from 5 Central Asian countries and they had come to New Delhi to attend. Taliban has welcomed it. And this has led to a lot of heartburn in Pakistan. But the fact of the matter is that Taliban says that, this is a welcome step by India. And Taliban says that it wants to assure the world that its land will not be used for terror activities against the neighbors. Heavy security is being deployed to make sure माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी से मैं दरख्वास्त करती हूं आज के इस अहम अवसर पर वो सभी को संबोधित करें। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग या उद्घाटन प्रसंगी आपल्या देशाचे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांचं मी महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो। मंचावर उपस्थित राज्यपाल महोदय भगत सिंह कोश्यारी जी, नितीन गडकरी साहेब, उपमुख्यमंत्री आमचे लाडके देवेंद्र फडणवीस जी, रावसाहेब दानवे जी, Prime Minister Narendra Modi, Nitin Gadkari, Devendra Fadnavis, and the other dignitaries who have been present in this inauguration of Samruddhi Mahamarg. बांधव भगिनी आणि पत्रकार मित्र, I welcome everyone on this mega event which has been happening in हृदय सम्राट Nagpur. बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचं पहिल्या टप्प्याचं उद्घाटन झालंय।
Today is the आणि inauguration आज of खरं the म्हणजे first phase of मेट्रो रेलच्या दुसऱ्या टप्प्याचंही भूमिपूजन झालंय. आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांच्या शुभ हस्ते आणखी काही भूमिपूजन होत आहे. समृद्धी महामार्गाचा हा क्षण उद्घाटनाचा माझ्यासाठी केवळ स्वप्नपूर्तीचा नाही तर आनंदाचाही आहे, अभिमानाचाही आहे आणि गर्वाचाही आहे. खरं म्हणजे अभिमान यासाठी आहे की या कार्यक्रमाला, या उद्घाटनाला या देशाचे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी साहेब उपस्थित झाले याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे, आपल्या सगळ्यांना अभिमान आहे. आणि आनंद याचा आहे की देवेंद्रजींनी जेव्हा मुख्यमंत्री होते आणि त्यावेळेस माझ्यावर विश्वास दाखवला आणि त्यांच्या संकल्पनेतून मी काम केलं आणि आता मी मुख्यमंत्री असताना आणि आम्ही दोघंही एकत्र असताना आणि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांच्या हस्ते याचं लोकार्पण होतंय, याचा आनंद खूप मोठा आहे. आणि त्याचबरोबर या महामार्गाला हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव आम्ही दिलंय, याचाही खूप मोठा आनंद आहे. आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने आज भाग्यशाली समजतो, भाग्यवान समजतो स्वतःला. देवेंद्रजींनी आम्ही सुरू केला हा महामार्ग आणि आज आमच्याच काळामध्ये कारकिर्दीमध्ये याचं लोकार्पण होतंय. याच्यामध्ये खूप अडचणी आल्या, देवेंद्रजींनी सांगितलं, परंतु लँड ऍक्विजिशन मध्ये विरोध झाला, विरोध करायला लावला, बैठका झाल्या, जमीन देऊ नये म्हणून, हा प्रकल्प होऊ नये म्हणून अनेक लोकांनी प्रयत्न केले. मी आणि देवेंद्रजींनी त्याच्यावर अतिशय कुशलपूर्वक सगळ्यांना सोबत घेऊन, आमचे मोपलवार आहेत, गायकवाड आहेत, सोनिक आहेत, परदेशी आहेत, या सगळे सुरुवातीपासून आजही आज ते समोर बसलेले आहेत. आजच्या लोकार्पणात असा इतिहासात कधी दुर्मिळ असतं की सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत हे सर्व लोक सोबत होते आणि शेतकऱ्यांना विश्वास दिला. त्यांना वाटलं आमचे पैसे भेटतील की नाही, परंतु आम्ही RTGSच्या माध्यमातून त्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले, त्यांच्यामध्ये एक विश्वास निर्माण केला. अनेक अडचणी निर्माण झाल्या, परंतु त्या सगळ्या अडचणी आम्ही विश्वास निर्माण केला, याला विशेष प्रकल्पाचा दर्जा दिला. आणि त्यामुळे लँड ॲक्विजिशन जे आहे, सगळ्यात मोठा टप्पा असतो जमीन अधिग्रहण, ते आम्ही रेकॉर्ड टाइम मध्ये केलं. सगळ्या शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन. When it comes to the land acquisition, our officer has done this in a very short time, in a record time. आम्ही सर्व Even काळजी taking the घेतली care of the people who हा इको फ्रेंडली live रस्ता है. there. यहाँ पर 11 लाख पेड़ लगा रहे हैं. कम से कम कमीत कमी 35 लाख झाडं आपण लावतोय. हा पूर्ण ग्रीन कॉरिडॉर आहे. 250 मेगावॅट किंवा त्याहीपेक्षा जास्तीची मेगावॅट सोलर एनर्जी आपण जनरेट करतोय. 1200 पेक्षा जास्ती तलाव शेततळी आपण शेतकऱ्यांसाठी निर्माण केली. खास करून वन्य प्राणी जे आहेत, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वन्य प्राणी जो है उनके लिए भी अंडरपास और ओवरपास हमने की, क्योंकि वन्य जीव जो है उनका लाइफ डिस्टर्ब न हो, उनको जंगल का फील आवे, इसके लिए कोई कसर हमने छोड़ी नहीं. सभी लोगों का ध्यान रखते हुए ये समृद्धि महामार्ग आज इस कगार पर पहुंचा है. शिरडी तक हुआ है, आगे 1 साल के अंदर 8-10 महीने में मुंबई तक ये समृद्धि महामार्ग पहुंचेगा. एक सिर्फ हाईवे नहीं है, एक गेम चेंजर प्रकल्प है. ये हमारे महाराष्ट्र की समृद्धि जो हाईवे है, ये महाराष्ट्र की भाग्य रेखा बदलने वाला ये समृद्ध हाईवे कहलाएगा और ये एक महाराष्ट्र की नई लाइफलाइन कहलाएगा. ये आज इसके सिर्फ हाईवे नहीं, इसके दोनों तरफ में कई हम नवनगर बनाना चाहते हैं और वहां कई इंडस्ट्री आएगी, वहां पर
इंडस्ट्रियल हब होगा, एजुकेशन हब होगा, आईटी हब होगा, प्रोसेसिंग यूनिट आएंगे, लॉजिस्टिक हब होगा और ये पूरी तरह लाखों लोगों को रोजगार देने वाला समृद्धि हाईवे कहलाएगा। इसका हमें खूब बहुत ही आनंद है। 701 किलोमीटर का देश में सबसे लंबाई वाला बहुत ही वेगवान ये महामार्ग है। हमने उस दिन गाड़ी चलाई, मैंने नहीं, देवेंद्र जी ने, और रोड पेट का पानी भी नहीं हिल रहा था। ऐसा ये रोड बनाया, वर्ल्ड क्लास रोड बनाया। जैसे जर्मनी ऑटोबान का उदाहरण लोग देते हैं, लेकिन उससे कई गुना अच्छा ये रास्ता, ये समृद्धि साबित होगा। इसका हमें बहुत ही आनंद है। ये विकास की गंगा बहाने वाला ये समृद्धि हाईवे होगा। इसका सभी लोगों को, किसानों को फायदा होगा। और ये समृद्धि हाईवे महाराष्ट्र में 10 जिलों को डायरेक्ट, 26 तालुका, 392 गांव डायरेक्ट जोड़ने वाला है और 14 जिले को कनेक्टर के माध्यम से जोड़ने वाला है। यह महाराष्ट्र के 24 जिलों को इंपैक्ट देने वाला, फायदा देने वाला समृद्धि हाईवे है। और मैंने कहा कि पर्यावरण का भी पूरी तरह ध्यान रखते हुए हम लोगों ने ये काम किया है। और यहाँ के किसान जो है, यहाँ के किसान, शेतकरी, भूमिपुत्र, वो सभी लोगों को बिल्कुल उनके कंसेंट से हम लोगों ने जमीन अधिग्रहित की है। उनके माध्यम से ही हम लोगों ने ये रास्ता बनाया है। और इसलिए ये गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, नांदेड़, मतलब तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश को ये इंटर स्टेट कनेक्टिविटी देने वाला ये महामार्ग है। और इसलिए मैं सभी जिन जिन लोगों ने सहयोग किया है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये बहुत कठिन काम था, बहुत चैलेंजिंग काम था और उसे हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारी सब टीम ने ये काम किया है। इसलिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा। और महाराष्ट्र में जो बुलेट ट्रेन है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, जैसे आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उससे भी हम लोग गति दे रहे, उसे आगे बढ़ा रहे। ये हमारे महाराष्ट्र के लिए, प्रगति के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। और इसलिए जैसे देवेंद्र जी ने कहा, डबल इंजन सरकार, हाँ, हम लोगों ने जब सरकार बनाई, ये सर्वसामान्य लोगों की सरकार, आम लोगों की सरकार, सभी लोगों को लगता है ये हमारी सरकार है, ये लोग जो बैठे हैं ये हमारे हैं। ये आपनेपन की जो भावना निर्माण हुई है और आपका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त है। आपने पहले दिन हमें कहा था कि शिंदे जी, देवेंद्र जी, आप राज्य का विकास करो, जनता के हित के काम करो। केंद्र सरकार पूरी तरह आपके साथ ताकत से खड़ी है और हमें विश्वास है कि आपने रोड के लिए, रेलवे के लिए, नगर विकास के लिए लाखों करोड़ रुपया, 2 लाख करोड़ रुपया की प्रावधान भी आपने किया है। आगे भी हम आपकी मदद चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं। हमारे राज्य में इंडस्ट्री आवे, बड़े बड़े उद्योग आवे, लोगों, हजारों लाखों लोगों को काम मिले, यही हमारी कामना है। और हमें विश्वास है कि आप हमें पूरा सहयोग कर रहे हैं और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और मेहनत करने वाले लोग हैं, दोनों भी हमारे मंत्री लोग सब मेहनत करते हैं। हम लोग मेहनत करेंगे, आप सहयोग, आशीर्वाद रखिए, ये राज्य को हम आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर G20 की भी तैयारी हमारे महाराष्ट्र में बहुत जोर शोर से शुरू है। हमें पता है G20 का क्या महत्व है। G20 का अध्यक्षता पद मिलना ये हमारे देशवासियों के लिए गौरव की बात है। और आपके नेतृत्व में ये G20 ये देश में आयोजन होगा। हमारे सभी राज्यों को, मुंबई को, नागपुर को, इस राज्य के पूना है, संभाजीनगर है, हमारा ब्रांडिंग, हमारे काम, हमारा जो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है, हमारे इंफ्रा प्रोजेक्ट है और हमारा यहाँ ब्रांडिंग करने का, शोकेसिंग करने का भी मौका मिला है। ये केवल आपके वजह से मिला है, क्योंकि पिछले 7-8 साल में जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को आपने इतने ऊंचाई पर रखने की कोशिश की है, इसीलिए ये
मुमकिन हुआ है। और मैं कहूंगा, मैं हमेशा कहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन करने का काम किया है। पूरे दुनिया में भारत का नाम आज रोशन है। आप प्रधानमंत्री, आपके वजह से हम जानते हैं। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, आगे हमारे महाराष्ट्र के ऊपर आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। हम लोग महाराष्ट्र को सर्वांग सुंदर करना चाहते हैं, महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना चाहते। हर एक घटक को हमारे सभी लोग, किसान हो, कामगार हो, कष्टकरी हो, हमारी माता बहनें हो, विद्यार्थी हो, किया है चाहते, इसलिए हम आपका सहयोग चाहते हैं। और आप यहां पर आज आए, ये समृद्धि हाईवे का उद्घाटन किया है, ये हमारा सौभाग्य है। इसलिए मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। देवी और सज्जनों, बड़े गौरव की बात है, नागपुर मेट्रो के प्रथम चरण का लोकार्पण तथा नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कुछ समय पहले किया गया। और अब नागपुर मेट्रो फेज 1 तथा नागपुर मेट्रो फेज 2 के बारे में एक शॉर्ट फिल्म चलाई जाएगी। मैं आपका ध्यान स्क्रीन की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। आज भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ देश के 27 शहरों में मेट्रो का ऑपरेशन एवं निर्माण का कार्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस पहल से पिछले 8 वर्षों में तकरीबन 650 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क ऑपरेशनल हुआ है। वर्ष 2014 में जहां मेट्रो का ऑपरेशनल नेटवर्क 248 किलोमीटर था, आज बढ़कर 824 किलोमीटर हो गया है तथा 1010 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क अभी निर्माणाधीन है। भारत आज मेट्रो संचालन में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। आज भारत न केवल मेट्रो कोच का स्वयं निर्माण कर रहा है, बल्कि अन्य विकसित देशों में इनका निर्यात भी हो रहा है, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल रहा है और युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं। देश की तरक्की के लिए जरूरी है विकास की तेज रफ्तार। इसी विजन के साथ 21 अगस्त 2014 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागपुर मेट्रो के फेज 1 की आधारशिला रखी गई थी। आज भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर नागपुर वासियों के लिए मेट्रो के 13.5 किलोमीटर का विस्तार कर रही है, जिससे नागपुर मेट्रो फेज 1 के संपूर्ण 40 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क आज पूरा हो गया है। जब भी आपका कार्य पूर्ण होगा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। नागपुर की जनता के आशीर्वाद खुद आकर के ले लूंगा। विश्व स्तरीय सुविधाएं, आधुनिक डिजाइन और उत्कृष्ट कला संरचना से सुसज्जित इस बेहतरीन परिवहन प्रणाली में प्रतिदिन 75,000 नागपुर वासी यात्रा कर रहे हैं। ये मेट्रो नेटवर्क शहर के व्यावसायिक, रिहायशी, शैक्षणिक संस्थानों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आदि को जोड़ेगा। इससे शहर में सड़कों पर भीड़ में कमी आएगी, साथ ही प्रदूषण की समस्या से निजात भी मिलेगी। वर्धा रोड पर स्थित 3.14 किलोमीटर विश्व के सबसे लंबे डबल डेकर वायाडक्ट को गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सम्मानित किया है। नागपुर मेट्रो के आगामी द्वितीय चरण में 43.8 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा, जिसमें 32 अतिरिक्त मेट्रो स्टेशन होंगे, जिसकी अनुमानित लागत 6,708 करोड़ है। ऑरेंज लाइन को खापरी से बूटी बोरी इंडस्ट्रियल एस्टेट और ऑटोमोटिव स्क्वायर से कन्हान तक बढ़ाया जाएगा। इसी तरह एक्वा लाइन को प्रजापति नगर से ट्रांसपोर्ट नगर और लोकमान्य नगर से हिंगना इंडस्ट्रियल टाउन तक बढ़ाया जाएगा, जिससे 6 लाख यात्री लाभान्वित होंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा नागपुर मेट्रो फेज 1 के संपूर्ण परियोजना का लोकार्पण और फेज 2 के शिलान्यास के शुभ अवसर पर सभी नागपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देवी और सज्जनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कुछ समय पहले किया गया और अब
हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के बारे में एक शॉर्ट फिल्म चलाई जाएगी। मैं आपका ध्यान फिर से स्क्रीन की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। महाराष्ट्र सरकार के तत्वावधान में MSRDC हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के प्रथम चरण के उद्घाटन के साथ पूरे राज्य के 36 जिलों को जोड़ने की संकल्पना लिए अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक दूरदर्शी राजनेता जो नए भारत की कल्पना के विकास हेतु राजमार्गों के निर्माण के लिए कटिबद्ध है। महाराष्ट्र का उज्जवल भविष्य सुदृढ़ राजमार्गों के द्वारा किसानों की समृद्धि में निहित है। इस दृष्टिकोण को हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी के कुशल नेतृत्व में MSRDC ने महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के निर्माण के साथ प्रगतिशील महाराष्ट्र को पुनः परिभाषित किया है। ये महाराष्ट्र सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के दृढ़ विश्वास का प्रतीक है, जिन्होंने पहली बार इस परियोजना की कल्पना की थी। ये महामार्ग महाराष्ट्र के 10 प्रमुख जिलों को पूरी तरह जोड़ता है तथा राज्य के अन्य 14 जिलों को अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ेगा। 701 किलोमीटर लंबा एक्सेस नियंत्रित कॉरिडोर 6 लेन एक्सप्रेसवे के साथ महाराष्ट्र में कृषि और औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए समर्पित है। प्रस्तावित 25 इंटरचेंज पूरे महाराष्ट्र के 26 तालुकाओं को जोड़ता है, जिससे राज्य की 36% आबादी सीधे लाभान्वित होगी। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग नागपुर मुंबई यात्रा के समय को 18 घंटे से घटाकर 8 घंटे और मुंबई औरंगाबाद के बीच के अंतर को 4 घंटे तक कम कर देगा। नागपुर शिरडी को जोड़ने वाले ये एक्सप्रेसवे लोगों के यात्रा के समय को 13 घंटे से घटाकर 5 घंटे तक कम कर देगा। ये महामार्ग समृद्धि, प्रचुरता और सफलता का अग्रदूत है, जो कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाने, रोजगार के अवसर पैदा करने, क्षेत्रीय बाजार का तेजी से विकास करने के लिए इसकी रचना की गई है। ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के लिए किया गया अलग प्रावधान इस एक्सप्रेसवे को डिजिटल रेडी बना देगा। एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर कुल 11,31,000 पेड़ और लगभग 22,34,000 से अधिक पौधे लगाकर हरित भूनिर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। ध्वनि अवरोधों के साथ वन्य जीव संरक्षण के लिए कुल 100 अंडरपास और ओवरपास का निर्माण किया गया है। प्रस्तावित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इस ऊर्जा कुशल कॉरिडोर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसे सौर ऊर्जा पहल के माध्यम से 138.47 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का प्रस्ताव कर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देना, 15 यातायात सहायता चौकियों की स्थापना, बचाव और घटना नियंत्रण के लिए 21 त्वरित प्रतिक्रिया वाहनों की उपलब्धता के साथ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ 21 एम्बुलेंस भी तैनात रहेंगी। यात्रियों से फास्टैग सक्षम प्लाजा पर शुल्क लिया जाएगा, जो केवल महामार्ग से तय की गई दूरी के आधार पर होगा। यातायात का नियंत्रण और एक्सप्रेसवे की निगरानी के लिए एक स्मार्ट यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है। हम सलाम करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री के जज्बे को और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ाए हर कदम को। इसी संकल्पना में समृद्धि महामार्ग बनेगा महाराष्ट्र की पहचान। आइए साक्षात्कार करें समृद्ध महाराष्ट्र का। और अब नागपुर रेलवे स्टेशन तथा अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास 12,000 HP लोकोमोटिव्स के रखरखाव के लिए सरकारी रखरखाव डेपो अजनी का लोकार्पण, नागपुर इटारसी तीसरी लाइन परियोजना के 50 किलोमीटर लंबी कोहली नारखेर लाइन का लोकार्पण करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई पट्टिका का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। तालियों की गूंज के साथ हम इस क्षण को सजाएंगे।
और अब वंदे भारत तथा भारतीय रेल की 4 परियोजनाओं के बारे में एक शॉर्ट फिल्म चलाई जाएगी। मैं आपका ध्यान एक बार फिर स्क्रीन की तरफ आकर्षित करना चाहूंगी। नए भारत के लिए आधुनिक पंक्ति, हाई स्पीड ट्रेन, मल्टी मॉडल डिपो और यात्रियों के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लाती भारतीय रेल ने पिछले 8 साल में देश की प्रगति को नई शक्ति दी है। भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे सबसे तेज, सबसे आधुनिक, सबसे आरामदायक सफर की सौगात लेकर नागपुर पहुंची है। आज नागपुर को मिला है देश की 6ठी वंदे भारत ट्रेन का उपहार। वंदे भारत एक्सप्रेस से नागपुर और बिलासपुर का आपका सफर और भी कम समय में पूरा होगा। मेक इन इंडिया की ये बेमिसाल पेशकश महाराष्ट्र को छत्तीसगढ़ से कनेक्ट करेगी, क्षेत्र में व्यापार और विकास के लिए महत्वपूर्ण बिजनेस कॉरिडोर देगी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा महाराष्ट्र को 1500 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। नागपुर के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के भव्य पुनर्निर्माण का शिलान्यास किया जा रहा है, जहां होगा सुरक्षित, दिव्यांग सुलभ और शानदार वैश्विक सुविधाओं से युक्त प्रांगण का निर्माण। साथ ही अजनी स्टेशन के पुनर्निर्माण का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है। यहां आगमन और प्रस्थान के लिए अलग अलग व्यवस्था, अत्याधुनिक सुविधाएं, सुरक्षा और सुलभ साइनेजेस रहेंगे उपलब्ध। देश के व्यस्ततम रेल मार्गों में से एक नागपुर इटारसी के मध्य बन रही तीसरी रेल लाइन का एक भाग देश को समर्पित हो रहा है। ये तीसरी लाइन मालवाहक और यात्री गाड़ियों के व्यस्ततम ट्रैफिक को संभालने में सहायक होगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र को मिल रहा है मेक इन इंडिया के तहत अजनी में बना लोकोमोटिव मेंटेनेंस डिपो, जहां 12,000 HP के इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव के रखरखाव की बेहतर व्यवस्था के साथ हम बढ़ेंगे एक कदम और आगे। दूरियां कम करती, अर्थव्यवस्था को मजबूती देती, विकास का वाहक बनती भारतीय रेल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र विजन से आधुनिकता और सेवा के नए आयाम स्थापित कर रही है। और अब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET सिपेट चंद्रपुर के अंतर्गत सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट CSTS का उद्घाटन करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई-पट्टिका का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। धन्यवाद। वाकई यादगार पल हम सभी के लिए। और अब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET सिपेट चंद्रपुर के अंतर्गत सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट CSTS के बारे में एक शॉर्ट फिल्म चलाई जाएगी। मैं आपका ध्यान स्क्रीन की ओर आकर्षित करूंगी। आजादी के अमृतकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक और यशस्वी नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत का संकल्प तेजी से हो रहा है साकार। देश के सभी इंडस्ट्री सेक्टर को देश में से ही रॉ मटेरियल से लेकर कुशल लेबर मिले, ऐसी व्यवस्थाएं माननीय मोदी जी ने की है। गत 8 वर्षों में उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स एवं केमिकल क्षेत्र को नई ऊंचाइयां दिलाई है और इसी दिशा में चंद्रपुर में कार्यरत हुआ सिपेट संस्था का सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट CSTS
भारतवर्ष में सिपेट के 46 केंद्र पेट्रोकेमिकल्स एवं प्लास्टिक मोल्ड मेकिंग के क्षेत्र में शिक्षण के साथ इंडस्ट्री को उत्तम टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं। चंद्रपुर के CSTS को भारत सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त सहयोग से 15 एकड़ क्षेत्र में करीब 51 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं एवं मशीनरी से सज्जित यह सेंटर विद्यार्थियों को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल ज्ञान देगा और प्रतिवर्ष 1500 युवाओं को मिला शिक्षण महाराष्ट्र के प्लास्टिक उद्योगों को तकनीकी सेवाओं के साथ श्रम शक्ति प्रदान करेगा। CSTS से पढ़े युवाओं को प्लेसमेंट के साथ खुद के बिजनेस करने तक की सारी चुनौतियों में सिपेट अपना सहयोग देगी। CSTS के स्थायी परिसर का आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हो रहा यह लोकार्पण चंद्रपुर एवं महाराष्ट्र के प्लास्टिक उद्योगों में विकास के अध्याय का प्रारंभ करेगा। देवी और सज्जनों, एम्स नागपुर का राष्ट्र के नाम समर्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कुछ समय पहले किया गया और अब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ NIO नागपुर का शिलान्यास सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज चंद्रपुर का उद्घाटन करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई पट्टिका का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। धन्यवाद। सचमुच एक अविस्मरणीय क्षण। और अब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नागपुर तथा अन्य स्वास्थ्य परियोजनाओं के बारे में एक शॉर्ट फिल्म चलाई जाएगी। मैं आपका ध्यान फिर एक बार स्क्रीन की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है और देश के हर निवासी को सस्ती, सुगम और उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मिले। यही उद्देश्य है हमारे दूरदर्शी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। केंद्र का प्रयास है कि गरीब और मध्यम वर्ग का इलाज उस पर खर्च कम से कम हो, ये इलाज भी बेहतर मिले और इसके लिए उसको दूर तक जाना भी न पड़े। देश के सुदूर इलाकों तक जन जन को मुफ्त उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए शुरू की गई कई योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PM अभीम जन औषधि केंद्र, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, कोरोना महामारी का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया गया। देश में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है और मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 648 हो गई है। इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा देशवासियों को समर्पित किया जा रहा है एम्स नागपुर, जिसका शिलान्यास अप्रैल 2017 में और सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फॉर हीमोग्लोबिनोपैथीज, जिसका शिलान्यास फरवरी 2019 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ही किया गया था। आज ये निर्धारित समय सीमा में देशवासियों को अपनी उत्कृष्ट सेवा देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। 150 एकड़ में फैले एम्स नागपुर का निर्माण 1577 करोड़ रुपए की लागत से हुआ और इस समय 18 स्पेशलिटी सेवाएं और 14 सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के साथ साथ एम्स नागपुर में आधुनिकतम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 4 एकड़ में फैले सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट हीमोग्लोबिनोपैथीज के क्षेत्र में शोध, नियंत्रण, उत्तम मानव संसाधन और जांच के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा और इसी के साथ ही देश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में भविष्य में उभरने वाली चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ नागपुर का भी शिलान्यास आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। ये केंद्र मौजूदा और भविष्य में आने वाले रोगों के लिए निगरानी और अनुसंधान क्षमता का निर्माण करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत के विजन को साकार करने की दिशा में उठाए गए ये कदम स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे। और अब नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अंतर्गत नाग नदी प्रदूषण उपशमन परियोजना का शिलान्यास करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई पट्टिका का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। धन्यवाद। एनएमसी अंतर्गत नाग नदी प्रदूषण उपशमन परियोजना के बारे में एक शॉर्ट फिल्म चलाई जाएगी। मैं आपका ध्यान फिर से एक बार स्क्रीन की तरफ आकर्षित करती हूं। नदियों से ही हमारे देश की पहचान बनती है। नदी को हम मां के रूप में जानते हैं, देखते हैं, जीते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि नदियां हमारे लिए एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि एक जीवंत इकाई है। स्वच्छ भारत मिशन हो या वेस्ट टू वेल्थ से जुड़े कार्यक्रम, अमृत मिशन के तहत शहरों में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण हो, पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे। यूं तो नागपुर शहर विभिन्न चीजों और ऐतिहासिक स्थानों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन नाग नदी नागपुर शहर की खास पहचान है। कभी नाग नदी न केवल शहर की शान थी, बल्कि नागरिकों की जीवनदायिनी भी थी। दुर्भाग्य से शहर के कई हिस्सों में ऐतिहासिक नाग नदी की दुर्दशा हो गई, लेकिन अब ये नहीं होगा। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अनुमोदित नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना को NRCD द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। नागपुर महानगर निगम द्वारा इस परियोजना को पूर्ण किया जा रहा है। इस परियोजना का लक्ष्य है नाग नदी और उसके जल की गुणवत्ता में सुधार करना, सहायक नदियों के प्रदूषण भार को कम करना और नाग नदी को सुंदर बनाना। लगभग 1927 करोड़ रुपए की लागत की इस महत्वपूर्ण परियोजना के माध्यम से शहर के उत्तरी क्षेत्रों से सीवेज के संग्रह के लिए 247.9 किलोमीटर कुल लंबाई के और मध्य क्षेत्र के लिए 211.60 किलोमीटर लंबाई के नए सीवर बनाए जाएंगे। पुराने सीवर का प्रतिस्थापन किया जाएगा। 7 नए पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके माध्यम से लगभग 1,32,000 घरों को नए सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। नाग नदी फिर से अविरल होगी, खिलखिलाकर बहने लगेगी। शहर अधिक सुंदर और स्वच्छ होगा। इस महत्वाकांक्षी उपक्रम का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। इस योजना के लिए हम सभी नागपुर वासी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सदा आभारी रहेंगे। शहर की पहचान नाग नदी को सुंदर बनाने में हम सब के प्रयास की भूमिका अहम होगी। नागरिकों के लिए सभी परियोजनाएं लाभदायी साबित होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। देवी और सज्जनों, राष्ट्र की उन्नति के लिए दिन रात एक करने वाले, देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने वाले विकास पुरुष भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करती हूं कि आज के इस अत्यंत आनंद के अवसर पर अपने बहुमूल्य विचारों की सौगात से हमें उपकृत करें। मंच पर विराजमान महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान भगत सिंह जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, इसी धरती के संतान और महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयत्नरत श्री देवेंद्र जी, नितिन जी, राव साहब दानवे, डॉक्टर भारती ताई और विशाल संख्या में पधारे हुए नागपुर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
आज संकष्टी चतुर्थी आहे. कोणतेही शुभकाम करताना आपण प्रथम गणेश पूजन करतो. आज नागपुरात आहोत तर टेकडीच्या गणपती बाप्पाला माझे वंदन. ग्यारह दिसंबर का आज का दिवस संकष्टी चतुर्थी का पवित्र दिवस है. आज महाराष्ट्र के विकास के लिए 11 सितारों के महानक्षत्र का उदय हो रहा है. पहला सितारा हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, जो अब नागपुर और शिरडी के लिए तैयार हो चुका है. दूसरा सितारा नागपुर एम्स है, जिसका लाभ विदर्भ के एक बड़े क्षेत्र के लोगों को होगा. तीसरा सितारा नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ की स्थापना है. चौथा सितारा रक्त संबंधी रोगों की रोकथाम के लिए चंद्रपुर में बना आईसीएमआर का रिसर्च सेंटर है. पांचवा सितारा पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के लिए बेहद अहम सीपेट चंद्रपुर की स्थापना है. छठा सितारा नागपुर में नाग नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू हुआ प्रोजेक्ट. सातवां सितारा नागपुर में मेट्रो फेज 1 का लोकार्पण और दूसरे फेज का शिलान्यास है. आठवां सितारा नागपुर से बिलासपुर के बीच आज प्रारंभ हुई वंदे भारत एक्सप्रेस है. नवा सितारा नागपुर और अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की परियोजना है. 10वां सितारा अजनी में 12,000 हॉर्स पावर के रेल इंजन के मेंटेनेंस डिपो का लोकार्पण है. 11वां सितारा नागपुर इटारसी लाइन के कोली नरकेड रूट का लोकार्पण है. 11 सितारों का यह महानक्षत्र महाराष्ट्र के विकास को नई दिशा देगा, नई ऊर्जा देगा. आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव में 75,000 करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों के लिए महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत बधाई. साथियों, आज का ये आयोजन इस बात का भी प्रमाण है कि डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में कितनी तेज गति से काम कर रही है. समृद्धि महामार्ग से नागपुर और मुंबई के बीच दूरी तो कम होगी ही, ये महाराष्ट्र के 24 जिलों को आधुनिक कनेक्टिविटी से जोड़ रहा है.
इससे खेती किसानी को, आस्था के विभिन्न स्थलों में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को, उद्योगों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं। साथियों, आज के दिन की एक और विशेषता है, आज जिन योजनाओं का लोकार्पण हुआ है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का होलिस्टिक विजन दिखता है। एम्स एक अपने आप में अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और समृद्धि महामार्ग दूसरी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी तरह वंदे भारत एक्सप्रेस और नागपुर मेट्रो दोनों ही एक अलग प्रकार का कैरेक्टर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेकिन ये सब एक बुके में, एक गुलदस्ते में अलग अलग फूलों की तरह जिससे निकलकर विकास की खुशबू जन जन तक पहुंचेगी। विकास के इस गुलदस्ते में बीते 8 वर्षों की मेहनत से तैयार विशाल बगीचे का प्रतिबिंब भी है। चाहे बात सामान्य मानवी के लिए हेल्थ केयर की हो या फिर वेल्थ क्रिएशन की हो, चाहे बात किसान को सशक्त करने की हो या जल संरक्षण की हो, आज पहली बार देश में ऐसी सरकार है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मानवीय स्वरूप दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा ह्यूमन टच जो आज हर किसी के जीवन को स्पर्श कर रहा है। हर गरीब को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान भारत योजना हमारे सोशल इंफ्रा का उदाहरण है। काशी, केदारनाथ, उज्जैन से लेकर पंढरपुर तक हमारे आस्था स्थलों का विकास हमारे कल्चरल इंफ्रा का उदाहरण है। 45 करोड़ से ज्यादा गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने वाली जनधन योजना हमारे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है। नागपुर एम्स जैसे आधुनिक अस्पताल खोलने का अभियान, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का अभियान हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है। और इन सब में जो बात कॉमन है वो है मानवीय संवेदनाओं का तत्व, ह्यूमन टच, संवेदनशीलता। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम सिर्फ निर्जीव सड़कों और फ्लाईओवर तक नहीं समेट सकते, इसका विस्तार कहीं ज्यादा बड़ा है। और साथियों, जब इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में संवेदना नहीं होती, उसका मानवीय स्वरूप नहीं होता, सिर्फ ईंट, पत्थर, सीमेंट, चूना, लोहा दिखता है, तब उसका नुकसान देश की जनता को उठाना पड़ता है, सामान्य मानवी को उठाना पड़ता है। मैं आपको गोसी खुर्द डैम का उदाहरण देना चाहता हूं। 30-35 साल पहले इस डैम की नींव रखी गई थी और उस समय उसका अनुमानित खर्च 400 करोड़ रुपए के आसपास था।
लेकिन बरसों तक संवेदनाहीन कार्यशैली के कारण बरसों तक वो डैम पूरा नहीं हो पाया। अब डैम का अनुमानित खर्च 400 करोड़ से बढ़कर के 18,000 करोड़ रुपए हो गया। 2017 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद इस डैम का काम तेज हुआ है, हर समस्या को सुलझाया गया है। मुझे संतोष है कि इस वर्ष ये डैम पूरा भर पाया है। आप कल्पना कर सकते हैं इसके लिए 3 दशक से ज्यादा लगे, तब जाकर इसका लाभ गांव को, किसान को मिलने लगा। भाइयों और बहनों, आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है भारत की सामूहिक ताकत। विकसित भारत के निर्माण का मंत्र है राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास। बीते दशकों का हमारा ये अनुभव रहा है कि जब हम विकास को सीमित रखते हैं तो अवसर भी सीमित हो ही जाते हैं। जब शिक्षा कुछ ही लोगों, कुछ ही वर्गों तक सीमित थी तो राष्ट्र का टैलेंट भी पूरी तरह निखर कर सामने नहीं आ पाया। जब बैंकों तक कुछ लोगों की पहुंच थी तो व्यापार कारोबार भी सीमित ही रहा। जब बेहतर कनेक्टिविटी केवल कुछ शहरों तक सीमित थी तो ग्रोथ भी उसी दायरे तक सीमित रही। यानी विकास का पूरा लाभ ना तो देश की बड़ी आबादी को मिल पा रहा था और ना ही भारत की असली ताकत उभर कर सामने आ पा रही थी। बीते 8 वर्षों में हमने ये सोच और अप्रोच दोनों बदली है। हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इस पर बल दे रहे हैं। और जब मैं सबका प्रयास कहता हूं तो इसमें हर देशवासी शामिल है और देश का हर राज्य शामिल है। छोटा बड़ा जो भी हो, सबका सामर्थ्य बढ़ेगा तब जाकर भारत विकसित बनेगा। इसलिए हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं जो पीछे रह गए, वंचित रह गए, जिनको छोटा समझा गया। यानी जो पहले वंचित था वो अब हमारी सरकार की वरीयता में है। इसलिए आज छोटे किसानों के लिए वरीयता के आधार पर काम किया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि का बड़ा लाभ यहां विदर्भ के किसानों को भी मिला है। ये हमारी ही सरकार है जिसने पशुपालकों को वरीयता देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा है। हमारे रेहड़ी पटरी ठेले वाले भाई बहन, स्ट्रीट वेंडर्स, उन भाई बहनों को भी
पहले कोई पूछता नहीं था, वो भी वंचित थे। आज ऐसे लाखों साथियों को भी वरीयता देते हुए बैंक से आसान ऋण मिल रहा है। साथियों, वंचित को वरीयता, वंचित को वरीयता, इसका एक और उदाहरण हमारे आकांक्षी जिलों का भी है। देश में 100 से अधिक जिले ऐसे हैं जो आजादी के इतने दशकों बाद भी विकास के अनेक पैमानों पर बहुत पीछे थे। इनमें से ज्यादातर आदिवासी क्षेत्र थे, हिंसा से प्रभावित क्षेत्र थे। इनमें मराठवाड़ और विदर्भ के भी अनेक जिले शामिल हैं। बीते 8 वर्षों से हम देश के ऐसे ही वंचित क्षेत्रों को तेज विकास की ऊर्जा का नया केंद्र बनाने पर बल दे रहे हैं। आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, वे भी इसी सोच और अप्रोच का प्रकट रूप है। साथियों, आज आपसे बात करते हुए मैं महाराष्ट्र के लोगों को, देश के लोगों को भारत की राजनीति में आ रही एक विकृति से सावधान भी करना चाहता हूं। ये विकृति है शॉर्टकट की राजनीति की। ये विकृति है राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का पैसा लुटा देने की। ये विकृति है करदाताओं की गाढ़ी कमाई को लुटा देने की। शॉर्टकट अपनाने वाले ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना होता है, जिनका लक्ष्य झूठे वायदे करके सिर्फ सरकार हड़पना होता है, वो कभी देश नहीं बना सकते। आज एक ऐसे समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्यों पर काम कर रहा है, तो कुछ राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ में भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देना चाहते हैं। हम सबको याद होगा, जब पहली औद्योगिक क्रांति आई, हिंदुस्तान उसका लाभ नहीं उठा पाया। दूसरी, तीसरी औद्योगिक क्रांति में भी हम पीछे रहे, लेकिन आज जब चौथी औद्योगिक क्रांति का समय है, तो भारत इसे गंवा नहीं सकता। मैं फिर कहूं, कोई देश चल नहीं सकता। देश की प्रगति के लिए स्थायी विकास चल नहीं सकता। देश की प्रगति के लिए स्थायी विकास, स्थायी समाधान के लिए काम करना, एक लॉन्ग टर्म विजन बहुत ही जरूरी है। और स्थायी विकास के मूल में होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। एक समय दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया भी गरीब देश था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उस देश ने अपना भाग्य बदल दिया।
आज खाड़ी के देश इतना आगे इसलिए भी है और लाखों भारतीयों को वहां रोजगार मिलता है, लाखों भारतीयों को, क्योंकि उन्होंने भी बीते 3-4 दशकों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, आधुनिक किया है और फ्यूचर रेडी किया है। अरे कब आपको पता होगा, आज हिंदुस्तान के लोगों को सिंगापुर जाने का मन करता है। कुछ दशक पहले तक सिंगापुर भी एक सामान्य आइलैंड कंट्री हुआ करता था। फिशरीज से कुछ रोजी रोटी लोग कमा लेते थे, लेकिन सिंगापुर ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया, सही आर्थिक नीतियों पर चला और आज वो दुनिया की अर्थव्यवस्था का इतना बड़ा केंद्र बना हुआ है। अगर इन देशों में भी शॉर्टकट की राजनीति हुई होती, टैक्स पेयर का पैसा लुटाया गया होता, तो ये देश कभी उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते जहां आज है। देर से ही सही भारत के पास अब यह अवसर आया है। पहले की सरकारों के समय हमारे देश के ईमानदार करदाताओं ने जो पैसा दिया, वो या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया या फिर वोट बैंक को मजबूत करने में खप गया। अब समय की मांग है कि सरकारी खजाने की पाई पाई का उपयोग देश की पूंजी, युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए निर्माण पर खर्च होनी चाहिए। मैं आज भारत के हर युवा से आग्रह करूंगा, हर टैक्स पेयर से आग्रह करूंगा, ऐसे स्वार्थी राजनीतिक दलों को, ऐसे स्वार्थी राजनीतिक नेताओं को एक्सपोज करिए। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये वाली कुनीति लेकर के जो राजनीतिक दल चल रहे हैं, वे इस देश को भीतर से खोखला कर देंगे। दुनिया के कई देशों में हमने आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये ऐसी कुनीति की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह होते देखा है। हमें मिलकर भारत को ऐसी कुनीति से बचाना है। हमें याद रखना है, एक और आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये वाली दिशाहीन कुनीति और सिर्फ स्वार्थ है। वहीं दूसरी ओर देश हित और समर्पण भाव है, स्थायी विकास, स्थायी समाधान का प्रयास है। आज भारत के युवाओं के पास जो अवसर आया है, वो हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। और मुझे खुशी है कि आज देश में स्थायी विकास और स्थायी समाधान को सामान्य मानवी का भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। अभी पिछले सप्ताह गुजरात में जो चुनाव के नतीजे आए हैं, वो स्थायी विकास और स्थायी समाधान की आर्थिक नीति, विकास की रणनीति का परिणाम है। मैं शॉर्टकट अपनाने वाले
ऐसे राजनेताओं को भी विनम्रतापूर्वक, आदरपूर्वक कहूंगा कि स्थायी विकास के विजन को समझिए, उसके महत्व को समझिए। आज देश के लिए उसकी कितनी जरूरत है उसको समझिए। शॉर्टकट के बजाय स्थायी विकास करके भी आप चुनाव जीत सकते हैं, बार बार चुनाव जीत सकते हैं। ऐसे दलों को मैं कहना चाहता हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है जब आप देश हित को सर्वोपरि रखेंगे तो शॉर्टकट की राजनीति का रास्ता भी जरूर त्याग करेंगे। भाई और बहनों, एक बार फिर महाराष्ट्र के लोगों को, देश के लोगों को इन परियोजनाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं मेरे नौजवान दोस्तों से कहता हूं, ये जो मैंने आज 11 सितारे दिखाए हैं, जो मैंने आज 11 सितारों की आपके सामने गिनती की है, ये 11 सितारे आपका भविष्य गढ़ने वाले हैं, आपके लिए अवसरों को जन्म देने वाले हैं। और यही रास्ता है, यही रास्ता सही है। एषः पंथः, एषः पंथः, इस मंत्र को लेकर के आइए पूर्ण समर्पण भाव से अपने आप को खपा दे। 25 साल का ये मौका हम जाने नहीं देंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। All right, viewers, we just heard the Prime Minister speak there, making a couple of important points, saying that infrastructure is a top priority of our government. And he's also saying that the projects will give new direction to development in Maharashtra. Couple of very, very important points, saying that he also has added that the Prime Minister has added a couple of things, such as there are 11 different development projects inaugurated today, which will give a new direction to Maharashtra's growth. And the focus of the government is infrastructure development with a holistic vision and approach. And Samruddhi Mahamarg will ensure seamless connectivity across Maharashtra, be it healthcare for all or wealth creation, empowering our farmers or conserving water. Our government is giving top priority to infrastructure. So a couple of points coming in right now, viewers. It's a very, very stern message also on shortcut politics, which was delivered by the Prime Minister. He had arrived in Nagpur earlier today and inaugurated the AIIMS Nagpur, whose foundational stone was laid by him in the year 2017. He also launched the phase 1 of the Hindu Bala Saheb Thackeray Maharashtra Samruddhi Mahamarg, covering the distance of around 520 kilometers and connecting Nagpur and Shirdi as well. Later in the day, the Prime Minister will be traveling to Goa, where he will address the functions of the World Ayurveda Congress and also inaugurate the 3 national Ayush institutes. And viewers, as we're live and breaking this Sunday afternoon, as Himachal is set to get a new Chief Minister amidst the Vadra Congress chaos, the Republic has learned that Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Vadra, Mallikarjun Kharge and Sachin Pilot are to attend the oath-taking ceremony as well. So this is the big news coming in right now, where we are getting to know that the oath-taking ceremony, which will happen very, very soon right now, Himachal Pradesh will be getting a new CM. And in the list is Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Vadra as well. And visuals of that we can see on your screen, where Himachal Pradesh will get the new CM. He has been selected by the Congress as well, viewers. And we'll get to every update from the ground as the new CM will be taking oath. Sukhvinder Sukhu will be taking oath as Himachal CM. Rahul Gandhi will be in attendance, and Rahul Gandhi has been leading the Bharat Jodo Yatra since September. He will be in Shimla for the swearing-in ceremony as well, viewers.
And at the same time, we are seeing that one of the state BJP leaders, one of the state leaders of there has been sidelined. State leader of the Congress has been sidelined for the CM post. So some controversy is also erupted. All right, so a grand welcome for the Prime Minister in Nagpur, viewers, which is so that you can see on your screen as well. And let's go straight to Alisha. Alisha, the Prime Minister flagged off the 6th Vande Bharat Express from Nagpur railway station, and he also addressed the people there in Nagpur. Take us through what we are seeing on the screens. We are seeing a lot of celebrations, colorful celebrations. The Prime Minister himself participating in the celebrations there in Nagpur. Well, yes, Prime Minister Narendra Modi, who inaugurates the Nagpur Metro, also flagged off for 6th Vande Mataram train. We know that the Prime Minister Narendra Modi is in Maharashtra, who inaugurated also the first phase of the Nagpur Metro Rail project and purchased the tickets to take a ride on the metro from Freedom Park to Kapri. Not only this, but Prime Minister Narendra Modi also laid the foundation stone of phase 2 of the rail project, which will be developed at a cost of more than 6,700 crore rupees. At this point of time, we have been witnessing a picture where he was taking the stock and he has been welcomed with a Marathi tradition, Maharashtrian tradition. Also, we can see Prime Minister being coming into the trend of Maharashtra. But moreover, talking about the project that has been flagged off, because earlier today, where the Prime Minister Narendra Modi flagged off the 6th Vande Mataram Express that will run between Maharashtra's Nagpur and Chhattisgarh's Bilaspur. Also, he waved hands at the passenger travelling on the train after flagging off the train. Not only this, but Prime Minister also travelled while purchasing the ticket. And importantly, while talking about the Samruddhi Mahamarg, which is officially known as Indra Hriday Samrat Thakre Maharashtra Samruddhi Mahamarg, which is the dream project of Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis. And it's very fortunate, and also we heard that Eknath Shinde was the Maharashtra Chief Minister, who clearly mentioned that this is something a very proud moment for the state of Maharashtra, not only for the Maharashtra, but the entire country, because for the inauguration itself, where the Prime Minister is present at the spot. So here are the mega projects that has been unveiled by Prime Minister Narendra Modi, and also there was a grand welcome to the Prime Minister. Right, absolutely. Absolutely, Alisha. Thank you for joining us with all the details. Alisha getting us top updates as a grand welcome for PM Modi is happening as we speak right now. A short while back, the Prime Minister unveiled mega projects giving great boost to infrastructure and connectivity as well. He spoke very, very openly to the people in Nagpur, and he said that infrastructure is a top priority of our government. We was getting some big news coming in. Days after MCD polls, Delhi BJP President Adesh Gupta steps down. Virendra Sachdeva to be the working president of Delhi BJP. Big news coming in, viewers, right now. Getting a big development.
Just days after MCD polls, the Delhi BJP President Adish Gupta has stepped down. Now, what we're learning so far, viewers, Virendra Sachdeva is going to be the working president of Delhi BJP. Let's go straight to Piyush Mishra. Piyush, looks like a change is happening there in the hierarchy. A new BJP president of Delhi has been appointed. Well, certainly a new Delhi BJP president. In fact, he is going to be the working president, and his name is Virendra Sachdeva, and he is now the working president of the Delhi BJP. Adish Gupta had stepped down as the Delhi BJP chief, and this has happened after BJP loses mayor elections in last capital. Remember that BJP got 104 seats in New Delhi. The magic number is 126. BJP could not achieve that number, and now only owing to the responsibility of this big loser. Now BJP president, Delhi BJP president Adish Gupta has stepped down from his position. Virendra Sachdeva has now been made as the working president of Delhi BJP. A couple of days back, a few leaders from BJP itself, they had come out who were part of the entire campaign, MTV campaign. They had also alleged that corruption has taken place as far as the ticket distribution is concerned. In fact, many of the MPs have also said that the leaders of their choice were not given the tickets. Now, Adish Gupta has stepped down after BJP's lose in Delhi MPD elections. We have to wait and watch how the further decisions are going to be taken by the top leadership as far as Delhi BJP is concerned. But yes, confirmation which we are right now getting is that Adish Gupta has stepped down from the post of Delhi BJP chief, and Virendra Sachdeva is now going to be made as the working president of the Delhi BJP. Right. So, it's very, very interesting, Piyush, as well, and Piyush is getting us all the updates. This change is coming in, viewers, after the BJP had not been able to perform that well in the MCD polls. The Kejriwal government, in fact, Aam Aadmi Party had got better numbers of the MCD polls this time around. Thank you, Piyush. Thank you, Piyush, for getting us all the details. It's time for top updates around India now. As PM Modi arrived in Nagpur today morning, he received a grand traditional welcome in the city. PM Modi has not only joined the whole Dasha Pathak, but also has participated by trying his hands on playing the dhol as he was being welcomed. Prime Minister Modi unveiled aims in Nagpur and has also flagged off the Vande Bharat Express train today connecting Nagpur to Bilaspur. The flagging off ceremony took place at the Nagpur railway station. Meanwhile, Prime Minister also inaugurated phase 1 of the Nagpur Metro rail project and took a ride in the train. Prime Minister Modi, who has already started his Nagpur visit, inaugurated a series of projects at a public function in the city. The Prime Minister will inaugurate railway projects worth more than 1,500 crore rupees. Later in the day, he will take part in various functions before travelling to Goa. Prime Minister Modi will formally inaugurate Goa's second international airport at Mopa during his visit to the state. Airport was built at the cost of 2,870 crores, will begin operations starting January 5th. As far as the Taran RPG attack case is concerned, the Republic has learned that 15 people have been detained by police. This comes after the development where 400 mobile numbers came under Punjab Police's scanner. These mobiles were active near police station 1 hour before and after the attack. Timing and movement of these numbers post-attack being tracked. West Bengal BJP President Sukanto Majumdar alleged that his car was attacked by miscreants who carried TMC flags with them during the incident. Sukanto Majumdar further alleged that there is no democracy in the state and demanded a probe into the incident. Ink was thrown at Maharashtra Minister Chandrakant Patil over his remarks on Ambedkar and Mahatma Phule. Following the incident now, Pimpri Chinchwad police has suspended 7 police constables and 3 officers in connection with the incident that was a reporter yesterday.
A shocking news update coming in from Maharashtra's Palghar. A 10-month-old girl has died after she was flung from a cab on the Mumbai-Ahmedabad highway while her mother was allegedly being molested on Saturday morning. Woman too was pushed out of the vehicle and sustained serious injuries. FIR has been registered. As Himachal is set to get a new CM amidst the Vadra Congress chaos, the Republic has learned from sources that Vikramaditya Singh has refused the deputy CM's post. Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Mallikarjun Kharge and Sachin Pilot are to attend the oath-taking ceremony. Meanwhile, senior Congress leader Salman Khurshid has now said that winning or losing elections is not important, but what is important is the unity of the country. On his party's defeat in just the concluded Gujarat Assembly elections, he said the Congress's vote went to the Aam Aadmi Party and termed it a matter of concern. Viewers, much more coming up on the other side. Sukuk becomes new Himachal Chief Minister. Is this the end of chaos or is another rebellion in the wrap? Taran RPG attack probe gets bigger. 15 detained so far. Gangsters lost in jails to be grilled. कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। इसलिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, सपने आपके, लैमिनेट्स हमारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। One man was killed after a massive fire ravaged a shopping mall in Moscow's northwestern outskirts on Friday. Chennai cyclone Mandus had made a landfall around early in the morning today. A lot of damages happened. 1 or 2 building had collapsed. Poles and trees that is also uprooted and fallen down. 8-year-old boy Tanmay has now passed away. He was stuck at 400 feet deep borewell in the Manvi village of Madhya Pradesh. In the recently concluded meeting, which was hosted by the Indian NSA, Mr. Ajit Doval, he'd invited NSAs from 5 Central Asian countries and they had come to New Delhi to attend. Taliban has welcomed it. And this has led to a lot of heartburn in Pakistan. But the fact of the matter is that Taliban says that, this is a welcome step by India. And Taliban says that it wants to assure the world that its land will not be used for terror activities against the neighbors. Heavy security is being deployed to make sure that no untoward situation takes place. In the recently concluded meeting, which was hosted by the Indian NSA, Mr. Ajit Doval, he'd invited NSAs from 5 Central Asian countries and they had come to New Delhi to attend. Taliban has welcomed it. And this has led to a lot of heartburn in Pakistan. But the fact of the matter is that Taliban says that, this is a welcome step by India. And Taliban says that it wants to assure the world that its land will not be used for terror activities against the neighbors. One man was killed after a massive fire ravaged a shopping mall in Moscow's northwestern outskirts on Friday. Chennai cyclone Mandus had made a landfall around early in the morning today. A lot of damages happened. 1 or 2 building had collapsed. Poles and trees that is also uprooted and fallen down. 8-year-old boy Tanmay has now passed away. He was stuck at 400 feet deep borewell in the Manvi village of Madhya Pradesh. Heavy security is being deployed to make sure that no untoward situation takes place. Recently concluded meeting, which was hosted by the Indian NSA, Mr. Ajit Doval, he'd invited NSAs from 5 Central Asian countries and they had come to New Delhi to attend. Taliban has welcomed it. And this has led to a lot of heartburn in Pakistan. But the fact of the matter is that Taliban says that, this is a welcome step by India. And Taliban says that it wants to assure the world that its land will not be used for terror activities
against the neighbors. Viewers, getting some big breaking coming in. Delhi Minister Satyendra Jain, arrested on charges of money laundering, reaches Supreme Court. Jain seeks early hearing on his bail plea in the money laundering case. Jain urges Supreme Court to direct the Delhi High Court to hear his bail plea soon. The Supreme Court will hear Jain's petition tomorrow, viewers. Some big news coming in right now. The top court to hear Satyendra Jain's plea. The Supreme Court will hear Jain's plea tomorrow, which is Monday, 12th of December. And viewers, we are also coming to know that Delhi High Court, while hearing earlier Satyendra Jain's plea, has issued a notice to the ED and gave 3 weeks time for the ED to file its response to Jain's plea as well. Viewers, getting some top updates coming in, where Satyendra Jain has gone ahead and he has moved Supreme Court against the Delhi High Court order. Remember that the Aam Aadmi Party Minister Satyendra Jain has moved to the Supreme Court challenging Delhi High Court's order seeking the ED's response to his bail plea. Viewers, big news coming in right now at this point of time. Delhi High Court, remember, through its December 1st order, had allowed 3 weeks time for the ED to file their response to Jain's plea, challenging the trial court's order rejecting his bail plea. Let's go straight to Piyush. Piyush, take us to this latest detail. The Supreme Court will be hearing Jain's plea tomorrow. Well, certainly this is what we are given to understand, is that the Supreme Court is going to hear the bail plea of Satyendra Jain tomorrow. Remember that he has been requesting to the courts for the bail plea. In fact, last time the court had found that serious grievances have been done, serious lapses have been done, and also we also saw as to how the multiple videos of Satyendra Jain have surfaced from inside jail. So he has been in controversy for the last many days, and now what we are given to understand is that his counsels, Satyendra Jain's counsels, have approached to Supreme Court, and tomorrow Supreme Court is going to hear the bail plea of Satyendra Jain. Right. Well, Piyush is getting us all the top updates. And Piyush, one short question before I let you go. You're, of course, keeping us updated and ahead on the story. Take us through exactly what that plea is demanding right now from the Supreme Court. Why is Satyendra Jain moving the Supreme Court in the first place? Because we also know that the Delhi High Court had issued a notice to the ED and given 3 weeks time for the ED to file its response to Jain's plea. Well, certainly the Delhi High Court had given notice to the agencies who are investigating the money laundering case against Satyendra Jain, and when his bail plea was rejected by Delhi's Rouse Avenue Court, he had approached, in fact now he has approached to the Supreme Court. It is also important to point out as to how Satyendra Jain is in jail for the last many days. In fact, he is facing serious allegations of money laundering, though Aam Aadmi Party has been claiming that he is being implicated into the false cases, and he has also been termed as a new age Bhagat Singh by the Aam Aadmi Party. But court has found serious involvement of Satyendra Jain in all these cases, and that is why we have seen multiple times his bail plea has also been rejected. Now Jain has moved to Supreme Court, requesting for the court to hear into his bail plea, and tomorrow the court is going to hear the plea of Satyendra Jain. All right, thank you so much, Piyush Mishra, for getting us all the details. Supreme Court to hear Satyendra Jain's plea. And also remember, Satyendra Jain is in jail right now. Money laundering charges against him. In fact, we have got to every detail how he is getting VVIP treatment as well as he is in jail. Thank you, Piyush. And in fact, let's go ahead and take a short break right now, viewers. We continue to be live and breaking this Sunday afternoon. We're waiting for that oath ceremony of the new Himachal Pradesh CM. Heavy security is being deployed to make sure that no untoward situation takes place. In the recently concluded meeting, which was hosted by the Indian NSA, Mr. Ajit Doval,
He'd invited NSAs from 5 Central Asian countries and they had come to New Delhi to attend. Taliban has welcomed it. And this has led to a lot of heartburn in Pakistan. But the fact of the matter is that Taliban says that, this is a welcome step by India. And Taliban says that it wants to assure the world that its land will not be used for terror activities against the neighbors. One man was killed after a massive fire ravaged a shopping mall in Moscow's northwestern outskirts on Friday. Chennai cyclone Mandus had made a landfall around early in the morning today. Lot of damages happened. 1 or 2 building had collapsed. Poles and trees that is also uprooted and fallen down. 8-year-old boy Tanmay has now passed away. He was stuck at 400 feet deep borewell in the Manvi village of Madhya Pradesh. In the recently concluded meeting, which was hosted by the Indian NSA, Mr. Ajit Doval, he'd invited NSAs from 5 Central Asian countries and they had come to New Delhi to attend. Taliban has welcomed it. And this has led to a lot of heartburn in Pakistan. But the fact of the matter is that Taliban says that, this is a welcome step by India. And Taliban says that it wants to assure the world that its land will not be used for terror activities against the neighbors. Heavy security is being deployed to make sure that no untoward situation takes place. In the recently concluded meeting, which was hosted by the Indian NSA, Mr. Ajit Doval, he'd invited NSAs from 5 Central Asian countries and they had come to New Delhi to attend. Taliban has welcomed it. And this has led to a lot of heartburn in Pakistan. But the fact of the matter is that Taliban says that, this is a welcome step by India. And Taliban says that it wants to assure the world that its land will not be used for terror activities against the neighbors. One man was killed after a massive fire ravaged a shopping mall in Moscow's northwestern outskirts on Friday. Chennai cyclone Mandus had made a landfall around early in the morning today. Lot of damages happened. 1 or 2. Thanks for tuning in this Sunday afternoon. We are live and breaking. I'm Samiksha Srivastava. Let's get started with the top headlines. अपनाने वाले ये राजनीतिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है। Prime Minister Modi slams shortcut politics, says corrupt netas must be exposed. Dream project of Maharashtra Deputy Chief Minister, the 701-kilometer expressway inaugurated. Sukhu becomes new Himachal Chief Minister. Is this the end of chaos or is another rebellion in the wraps? Taran RPG attack probe gets bigger. 15 detained so far. Gangsters lodged in jails to be grilled. Liquorgate probe widens. KCR's daughter grilled by the CBI in Hyderabad. On fast unto death, Sharmila arrested by KCR cops moved to hospital as health persons.
Well, straight up cutting across to the visuals coming in of the oath-taking ceremony of Sukhwinder Sukhu, which is taking place as we speak. So Sukhwinder Sukhu will be sworn in along with the Deputy Chief Minister Agnihotri. In fact, we are also given to understand that photos of late Veerbhadra Singh have also been put on the stage. We have the top brass of the Congress who's also present at this oath-taking ceremony as we speak. We'll try and go across to Amandeep as well, who's reporting live from Shimla outside the hotel where the oath-taking ceremony is taking place. But we'll go across to him, but these are the visuals in which you can see the Congress leaders who are present to attend the oath-taking ceremony of the new Himachal Chief Minister, Ashok Gehlot, Sachin Pilot, Rahul Gandhi, who are present there to attend the oath-taking ceremony of Sukhwinder Sukhu. Along with him, the Deputy Chief Minister Agnihotri will also be sworn in. In fact, Vikramaditya Singh can also be seen on the stage as we speak. Amandeep joining us live. Amandeep, while the oath-taking ceremony is underway, the question here is that how is Congress really tackling the internal rebellion which has been brewing for quite some time now? Now you can see All right, we'll try and connect with Amandeep again, but as you can see, the visuals there coming in live from Shimla, where the oath-taking ceremony is underway of Sukhwinder Sukhu, who will be sworn in as the Chief Minister of Himachal Pradesh. But the question here arising as to whether Veerbhadra legacy has been ignored in all this process, and does the Himachal episode show that the Congress has lost control over the party? But these are the visuals there coming in live of Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra, who are present at the oath-taking ceremony of Sukhwinder Sukhu, who is being sworn in as a Chief Minister of Himachal Pradesh. And talking more about Sukhwinder Sukhu, who is being sworn in as the Himachal Chief Minister, he claimed support of 21 MLAs. He's even headed poll campaign committee and credited to breach Anurag Thakur bastion. But Pratibha Singh, who was also in the fray for the CM post, is the wife of 6-time Chief Minister. Veerbhadra Singh led Congress campaign in Himachal Pradesh and also called Maharani as support of cadre. Amandeep is live with us. Amandeep, talk to us about the latest updates from the venue where the oath-taking ceremony is underway. And even Vikramaditya, they all are waving ceremony, and in fact, so these are the visuals there coming in from Shimla, where the oath-taking ceremony is underway. At the same time, it exposes a complete chaos in the Vadra Congress as well. Veerbhadra, in fact, Pratibha Singh, who was also in the fray to become the Chief Minister, she's the wife of 6-time Chief Minister Veerbhadra Singh. She led the Congress campaign in Himachal Pradesh. Remember visuals that came in yesterday of the supporters of Pratibha Singh, who staged a protest demanding that Pratibha Singh be made the Chief Minister of Himachal Pradesh. We have Amandeep back with us. Amandeep, take it away and give us more details of this oath-taking ceremony which is underway. Well, there are certain photos there revealing the actual picture of the Congress party in Himachal Pradesh. They have put the photograph of Veerbhadra Singh at the stage, and Sukhwinder Sukhu is paying tribute to indicate people in the Congress that he will maintain the legacy of Veerbhadra Singh, which was considered. And in fact, the most important point is that so far Pratibha Singh has not been seen in the first row of the dignitaries where all these are sitting. And in fact, Vikramaditya was very much there. Mallikarjun Kharge, who was controlling the entire situation, who was managing the entire situation, and Rahul Gandhi is there, Mallikarjun
Priyanka Gandhi, and they all are sitting in one row. But we are not able to see Pratibha Singh. Where is Pratibha Singh in this entire scene? Neither she was in the first row, and in fact, nor she came in front. And when the photograph was happening, where Rahul Gandhi, Priyanka, Mallikarjun Kharge, Sukhwinder Sukhu, Mukesh Modi, and Samatya together waving the people, and this is the point of the conflict in the Congress party. Just because from the very first day he was demanding to consider the legacy of Veerbhadra Singh, and that late Veerbhadra Singh, and that I think that has been brushed aside. Just because when the Deputy Chief Minister's post was offered to Vikram Aditya, he denied that because they don't want to empower him with certain strong portfolios. But Vikram Aditya denied to be the Deputy Chief Minister, and again Congress turned around their formula, and finally Sukhwinder Sukhu name was stamped by the Congress High Command. You can see the Congress has suffered a lot from last 48 hours, and so far this entire issue has not been died down. Though all the senior Congress leaders are claiming that everything has settled now, the decision of the Congress High Command has been accepted, but so far we are not able to see Pratibha Singh. Himachal Pradesh Congress chief Pratibha Singh is not in the first row, and even everybody is here. CM and Bhupesh Baghel, Ashok Gehlot, here she is. Now she came to the stage. The last entry of Pratibha Singh, last entry in hugging Rahul Gandhi, and she is all full of emotion, and in fact trying to give the message that legacy should be considered. And now she is meeting Priyanka Gandhi. Now she is meeting. But coming. All right, Amandeep, we'll leave it at that. We'll come back to you for more developments on that. But the visuals there coming in of Pratibha Singh seen meeting Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra on the stage. Person sustained injuries after box full of chemicals exploded in Bada Bazaar area of Nizamabad in Hyderabad. आज हमारे के 100 डेल का आया, ब्लास्टिंग हुआ बोल के आया, इमीडिएटली हमारा ब्लू कोट हम लोग आए, रश करे, तो इंजर्ड को बात करें, इंजर्ड क्या बोल रहा, मतलब वो एक केमिकल वेस्टेज डब्बा, वो अंदर कुछ केमिकल है तो झटकाने के लिए ट्राई करे तो वो ब्लास्ट हो गया बोल के बोल रहा। उसके बारे में वो फायर इंजन को बुलाया, पूरा फोम डलाया, फिर हमारा क्रूज टीम आके वो क्या है, केमिकल है, क्या डब्बा है बोल के पूरे इन्वेस्टिगेशन करते। अब तो इंजर्ड को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिए, वो ट्रीटमेंट हो रहा और मी के बेचते रहता। अब तो उनका प्रेजेंट तो सिचुएशन कूल है, नॉर्मल है। Following which, fire brigades were immediately rushed to the spot. The injured was rushed to the hospital and has been reported to be in a stable condition now. A case has also been launched and a probe is now underway. Bureau Report, Republic TV. Alright, we'll slip into a very short break for now. Do not go anywhere. Lots coming up on the other side of this very short break. Taran probe gets bigger. 15 detained so far. Gangster lodged in jails to be grilled. And Liquorgate probe widens. KCR's daughter grilled by CBI in Hyderabad. Heavy security is being deployed to make sure that no untoward situation takes place. In the recently concluded meeting, which was hosted by the Indian NSA, Mr. Ajit Doval, he'd invited NSAs from 5 Central Asian countries and they had come to New Delhi to attend. Taliban has welcomed it. And this has led to a lot of heartburn in Pakistan. But the fact of the matter is that Taliban says that, this is a welcome step by India. And Taliban says that it wants to assure the world that its land will not be used for terror activities against the neighbors. One man was killed after a massive fire ravaged a shopping mall in Moscow's northwestern outskirts on Friday.
Chennai, cyclone Mandus had made a landfall around early in the morning today. A lot of damages happened. 1 or 2 building had collapsed, poles and trees that is also uprooted and fallen down. 8-year-old boy Tanmay has now passed away. He was stuck at 400 feet deep borewell in the Manvi village of Madhya Pradesh. In the recently concluded meeting, which was hosted by the Indian NSA, Mr. Ajit Doval, he'd invited NSAs from 5 Central Asian countries and they had come to New Delhi to attend. Taliban has welcomed it. And this has led to a lot of heartburn in Pakistan. But the fact of the matter is that Taliban says that, this is a welcome step by India. And Taliban says that it wants to assure the world that its land will not be used for terror activities against the neighbors. Heavy security is being deployed to make sure that no untoward situation takes place. One man was killed after a massive fire ravaged a shopping mall in Moscow's northwestern outskirts on Friday. Chennai, cyclone Mandus had made a landfall around early in the